So here we go with the first match as the toss is awarded to Bodgeshwar as Navelim Blasters could not reach on to the reporting time, and 1 over will be deducted as a penalty of Navelim Blasters. So we are about to commence. As a penalty, toss is awarded to Sri Bodgeshwar, and they have decided to field first. So yesterday was the first day of the tournament organized by CC Boys Panjim, and in that the first team that have reached for the semi-finals is Strong Boys, and the second team to book their place in the semi-finals is Kudneshwar. So let's see which are going to be the next two teams. So we are in the morning session of day 2, and in a while we are going to start the match. Match is going to be played between Sri Bodgeshwar versus Navelim Blasters. Sri Bodgeshwar has backed the toss, and they have decided to bowl first. So as a penalty, Sri Bodgeshwar will get all 5 overs, and Navelim Blasters will have to play only 4 overs. As the organizers are very strict with the timings, teams should report at least 10 or 15 minutes prior to their match. Everything has been forwarded in the respective groups to all the captains. So here we go with the second day. Officials already have taken the charge. Even the fielding team, Sri Bodgeshwar, is on the ground. So requesting the captain, kindly set your field as quick as possible. Even a request is going on for the captain of Sai Ganesh Taligaon and Lakshmi cricketers. Kindly contact at the commentary box. Requesting the captain of Sai Ganesh Taligaon and Lakshmi cricketers, kindly contact at the commentary box so that you can submit the list of your players before commencement of the match. So meanwhile, 2 officials already out in the middle. Sadguru Naik along with him, Vaman Mayekar. So we can see the hurdle of team Sri Bodgeshwar, and definitely they will be having a plan as they are having an advantage of an over. So definitely 1 over is going to make a big difference as far as the run chase is concerned. So let's see what total Navelim strikers are going to put in front of Sri Bodgeshwar, as they are going to play only 4 overs. This is an ultimate challenge. Ultimate challenge in front of Navelim strikers. Somnath and Swapnil are the 2 players to accept the challenge with the willow in the hand, has gone to open the inning. Somnath on the striking end, Swapnil at the non-strikers end, and as usual the Slinga Malinga of Goa. Mahesh with the ball. Mahesh Sakalkar, popularly known as Malinga of Goa because of his bowling action, all set to deliver the power play over. So here we go with the umpire's call. Let's play. Let's begin with the first delivery. Somnath on the striking end, jersey number 7. Yorker and a wicket on the very first delivery. This is what Mahesh is known for. Strikes on the very first delivery as bowled. Somnath back to the pavilion even without troubling our Bhau, the scorer, at the commentary box. DJ.
So here we are, team of officials. Right now, Umesh Asgaonkar Bhau, the study station, writing all the details along with us, AB25 proprietor Bharat Arkas, along with me, my co-commentator Sumit Karsekar, all the way to Goa. Another good delivery ball takes the inside edge, travels towards the short fine leg where the fielder intact gathers the ball right inside the boundary rope for a single. So with that, now William Strikers open their count. Another good delivery, pacey delivery straight into the hands of another shrewd all-rounder. Shaba behind the stumps. So 2 runs on the board. We are into the power play over. Another good deal, low full toss, equally well played. Let's see whether it is going to be a chance. And yes, it is. A catch has been taken. Mahesh striking second time in the power play over. 2 wickets back to the pavilion. Total 2 runs, 2 wickets down. So this is not a good start as they've already arrived late. 1 over has been already deducted and 2 wickets back to the pavilion. So some of the batsmen have to take the responsibility of scoring the required runs so that their bowlers have little chance of coming back in this game. Meanwhile, Sri Bodgeshwar is a very strong unit and no need to introduce individual players as a pack of players. They have won many tournaments. We can see all the updates on Facebook. Meanwhile, another delivery equally well played, cautiously. A good throw at the striker's end, but batsman is quite safe. So that concludes over number 1. After completion of 1, score is 3 for the loss of 2 wickets. So let's see who is going to bowl the second. And all the captains kindly note you are allotted only 20 minutes to complete the quota of 5 overs. So 4 overs to be completed as per the officials' call. Tushar to deliver the second over. Left arm over the stumps. A wonderful straight drive. Ball travels safely to the long off fielder. A single takes the total to 4. Change in pace. A cutter rolls his fingers at the very last moment. Sahadev, popularly known as Tushar, switch it in act, no connection whatsoever, leaves the ball to travel safely to keeper. Another change in pace. This is a wonderful attempt. Straight from the sweetest part of the bat, equally well fielded. Have definitely saved 5 runs for his team. This is the fielding effort that is required on the ground. So here we can see Vavan umpire confirming. And the call has been given to the third umpire.
So the fielder is safe. He has definitely saved 5 runs for his side. That was a wonderful connection as the batsmen were waiting to see the ball sailing, but a ball did not get the distance. Another single to take the total to 5. Oh my dear, there's a definite bouncer bowled by Sadev Kandolkar. Left arm normally when it comes to leather ball he delivers a spin, left arm spinner, but now here you have to mix up your delivery, so sometimes he is delivering the quicker one, sometimes going for cutters, and lovely over considered even by Sadev. So after completion of 2 overs, score is 6 for the loss of 2 wickets. So for the next 2 overs, I would like to call my co-partner Sumit with his sweet voice with the further updates. थैंक यू सर। तो मैदान के भीतर चलते हैं, 2 ओवर का खेल खत्म हुआ 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार बेहतरीन शॉट इनसाइड आउट डीप स्ट्राइक कवर पर पहला बड़ा शॉट खेला बल्लेबाज ने और गेंद निकली जो कि बाउंड्री लाइन के बाहर चौकी के लिए। इस बार अविनाश के बल्ले से एक बेहतरीन चौका और चौके के साथ रन संख्या जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई 10 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड ऑन साइड की तरफ डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद ने सफर तय कर लिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बड़ा छक्का इस बार अविनाश के बल्ले से। लगातार की 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट अविनाश के बल्ले से। इसके पिछले गेंद पर चौका निकला, उसके बाद छक्का निकला और 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहले 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम की ओर से, लेकिन उसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी। इस बार ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खिला डीप स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद का सफर तय हुआ। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, लेकिन अगर देखा जाए तो डीप में बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो जो कि विकेट कीपर के दस्तानों में और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 17 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। आज का दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला सुबह के सत्र में। इस बार बेहतरीन गेंद, पैड पर लगी गेंद, हल्के हाथ से खेलना चाहते थे लेकिन सिंगल बना इस गेंद पर। लेग बाय का इशारा हमारे तरफ कमेंट्री बॉक्स में अंपायर जो कि वामन मयेकर सर, इनके ओर से 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 18 रन के ऊपर। तीसरा ओवर जो कि प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर। इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड के रीजन में डीप लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन इस बार शॉट में ताकत नहीं थी। डीप लॉन्ग ऑन की तरफ एक बेहतरीन कैच लपका और दूसरे विकेट का हुआ पतन। अविनाश जो कि मैदान के बाहर डगआउट की ओर रवाना होते हुए। रन संख्या 18 के ऊपर तीसरा ओवर जारी है। 2 बड़े शॉट जो कि अविनाश के बल्ले से दिखे, लेकिन एक बेहतरीन गेंद मिस टाइमिंग शॉट कर बैठे डीप लॉन्ग ऑन की तरफ। बेहतरीन कैच लपका जो कि डीप के फील्डर ने और नया बल्लेबाज हेमंत। इस बार ताकतवर शॉट ऑन साइड के रीजन में अलॉन्ग द कारपेट का डीप मिड विकेट की तरफ से। जब तक फील्डर पहुंच पाते तब तक 1 रन आसानी के साथ निकला इस गेंद पर और 1 रन के साथ रन संख्या 19 के ऊपर। 3 ओवर का खेल खत्म हुआ। 3 ओवर के बाद तो 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि नाविलिम किया ब्लास्टर क्रिकेट टीम इस मुकाबले के दौरान। आज का दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का। थोड़ा सा मौसम खराब, लेकिन 2 बड़े टीमें आमने सामने। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला जो कि श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम ने लिया और पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी जो कि महेश द्वारा पहली गेंद पर सफलता हासिल की, लेकिन तीसरे ओवर में अविनाश के बल्ले से 2 बड़े शॉट निकले। निश्चित तौर से राहत की सांस ली थी जो कि बल्लेबाजी करने वाली
नावेलिम ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने, लेकिन अविनाश जो कि मैदान के बाहर लौटे उसके बाद अब तक अगर देखा जाए तो 19 रन। फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेला, जब तक डीप में फील्ड होती तब तक सिंगल बना इस गेंद पर जो कि हेमंत के बल्ले से, और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 20 रन के ऊपर। इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाली, बैक टू द बॉलर इस गेंद को खेला, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, डॉट गेंद निकली। आखिरी ओवर जो कि प्रगति के ऊपर, चौथा ओवर, 1 ओवर की पेनल्टी लगी जो कि नावेलियम ब्लास्टर क्रिकेट टीम को। निश्चित तौर से इस इनिंग की आखिरी ओवर। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद निकली जो कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में। 1 रन आसानी के साथ बना इस गेंद पर, और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 21 रन के ऊपर। 21 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथा ओवर जो कि जारी गेंदबाजी मोर्चे पर अगर देखा जाए तो आखिरी ओवर लेकर कौशल गेंदबाजी मोर्चे पर। इस बार सफल होकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन अगर गेंद देखी जाए तो बल्लेबाज को लगी। डॉट गेंद निकली, आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर। इस ओवर में बड़े शॉट निकलने बेहद जरूरी। तो नया बल्लेबाज अब मैदान के भीतर होगा, क्योंकि हेमंत जो कि मैदान के बाहर डगआउट की तरफ रवाना होते हुए, और आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की। इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड की तरफ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में इस गेंद को खेला। गेंद हवा में कुछ देर, लेकिन कम पड़ी इस शॉट की तरफ। बल्लेबाज जो कि आउट होकर मैदान के बाहर गोल्डन डक के शिकार बने। इस गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास निकला। थैंक यू डीजे। 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार अगर देखा जाए तो आउटसाइड लेग स्टंप गेंद जाते हुए अंपायर का इशारा जो कि वाइड का एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा, और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि 22 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार इनसाइड आउट खेला डी बेस्ट कवर पर, लेकिन जहां पर फील्डर मौजूद वहां पर इस शॉट को खेला, और आखिरी गेंद पर सफलता हासिल की जो कि गेंदबाज कौशल ने। 4 ओवर का खेल खत्म हुआ, पहले इनिंग का खेल खत्म हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि नावेलियम ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 22 रन, और 23 रन का टारगेट जो कि सामने वाली श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम के सामने रखा। आज का दूसरा दिन, पहला मुकाबला, 2 बड़ी टीमें, दिग्गज टीमें आमने सामने इस प्रतियोगिता के दौरान। सीसी बॉयज पंजिम की एक बेहतरीन लाजवाब प्रतियोगिता, और दूसरे दिन का महत्वपूर्ण पहला मुकाबला जो कि 2 बड़े टीमों के बीच में। 23 रन का टारगेट, इस टारगेट का पीछा किस तरह से किया जाएगा ये बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जो कि सागर फिर एक बार कमेंट बॉक्स में जुड़ जाएंगे। थैंक यू डीजे। इसके बाद का मुकाबला साई गणेश तालीगांव बनाम लक्ष्मी क्रिकेटर्स, इनके बीच। दोनों ही कप्तान प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में टॉस के लिए आ जाइए। आपके लिए ये पहला कॉल रहेगा। साई गणेश तालीगांव और लक्ष्मी क्रिकेटर्स, दोनों ही टीम के कप्तान हमारे कमेंट बॉक्स में टॉस के लिए आ जाइए।
Sanam Salgaonkar and Suharsh Naik, the two openers for Sri Bodgeshwar. So meanwhile, so we've got the team list of Lakshmi cricketers. We are waiting for the captain of Sai Ganesh Taligaon. Meanwhile, the run chase is on. 23 runs required. As usual, Sanam Salgaonkar on the striking end, popularly known as Kaka. Let's see whether Sanam can fire on this ground. Definitely, pull shot is on and what a strike. One-handed strike, ball goes out of the park. And this is what Sanam is known for. Sixer to start the second inning. Sanath has delivered a short pitch delivery. That is bread and butter for Sanam Salgaonkar. Waiting onto his back foot. Let's see what is going to come next. Second delivery. Very nicely struck into the vacant area. Ball racing towards the boundary rope. No chance for any fielder. Boundary is the signal by the umpire, Vaman Mayekar. Thank you, DJ. Two deliveries and 10 runs on the board. Meanwhile, Sanam wanted to connect one more, not able to do the proper connection. Ball travels towards the square leg fielder. Besides our second official, the square leg umpire, Sadguri Naik, no chance of any run, a dot ball. Next delivery, again a pull shot in act. Ball is going away from the fielder. Looks like the fielder has given up the race. Ball wins the race. Another boundary. Total moves to 14. Thank you, DJ. Meanwhile, the news from the center. Sai Ganesh Taligaon has won the toss and they have asked Lakshmi cricketers to bat first. So meanwhile, 14 on the board. A good delivery finally coming from Sainath's hand. A dot ball to end the power play over. 14 runs on the board. Nine runs required from 24 legal deliveries. And this is going to be just the formality remaining in this match. And his partner Suharsh is on the striking end. Till then, DJ. So Ramchandra is bowling on the day of Saturday. As a day of Saturday is the day of Lord Hanuman, and Hanuman is a Bhakt of Ram. So let's see whether Ramchand can do some miracle from here. First delivery, change in pace, ball travels much slower to the keeper than the expectation of the batsman. Ramchand starts with a dot ball. Only 9 runs required to win this match for Sri Bodgeshwar. Another good delivery continues from Ramchandra. Maybe it looks like Saturday is the day for Ramchandra. 2 dot balls considered in the second over.
This time a lovely strike straight over the bowler's head. Fielder inactive the long on, collects the ball quite comfortably. Good throw to the bowler. A single takes the total to 15. More 8 runs required, and Sanam has the capacity and capability of finishing the match as quick as possible. Wanted to strike the ball over the point area. No connection, leaves the ball to travel safely to the keeper. Third dot ball considered by Ramchandra. There's a chance of a catch. And the catch has been taken. First wicket back to the pavilion. What a wicket to cherish for the future for Ramchandra, as he can mark his memory that I have taken the wicket of Sanam Salgaonkar. So next batsman who walks in is Amrut Velekar. Short stretcher, but can hit big sixes. Let's see what he can do now. Shuffles outside the off stump. What a strike. Convincing cricketing shot over the point. No chance for any fielder. That's a boundary to conclude over number 2. So after completion of 2 overs, score moves to 19. Just 4 runs required from the coming overs. So Ritesh about to deliver the third over. Suharsh on the striking end, and he has got the chance now. Wonderful strike, chance of a catch. Whether it is going to be held on. Yes, it has been taken at the long on area. Suharsh back to the pavilion, and as per the modern rules, incoming batsman will be on the strike when the batsman is out in form of catch out. So new man in is Sanket. Can Sanket finish off in a style? Only 4 runs required. Full toss delivered. That was a free grift, and that will conclude the match as no ball is the signal from the umpire. Total 5 runs, and that concludes match number 1. Congratulations, Sri Bodgeshwar, as you have enrolled yourself in the second round. Now the second match is going to be played between Sai Ganesh Taligaon and Lakshmi cricketers. So Sai Ganesh Taligaon has won the toss and decided to field first, requesting the batting team Lakshmi cricketers to be geared up, as well as Sai Ganesh Taligaon to kindly set your field as quick as possible.
Thank you, DJ. Here the officials are already out in the middle. Requesting the fielding team, kindly double up and set your field as quick as possible. Sai Ganesh Taligaon has won the toss. So now it's time for the man of the match. Requesting the guest for the occasion, Mr. Samir Khandebargar. Sir, kindly do the honors as the player who has taken 2 wickets have bowled the power play over. None other than Malinga of Goa is the man of the match, has taken 2 wickets and have given only 2 runs in the power play. That makes him man of the match. So Mahesh Sakalkar Malinga, man of the match of the first match that was played between Navalin Blasters and Sri Bodgeshwar. So we have already got the guest at the days requesting Malinga to kindly come and accept your man of the match trophy. And with the further updates in the second match, over to Sumit with his sweet voice in the national language. थैंक यू सर। तो दूसरा मुकाबला आज के दिन का, दो बड़े टीमें अगर देखी जाए तो पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला जो कि साई गणेश तालेगांव क्रिकेट टीम ने लिया, और अब पहले बल्लेबाजी करने के लिए जो कि लक्ष्मी क्रिकेटर्स मैदान के भीतर। दोनों ही टीम के तरफ से गुजारिश होगी कि आपका 12th मैन हमारे कमेंट बॉक्स में भेजे। टाइगर कोण टाइगर सूरज आणि गौरीश सूरज का सूरज कोण तेरे तो अंपायर का इशारा हमारे कमेंट्री बॉक्स में ओपनिंग जोड़ी जो कि लक्ष्मी क्रिकेट टीम की ओर से स्ट्राइक एंड पर सूरज और नॉन स्ट्राइक एंड पर गौरेश जो कि ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर। दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो साई गणेश तालीगांव क्रिकेट टीम की तरफ से पहला जो कि प्रमुख गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज पावर प्ले का ओवर लेकर स्वप्निल जो कि दिखाई देते हुए। आज का दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का और दूसरा मुकाबला मैदान के भीतर, दो बड़ी टीमें दिग्गज टीम ने आमने सामने, और स्ट्राइक एंड पर जो कि इस बार पहले गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद निकले जो कि शॉट थर्ड मैन के रिजल्ट में 1 रन आसानी के साथ बना। पहले गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जो कि इनसाइड आउट सूरज के बल्ले से, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, 1 रन निकला जो कि शॉट थर्ड मैन के रिजल्ट में, और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर पहले गेंद का खेल खत्म होने के बाद 1 रन। लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर कॉम्बिनेशन मैदान के भीतर निश्चित तौर से अब स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर जो कि गौरेश दिखाई देते हुए। 5 ओवर का यह मुकाबला, पहला ओवर जो कि मैंडेटरी पावर प्ले का, निश्चित तौर से इस ओवर में बड़े शॉट दिखने को मिलेंगे बल्लेबाज गौरेश और उन्हीं के साथ सूरज के बल्ले से, लेकिन सटिक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी जो कि स्वप्निल द्वारा भी दिखाई देगी। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास गौरेश के बल्ले से, लेकिन मिस कर बैठे इस गेंद को। आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास जो कि मिड विकेट के रीजन में,
लेकिन डॉट गेंद निकले। पहले गेंद पर 1 रन निकला, लेकिन दूसरी गेंद डॉट जो कि स्वप्निल की निकलती हुई। महत्वपूर्ण पावर प्ले का ओवर, इस ओवर में गेंदबाजी मोर्चे पर जो कि स्वप्निल दिखाई देते हुए साई गणेश तालिगांव क्रिकेट टीम की ओर से। इस बार फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जो कि गौरेश का, लेकिन लाइन और लेन के साथ बेहतरीन गेंदबाजी जो कि स्वप्निल द्वारा। गुड स्पॉट पर गेंद निकली, अच्छा बाहर निकले, और बेहतरीन गेंदबाजी जो कि स्वप्निल द्वारा दिखाई देते हुए। पहला ओवर जो कि मैंडेटरी पावर प्ले का 3 गेंद का खेल खत्म हुआ, रन संख्या जो कि 1 रन के ऊपर। इस बार जड़ में गेंद डाली, बैक टू द बॉलर, इस गेंद को खेला अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग जो कि स्वप्निल द्वारा। लगातार की 3 गेंदें डॉट निकले, थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज गौरेश के ऊपर, क्योंकि पहली गेंद पर 1 निकालकर स्ट्राइक रोटेट हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार की 3 गेंदें डॉट निकले। थोड़ा सा प्रेशर जो कि बल्लेबाजी करने वाले गौरेश के ऊपर दिखाई देता हुआ। मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में निश्चित तौर से बल्लेबाज हावी होता है गेंदबाज के ऊपर, लेकिन इस ओवर में अब तक लाजवाब गेंदबाजी जो कि गेंदबाज स्वप्निल द्वारा। 4 गेंद का खेल खत्म हुआ, रन संख्या जो कि देखी जाए तो अब तक 1 रन के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, शॉट स्क्वायर लेग के रीजन में इस गेंद को मोड़ा, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन आखिरी वक्त में अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 रन इस गेंद पर निकला। थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में दिखने को मिली जो कि शॉट स्क्वायर लेग के रीजन में, लेकिन सिंगल के तहत रन सके जो कि आगे बढ़े स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 रन के ऊपर। पहला ओवर जो कि प्रगति के ऊपर 5 गेंद का खेल खत्म होने के बाद रन संख्या 2 के ऊपर, और अब स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर जो कि सूरज। इस बार चेंज ऑफ पेस, थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया था इस गेंद पर, और आखिरी गेंद भी डॉट निकली गेंद बल्लेबाज सूरज को। पहला ओवर बेहतरीन घटा गेंदबाज स्वप्निल द्वारा, सिर्फ 2 रन निकले इस पावर प्ले के ओवर में, जिस पावर प्ले के ओवर में निश्चित तौर से बल्लेबाज हावी होता है गेंदबाज की तरफ, लेकिन उस ओवर में खामोश रखा गेंदबाज स्वप्निल ने गौरेश और सूरज को। और एक ओवर के खत्म होने के बाद रन संख्या जो कि बिना कोई विकेट गए अब तक 2 रन के ऊपर। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, अब तक अगर देखा जाए तो यह फैसला सही साबित होता, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 2 रन निकले। आने वाले 4 ओवर का खेल अभी भी जारी रहेगा पहले इनिंग का। निश्चित तौर से दोनों ही बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बना के रखा पहले ओवर में जो कि स्वप्निल ने, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह से बल्लेबाजी होगी मैदान के भीतर, आक्रामक शॉट दिखने को मिलेंगे कि स्वप्निल ने जिस तरह गेंदबाजी की उसके नक्शे कदम पर हर एक गेंदबाज गेंदबाजी करेगा। ये तो आने वाला समय, आने वाला क्रिकेट टाइम मैदान पर करेगा। गेंदबाजी मोर्चे पर दूसरा ओवर लेकर जो कि साई गणेश तालिगांव क्रिकेट टीम की ओर से संतोष गेंदबाजी मोर्चे पर। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने। स्वप्निल की लाजवाब गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली गेंदबाजी दिखने को मिली, और उसके नक्शे कदम पर गेंदबाजी होगी या नहीं ये तो आने वाला समय तय करेगा। स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि गौरेश दिखाई देते हुए। अगर फील्डिंग की बात की जाए तो ऑन साइड के रीजन में 4 फील्डर जो कि डिप स्क्वायर लेग, डिप मिड विकेट, काउ कॉर्नर और डिप लॉन्ग ऑन के रीजन में दिखाई देते हुए, और एक फील्डर जो कि डिप स्ट्राइक कवर पर तैनात जो कि ऑफ साइड के रीजन में 30 सर्कल के बाहर ये फील्डिंग। पहले गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, और गेंद निकली जो कि विकेट कीपर के दस्तानों में। जो प्रेशर बनाए रखा था पहले ओवर में, उस प्रेशर को हटाने का प्रयास जो कि गौरेश का दिखने को मिला मैदान के भीतर, और पहले गेंद पर सफलता हासिल की जो कि गेंदबाज संतोष ने। गौरेश जो कि 1 रन बनाकर मैदान के बाहर डगआउट की तरफ रवाना होते हुए।
लिया और यह फैसला अब तक अगर देखा जाए तो सही साबित होता हुआ। इस बार शॉर्ट गेंद हल्के से इस गेंद को स्टीयर किया पॉइंट के रीजन में, जब तक फील्डिंग होती तब तक एक रन आसानी के साथ बना और एक रन के साथ रन संख्या अगर देखी जाए तो 3 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार खराब गेंद, बीमार गेंद, फुल टॉस गेंद, कवर के रीजन में इस गेंद को खेला, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और जब तक का थ्रो पहुंच पाता तब तक 2 रन आसानी के साथ बने इस गेंद पर। 2 का इशारा अंपायर का हमारे कमेंट्री बॉक्स में। बीमार गेंद, एक खराब गेंद, गेंदबाज संतोष द्वारा 3 रन के तहत रन संख्या आगे बढ़ी स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब देखा जाए तो 6 रन के ऊपर और फ्रेट का भी मौका रहेगा बल्लेबाज सूरज के लिए। एक बड़ा शॉट दिखने को मिलेगा मैदान के भीतर क्योंकि फ्रेट का मौका। इस बार शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन मिस किया इस गेंद को। मौका था बड़ा शॉट खेलने का बल्लेबाज सूरज के लिए लेकिन मौका गंवाया। हर वक्त मौके नहीं मिलते, मौके जब मिलते हैं उसको पनपना बेहद जरूरी रहता है। लेकिन इस बार परेड की गेंद डॉट ने के लिए विकेट कीपर के दस्तानों में और डॉट गेंद के तहत रन संख्या अब तक रुकी 6 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि लक्ष्मी क्रिकेटर्स। इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड के रीजन में मिड विकेट की तरफ, डीप स्क्वायर लेग का फील्डर जब तक पहुंच पाता तब तक अगर देखा जाए तो आसानी के साथ ये कैच छोड़ा। कैच का मौका था, दूसरा विकेट निकल सकता था लेकिन एक आसान सा कैच छोड़ा, उस पर 2 रन निकले बल्लेबाज सूरज के बल्ले से और 2 रन के तहत रन संख्या 8 रन के ऊपर। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट पुल का शॉट मिड विकेट के रीजन में, इस बार भी मिस टाइमिंग शॉट लेकिन अगर देखी जाए तो बार बार फील्डिंग में खराबी दिखाई देते हुए जो कि साई गणेश तालिगांव क्रिकेट टीम की ओर से। फिर एक बार आसान सा कैच था लेकिन यह भी कैच छोड़ दिया और 1 रन निकला इस गेंद पर। सिर्फ 1 रन के साथ रन संख्या 9 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बेहतरीन शॉट बल्लेबाज विकी के बल्ले से, गेंद निकली जो कि डीप मिड विकेट के ऊपर से आउट ऑफ द पार्क। एक बड़ा छक्का इस पहले इनिंग का। के ऊपर विकी के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट, संतोष के आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा छक्का दिखने को मिला मैदान के भीतर और छक्के के तहत रन संख्या जो कि 15 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी मोर्चे पर अगर देखा जाए तो तीसरा ओवर लेकर अमित दिखाई देते हुए। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने थे जो कि पावर प्ले के ओवर में स्वप्निल की गेंदबाजी पर, लेकिन दूसरे ओवर में अगर देखा जाए तो 13 रन निकले। एक महंगा ओवर जो कि संतोष द्वारा, लेकिन एक सफलता भी अर्जित की थी जो कि गेंदबाज संतोष ने। स्ट्राइक एंड के ऊपर पहली गेंद पेश करने के लिए बल्लेबाज जो कि सूरज दिखाई देते हुए। अब तक 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि लक्ष्मी क्रिकेटर्स टीम। इस बार बेहतरीन गेंद, लेग ब्रेक गेंद पड़ने के बाद तो थोड़ी सी घूमे, विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर रुकी बगैर किसी रन से और बगैर किसी नुकसान से। सटीक लाइन और लेंथ के तहत अब तक गेंदबाजी जो कि साई गणेश तालिगांव क्रिकेट टीम के सभी गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिलते हुए। फिर एक बार बेहतरीन गेंद, लेग ब्रेक गेंद, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा मोड़ ली इस गेंद ने। आउटसाइड ऑफ स्टंप काफी दूर जाने वाली गेंद, अंपायर ने इस गेंद को दंडित किया। व्हाइट का इशारा हमारे कमेंट्री बॉक्स में और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी 16 रन के ऊपर। तीसरा ओवर जारी गेंदबाजी मोर्चे पर अमित जो कि गेंदबाज दिखाई देते हुए। पहले गेंद डॉट निकले लेकिन उसके बाद अगर देखी जाए तो दूसरे गेंद जो कि अतिरिक्त रन खर्च कर देने वाले जो कि अमित की गेंद देखने को मिली।
फिर एक बार खराब गेंद, उसी लाइन और लेन के तहत गेंदबाजी जो कि अमित द्वारा दिखाई देते हुए लगातार की दूसरे अतिरिक्त रन खर्च करने वाली गेंद अमित द्वारा, और अतिरिक्त रन के तहत रन संख्या जो कि 17 रन के ऊपर। बोनस के तहत सामने वाली टीम को रन दिए जाते हुए जो कि गेंदबाज अमित द्वारा अब तक 2 अतिरिक्त गेंद इस ओवर में देखने को मिली। इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाले, ऑन साइड के रीजन में इस गेंद को खेलना चाहते हैं, अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग की, लेकिन सिंगल का को तेजी के साथ पूरा किया इस गेंद पर। सिंगल के तहत रन संख्या जो कि 18 रन के ऊपर, तीसरा ओवर जारी, अब तक 2 गेंद का खेल खत्म हुआ। एक ओर से अगर देखा जाए तो विकी के बल्ले से एक बड़ा शॉट निकला जो कि दूसरे ओवर में निश्चित तौर से विकी को आखिरी ओवर तक मैदान पर रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सामने वाली ताकतवर क्रिकेट टीम जो कि साई गणेश तालीगांव क्रिकेट टीम देखने को मिलती हुई, और इस टीम के खिलाफ 5 ओवर में बड़ा टारगेट सेट करना होगा। इस बार फिर एक बार लेग ब्रेक गेंद, लेकिन इस गेंद को छोड़ा बल्लेबाज विकी ने, अच्छी गेंद को सम्मान निश्चित तौर से दिया जाएगा, और एक खराब गेंद पर बड़ा शॉट भी खेला जाएगा। ये रणनीति अब तक मैदान पर भीतर आजमाती हुई। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, लेकिन ये प्रयास असफल रहा, डॉट गेंद निकली। आखिर की अगर देखा जाए तो आने वाले 2 गेंदों का खेल अभी भी जारी रहेगा इस तीसरे ओवर में। निश्चित तौर से अब तक अगर 2 अतिरिक्त रन देने वाली, खर्च कर देने वाली गेंदबाजी जो कि अमित द्वारा दिखने को मिले, लेकिन उसके बाद बेहतरीन वापसी दिखने को मिलते हुए मैदान के भीतर। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग कर बैठे खुद गेंदबाज, इस बार कैच के नीचे, और एक बड़ी सफलता विकी जो कि मैदान के बाहर डगआउट का शिकार बनते हुए दूसरे विकेट का हुआ पतन। रन संख्या रुकी जो कि 18 रन के ऊपर, पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि लक्ष्य में क्रिकेटर्स टीम इस मुकाबले के दौरान। लेंगे दूसरा विकेट गिरा जो कि विकी के साथ, विकी जो कि मैदान के बाहर लौटे, एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, और खुद गेंदबाज जो कि कैच के नीचे, एक अच्छा कैच लपका, और दूसरी सफलता अपने टीम के लिए। 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर नया बल्लेबाज जो कि लेफ्ट हैंडर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर साइश दिखाई देते हुए जो कि सूरज का साथ देने के लिए। इस बार बेहतरीन गेंद, फुलर लाइन की गेंद, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप काफी बाहर जाने वाले गेंद, अंपायर का इशारा जो कि वाइड गेंद का। फिर एक बार अतिरिक्त रन जो कि हमारे स्कोर कार्ड में जुड़ेगा, और अतिरिक्त रन के तहत रन संख्या जो कि 19 रन के ऊपर। तीसरा ओवर जारी, अब तक अगर देखा जाए तो 3 अतिरिक्त रन खर्च किए गेंदबाज जो कि अमित ने, एक सफलता हासिल की इस ओवर में। अब तक 19 रन जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर के गेंदबाजी मोर्चे पर फिर एक बार चले जो कि अमित। इस बार रिवर्सिप का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास अगर देखा जाए तो असफल रहा। रिवर्सिप के बारे में अगर कहा जाए तो लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद कहा जाता है। 3 ओवर का खेल खत्म हुआ, रन संख्या 19 रन के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 12 गेंदों का यानी कि 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, और 2 ओवर में कितने रन जुड़े जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सामने वाली ताकतवर क्रिकेट टीम पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, और वो फैसला अब तक सही साबित होता है, क्योंकि सामने वाली टीम के 2 सफलता हासिल की, 2 बड़े बल्लेबाज को बाहर लौटा है मैदान के बाहर। आने वाले 2 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी होगी ये बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सागर सर फिर एक बार जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में।
बॉलर कोण रे जाणे सतीश Thank you, Sumit. And now, fourth over is going to be bowled by Satish. A youngster has been smacked. Let's see whether it is going to be caught. Santosh under the ball. Definite effort. Have stopped the ball from crossing the fence, but we have to wait for umpire signal, and definitely both the hands are raised above the head. So that means that is the better connection from the bat of Suraj. Has waited till the fourth over, maybe wanted to play cautiously for the good bowlers, and as the youngsters have arrived with the ball, first ball goes out of the park. Sixer takes the total to 25. Another good delivery onto the legs. Ball travels towards the point area for a single. Leg by is the signal from the umpire. So Satish delivering into the zone. And a short reply we must say for that big sixer. With that, total moves to 26. We are into the fourth over. A youngster has been given the responsibility of the bowling department by the captain of Sai Ganesh Taligaon. As a left-handed batsman, Saish on the striking end, bowler decides to come round the stumps. Another good strike straight towards the long off area. Fielder patrolling the fence. Gathers the ball comfortably. Strong throw, but away from the bowler. Otherwise, definitely, it would have been interesting at the non-striker's end. Another single to take the total to 27. And that brings Suraj on the striking end, who has struck a beautiful sixer in this over itself. Let's see whether Suraj can continue with the same hitting. All the youngster, young Turk with the ball is not going to give things easy. The time will tell us. Here we go with the next delivery, right arm over the stumps. Good delivery, equally well played along the carpet towards the long off area. Slight fumble. Batsman asking for the second. Good throw towards the keeper. But Suraj is quick onto his feet. Gathers couple of runs. And now the momentum, the shift in the gears. Total moves to 29. Couple of deliveries remaining in this over. Satish onto his run-up mark with a moderate run-up. Right arm over the stumps. This is a wonderful strike. Again into the gap. Two fielders running. Ball bounces, but equally well fielded by Santosh towards the long on area. Good throw, but was at the wrong end. If the bowler has to be a little quick, then definitely there would have been curtains for Suraj at the striker's end. Meanwhile, another couple takes the total to 31. Finally, the scoreboard is racing now after the initial 3 overs. Final delivery of the fourth over. Satish right arm over the stumps. Another good delivery, changes with his appeal. Another finally the young Turk strikes on the final delivery of his quota. Third wicket back to the pavilion at the score of 31. And it's time for DJ with the wonderful track. So meanwhile, DJ is on a call, maybe getting more orders as he is giving services in this tournament. Thank you, DJ. So new man in is Rohit Fateh will be at the non-strikers end. And there are different rules. There is a strict timing for the batsman as well. Every batsman will get 90 seconds to reach at the wicket. Darshan
delivering the final over of the inning. Let's see whether Darshan can keep the momentum that the first three bowlers have set. Meanwhile, Saish on the striking end. Darshan with a very long run up right arm round the stumps. Short pitch delivery, no proper connection. Ball takes the toe end of the bat that travels to the keeper. Meanwhile, a single has been taken. And the finisher of Kundam cricketers right now, playing as the name Lakshmi cricketers, is on the striking end. He has finished the matches for his team at quite a number of occasions, but every day is a new day. And Darshan is the guy with the ball, decides to deliver right arm over the stumps as a right-handed batsman arrived at the crease. So there is a field changes are going on. So after settling with the field placements, here we go with the second delivery in the last over of the first inning. Swing of the bat, ball came much slower than the expectation of Rohit. Bat swing much early, and we have seen the ball traveling very late to the keeper. So Darshan doing the trick, change in pace, dot ball. Another good delivery, Yorker. There was a slight appeal by keeper, but umpire is signaling that bowler has blocked my wave. I'm not able to watch. That is why I'm not able to decide. Benefit of doubt goes for the batsman. Third delivery has been considered. Only single run in this over. This time there's a better connection. The sound of the willow says it all. Stretch of arm by umpire above the head. 6 runs to the total score, moves to 38. Thoughts by the bowler. Slightly outside the off stump. And that has been well judged by Rohit. Leaves the ball to travel to the keeper. Wide is the signal. Score moves to 39. Two deliveries remaining in this inning. Another connection, chance of a catch. Can Darshan take it? Darshan gives the call for himself. On to his follow through. Taken a beautiful catch. Rohit departs. Let's see who is going to be the incoming batsman because he will be on the striking end. Meanwhile, apart from over, all the other bowlers have done a wonderful job. Bowling tight line and length. Score is just 39. Another wonderful strike. Oh my dear. Big man strikes on the final delivery. And what a way to finish the inning. Sixer takes the total to 45 and the target is of 46 runs in front of Sai Ganesh Talegaon. So let's see what happens in the second innings. Till then, it's time for DJ to entertain the crowd.
Our captain to kindly come and register your players on the players list and also be ready for the toss. Next match is going to be played between Sri Bodgeshwar Mapsa versus Bhumi Strikers Asnora. Requesting both the captains be ready and come in front of the commentary box for the toss. Meanwhile, we are into the run chase. Target is of 46 runs. Let's see whether Sai Ganesh Taligaon has enough fibers to get the required target in 5 overs. With the further details, I would like to call a youngster delivering sweet voice while giving the updates. None other than Sumit Karsekar with his updates in national language. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Thank you sir. 46 धावांचं टार्गेट समोर सायकलच्या तालुका क्रिकेट संघासमोर पाहतोय दोन दिग्गज संघ दोन रणधुरंदर क्रिकेट संघ आमने सामने नेत्रिका जोडले गेले सीसी बॉल 25 विकेट या You were the shadow to my light. Did you feel us? तालेगाव क्रिकेट संघाचा आपण Another star, you fade away. टप्प्यावरती धारदार आणि भेदक गोलंदाजी पाहायला मिळाली सायगणेश तालेगाव क्रिकेट संघाची आणि 45 या धावसंख्येवर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ रोखलं गेलं आणि 46 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी साई गणेश तालेगाव क्रिकेट संघाची सलामीची जोडी ओपनिंग जोडी मैदानात पाहायला मिळते. सलामीची जोडी मैदानात आपण पाहू शकतो. स्ट्रायकिंग एंड वरती चंद्र आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती हरीश हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. 46 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामी जोडी एक आक्रमक सलामी जोडी आपण पाहू शकतो. साई गणेश तालेगाव क्रिकेट संघाकडून आणि गोलंदाजी मार्कवर पहिलं षटक घेऊन साईश हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. महत्वपूर्ण पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकादरम्यान 46 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग करण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंड पर चंद्र हा फलंदाज सज्ज होईल. पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी गोलंदाज साहिश याचा महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक प्रमुख गोलंदाज प्रमुख अस्त्र हे मात्र पाहायला मिळतंय लक्ष्मी क्रिकेटर संघाकडून गोलंदाज मार्कवर. पहिल्या चेंडू रिव्हर्सिपचा फटका परंतु हा फटका काय चांगला देतोय. पहिल्या चेंडूवरती त्रिफाचित करतोय फलंदाज चंद्र याला आणि पहिल्या चेंडूवरती सफलता पहिली ब्रेक थ्रू आपल्या सगळ्यासाठी गोलंदाजचा शाहीशा मात्र मिळवून देतोय. परंतु हा प्रयत्न कायसा असफल ठरलाय कारण दुधारी तलवार देखील या पटक्याला बदली जाते. ती लागली तर नक्कीच जास्त धावा देखील देऊ जाते परंतु नाही लागली तर नक्कीच कुठेतरी हा फटका अंगलट देखील येतोय. न्यू बॅटर स्ट्रायकिंग एंड वरती संतोष हा फलंदाज सज्ज होतोय. यावेळेस मात्र चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी गती परिवर्तन केलेला चेंडू आपण पाहू शकतोय. सुंदर यष्टिरक्षण यष्ट्यांच्या मागे पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती सफलता दुसरा चेंडू निर्धावनिक फलंदाज संतोष याला 46 धावांचा पाठलाग आणि हा 46 धावा रोखण्यासाठी अप्रतिम गोलंदाजी मैदानात साईशा गोलंदाजाकडून पाहायला मिळते. महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचा षटक आणि या पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना रोखलं गेलं मैदानात. यावेळेस मात्र ऑन साईडला फटका बॅक टू द बॉलर फटका केला डीप लॉंग ऑनच्या रिजन मध्ये एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केली जाईल. पाहिलं गेलं तर डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात फक्त एकच धाव खर्च केली जाते या चेंडूवरती आणि बऱ्याच वेळानंतर धावफलकावरती धावसंख्येचं मात्र अकाउंट ओपन होताना पाहायला मिळते. एक धाव एक फलंदाज माघारी परतल्यानंतर 46 धावांचा पाठलाग करत असताना साई गणेश तालेगाव क्रिकेट संघ या महत्वपूर्ण सामन्यादरम्यान
यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा डॉट चेंडू निघतोय. निर्धाव चेंडूची गणना. यावेळेस मात्र वेगवान चेंडू ऑन साइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूने मात्र शरीराचा वेध घेतलाय. लेग बायचा इशारा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आणि मात्र अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक काहीसं मात्र परावर्तित होतो. धावफलकावरती 2 धावा एका गड्याच्या नुकसानानंतर 46 धावांचा पाठलाग. महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक मार्गस्थ. गोलंदाजी मार्गवर साईशा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. विनंती करतोय श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघाचा कर्णधार आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये टॉस साठी यायचंय. मात्र फुलर लेनचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न. फलंदाज संतोषाचा परंतु अंतिम चेंडू देखील निर्धाव निघताना पाहायला मिळतो. अप्रतिम गोलंदाजी. ज्याप्रमाणे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाची पहिल्या षटकादरम्यान गोलंदाज स्वप्नील याच्याकडून पाहायला मिळाले त्याच प्रकारची गोलंदाजी पाहिले गेले तर गोलंदाज साईशच्या करवी देखील पाहायला मिळते. फक्त 2 धावा खर्च केल्या जातात. एक महत्वपूर्ण सफलता फलंदाज चंद्रयाला बाद करत असताना 46 धावा रोखत असताना आतापर्यंत 2 धावा एका गड्याच्या नुकसानानंतर. अप्रतिम गोलंदाजी. अचूक टप्प्यावरती धारदार गोलंदाजी. फक्त 1 धाव खर्च केले महत्वपूर्ण पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान. आणि गोलंदाजी मार्कवर पाहिले गेले तर दुसरे षटक घेऊन शेखर हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती सलामीचा फलंदाज ओपनिंग बॅटर हरीश हा फलंदाज पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय. तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती त्याची साथ देण्यासाठी संतोष हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. याच मात्र ऑन साइडला फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. मिस टाइम फटका. इनसाइड एज लागी शॉट पॉइंट लेगला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण झालं तोपर्यंत 1 धाव मात्र सहजरित्या निघताना पाहायला मिळते. एक या धावसंख्येने स्ट्राईक रोटेट झाली स्ट्रायकिंग एंडवरती. यावेळेस पाहिले गेले तर संतोष हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. सांघिक धावफलक 3 धावा एक गडी बाद होत असताना 46 धावांचा उत्तर देताना साई गणेश तालेगाव क्रिकेट संघ या महत्वपूर्ण लढती दरम्यान. आजचा दुसरा दिवस. पंचायत आणि म्युनिसिपालिटी लेवलची एक भव्य दिवस क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. यावेळेस मात्र एक ताकदवर फटका डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. चेंडूचा प्रवास डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. एक दूरवरचा षटकार फलंदाज संतोषच्या बॅट मधून. फलंदाज संतोषच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. आणि सांघिक धावफलक परावर्तित झाले 9 धाव्या धावफलकावरती. लोअर फुलटा चेंडू मिड विकेटला फटका. झेलगड्याची संधी. प्रयत्न देखील झाले परंतु प्रयत्न काहीसे हे अपुरे पडले. सफलता प्राप्त केली जाऊ शकते परंतु यावेळेस जर पाहिले गेले तर झेल सुटल्यानंतर दुहेरी धावा निघतायत. महत्वपूर्ण 2 धावेने सांघिक धावफलक. नेल्सन फिगर मॅजिकल फिगर 11 या धावसंख्येवरती. 11 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. 11 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळेस जर पाहिलं गेलं तर आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू बराचसा बाहेर निघतो. पंचाचा इशारा यस इट इज वाईट. स्क्वेअर चेंडूचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक 12 रन स्कोर बोर्ड वरती. 12 धावा एक गडी बाद होत असताना 46 धावांचा पाठलाग करतोय साई गणेश तालेगाव क्रिकेट संघ. यावेळेस मात्र बराचसा अतिरिक्त चेंडू उंचीला येणारा चेंडू पाहायला मिळतो. आडव्या बॅटला फटका खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो. आणि या निर्धाव चेंडूने सांघिक धावफलक स्थिरावलं गेलं आतापर्यंत 12 या धावसंख्येवरती. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू अलॉंग द कार्पेटचा फटका. मिड विकेट क्षेत्रात फक्त 1च धाव या चेंडूवरती प्राप्त केली जाईल फलंदाज संतोष आणि हरीशाच्या माध्यमातून. आणि 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक. पाहिले गेलं तर आतापर्यंत 13 या धावसंख्येवर 46 धावांचा पाठलाग. एका बाजूने जर पाहिले गेले तर संतोषच्या पैतून आतापर्यंत 1 षटकार मैदानात पाहायला मिळाला तर दुसऱ्या बाजूने संयमी खेळी करणारा फलंदाज तो स्ट्राईक एंडवर हरीश पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू. वेगवान गतीचा चेंडू. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते.
आणि 2 षटकाचा खेळ समाप्त होत असताना धावफलकावरती 13 धावा 1 गडी बाद. 46 धावांचा पाठलाग. येणाऱ्या 3 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी राहिला. 18 चेंडूंचा खेळ मैदानात बाकी राहिलाय आणि 46 धावांचा पाठलाग करत असताना अजूनही विजयासाठी 33 धावांची आवश्यकता. ही साई गणेश तालिगाव क्रिकेट संघाला आहे. 33 धावांचा पाठलाग येणाऱ्या 18 चेंडूवरती कशा प्रकारे केला जाईल हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती आमचे सहयोगी समालोचक सागर सर हे जोडले जातील. So more than 33 runs required. Santosh on the striking end and Swapnil delivering the right line and length. So meanwhile the news of the toss. Bhumi Strikers Arsenal has won the toss and they have decided to field first. Meanwhile there's a chance of a catch. Wicket keeper under the ball. And he's not going to miss as Santosh departs. Swapnil strikes in the 3rd over. And the total at the moment is 13. DJ. So meanwhile, chance of one more catch, whether it is going to take it. Oh my dear, this is a very rare scenario. Rohit not taking the catch. What could have been the second wicket for Swapnil has been dropped right at the long on area. This is a very, very rare occasion that we have witnessed. Another good delivery, another strike into the similar area across the bowler. Fielder from long off gathers the ball. Good throw. Just a single. With that, score moves to 14. I beg your pardon. One more run takes the total to 15. Some more 31 runs required from here on. And 2 overs to be bowled after this over. Hello. Oh my dear, the good bowling continues. Let me tell you, Lakshmi cricketers are also having a very good bowling unit. Right now, Saplil, the in charge with the ball, delivered a better line in length. They have taken a wicket. Short pitch chance have been created. Who is going to take it? Suraj looking for his partner as one more Suraj shining bright in the sky through the clouds, that making it difficult to judge the ball. Finally, couple of runs to take the total to 17. And that concludes a successful over number 3. So after completion of 3, 17 for the loss of 2 wickets. DJ. Fourth over will be delivered by Rohit. Harish on the striking end. With jersey number 10. Let's see whether he can get at least 2 sixes to get that jersey number on his scorecard. Rohit right arm over the stumps with a very short run up. Here we go into the 4th over. First delivery, right arm over.
Change in pace, equally well played. Fielder under the ball, jumps, but only to see the ball traveling above his head. Sixer from the bat of Rohit. Total moves to 23. That is a wonderful strike. Still, the runs that required is gettable. 23 on the board, one more over to be bowled. 46 is the target. More 23 runs required from here on. And if we look, and if we say the cricketing language, then only 4 sixes away from the victory. So here we go, next delivery. Short pitch delivery, wanted to pull, no connection. That was a gift offered by Rohit, missed by Harish. Otherwise, that would have been one more biggie over the square leg area. Nonetheless, a blessing in disguise. Dot ball bowled by Rohit. Another good delivery. Rohit mixing up, sometimes delivering cutters, leg cutters, sometimes off cutters, sometimes straighter ones, quicker ones. So Ganpat on the striking and there's an appeal denied by the umpire. Meanwhile, it's off the bat. So Harish decides to come out of the ground in form of retired out. Looks like Swapnil is a better batsman than Harish. That's why Harish has asked Swapnil to take the charge at the striker's end. Still, fourth over in progress, one more over to be bowled. Total 25 on the board, more 21 runs required. 3 sixes from somewhere will create the interest in this match. So meanwhile, the left-handed batsman Swapnil on the striking end. Let's see whether he can connect at least one in this over. Rohit immediately decides to deliver right arm round the stumps. Swapnil on the striking end, and the dugout is crying Swapnil to get at least 1-6 in this over. So let's see what is going to happen out. Rohit, after setting the field, right arm round the stumps to the left-handed batsman. This is a much better strike. Ball racing away from the fielder. Good attempt to stop the ball from crossing the fence. Meanwhile, won't be able to stop the couple of runs. These 2 runs takes the total to 27. More 19 runs required. Another good strike. There's a fielder inact at the fine leg boundary line. Gaurish dropping one more catch. And another single to end the fourth over. After completion of 4, score is 28 for the loss of 3 wickets. More 18 runs required. 6 deliveries, 18 to get. Let's see who is going to be that bowler who is going to bowl this penultimate over. 18 runs to get, 3 sixes from 6 legal deliveries. And it's none other than Gaurish, who has taken the ball in his hand, who has dropped a catch. Let's see, and the same batsman is on the striking end. Gaurish, the bowler, who has dropped the catch of Swapnil. Swapnil on the striking end. 3 sixes from 6 deliveries. It is a saying in the world of cricket, catches win matches, and sometimes drop catches cost you much more than the Sensex. There's the share market.
Let's see whether the market is going to crush for Lakshmi cricketers or it is going to be a hike for Taligaon. Meanwhile, the first delivery, pacey delivery straight in the hands of keeper. 5 legal deliveries, 3 sixes to get. Swapnil on the striking end. And definitely there will be a lot of challenges will be on this match. Oh my dear, this is a wonderful strike. Chance of a catch. Fielder from the long off takes it safely. Swapnil back to the pavilion and Gaurish gets rid of Swapnil. Yogesh, and he will be at the striker's end as per the modern rules. New rules have been implemented in this tournament. And if the batsman is out in form of catch out, then incoming batsman will be at the striker's end. Yogesh, the new man in. 3 sixes required. Strikes the ball along the carpet. The third mid-wicket fielder in act. Just a single chance of the second run, but equally well backed up by Saish from the covers. A single to take the total to 29. 3 deliveries, 17 runs to get. Another good pacey delivery way outside the off-stump stretch of arms by umpire, main umpire Vaman Mayekar. Wide is the signal, score moves to 30. 16 runs required. Swings the bat very hard, change in the pace does the trick for Gaurish as well as team Lakshmi cricketers. Now the target is merely impossible. 2 deliveries remaining and 16 runs to get. Plays along the carpet towards the cow corner. Fielder in act gathers the ball, throws it back to the bowler. A single and now the final delivery. Let's see whether Yogesh can hit at least a 6 just for his confidence booster. Yogesh on the striking end. Oh my dear, switch it and what a connection. It was a flighted delivery delivered by Gaurish and Yogesh will walk out of the ground with shoulders high, full of confidence as he has strike, switch hit towards the third man boundary for the maximum. Congratulations, Lakshmi cricketers, for ensuring your place in the second round. And you are going to play against Gurunath Uzgaon. So requesting the captain of Gurunath Uzgaon to kindly come and register your players on the players list. Gurunath Uzgaon captain, kindly come at the commentary box, take the players list and register your quota of players. So meanwhile, the next match is going to be played between Bhumi Strikers Asnoda and Sri Bodgeshwar. Bhumi Strikers have won the toss and invited Sri Bodgeshwar to bat first. With the further updates of the fresh match, over to Sumit Kharsekar with his sweet voice. Welcome, Sumit.
of the match. Man of the match, it has been a very tough call for our statistician. Finally, it has been a unanimous decision. Man of the match, Suraj, the opener batsman, who has hung on and finally got some runs for his team. Kindly come and collect your Man of the Match trophy from the hands of Sri Mahadev Dhari. Will be doing the honors for the Man of the Match. Now over to Sumit for the further updates. थँक्यू सर. सामना रंगतोय भूमी स्ट्रायकर असनोरा विरुद्ध श्री बोडगेश्वर या दोन संघादरम्यान. टॉस विन झाल्यानंतर भूमी स्ट्रायकर असनोरा क्रिकेट संघाने घेतलेले क्षेत्ररक्षण आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला निमंत्रण हे मात्र प्रथमतः फलंदाज द्यायचं ते श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघाला. आणि सलामीची जोडी आपण पाहू शकतो मैदानात सनम साळगावकर आणि साथीला स्ट्रायकिंग एंड वरती सनम साळगावकर आणि साथीला नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती औदुंबर हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. गोवा राज्यातील टेनिस क्रिकेटचा एक मोठा डाव. स्ट्रायकिंग एंड वरती रिव्हर्सिपचा बेताज बादशाह सनम साळगावकर स्ट्रायकिंग एंड वरती सज्ज होतोय. तर दुसऱ्या बाजूने पाहायला गेलं तर औदुंबर हा फलंदाज सलामीचा साथीदार नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय. आणि पहिलं षटक जे महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर भूमी स्ट्रायकर असनोडा क्रिकेट संघाकडून गोलंदाज रोहन साळगावकर हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघात दिग्गज खेळाडू गोवा राज्यातील टेनिस क्रिकेटमधील स्ट्रायकिंग एंडवरती एका बाजूने रिव्हर्सिपचा बेताज बादशाह सनम साळगावकर आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाचा प्रमुख गोलंदाजचा रोहन साळगावकर गोलंदाजी मार्कवर पहिलं महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक घेऊन. पहिल्या चेंडूवरती ताकदवर फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून चेंडू सरळ फरार होतोय सीमारेषा पार. दूरवरचा षटकार फलंदाज सनम साळगावकरच्या बॅटमधून. थँक्यू डीजे. पहिल्या चेंडूवरती स्वॅगने स्वागत गोलंदाज असा रोहन साळगावकर याचं. 6 धावा धावपलकावरती पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर. यावेळेस मात्र सुद्धा चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू फाईन लेगला मात्र खराब क्षेत्ररक्षण शॉट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षणाकरवी एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केले जाईल. एक अप्रतिम चेंडू खोलवर टप्प्याचा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला परंतु एक धाव सहजरित्या पूर्ण केली जाते शॉट फाईन लेगच्या क्षेत्रात. आणि एक या धावसुकीने एक धावपलक परावर्तित झाले. धावपलकावरती 7 धावा 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. स्ट्राइक रोटेट झाले स्ट्राइक एंडवरती. यावेळेस जर पाहिलं गेलं तर औदुंबर हा फलंदाज पाहायला मिळतोय पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी. यावेळेस मात्र सुंदर फटका मिड ऑफ क्लिअर करत असताना डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास सीमा रेषे नजदीक अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. सुंदर एफर्ट क्षेत्ररक्षणाकरवी 2 धावा तर नक्कीच सहजरित्या पूर्ण केल्या गेल्या परंतु पाहिलं गेलं तर महत्वपूर्ण 2 धावा देखील रोखल्या जात आहेत. एक अप्रतिम फटका परंतु दर्जेदार क्षेत्ररक्षण मिड ऑफच्या क्षेत्ररक्षणाकरवी पाहायला मिळालं आणि महत्वपूर्ण 2 धावेने सांघिक धावपलक 9 रन स्कोअर बोर्डवरती 9 धावा धावपलकावरती पहिलं महत्वपूर्ण पॉवर प्ले षटक हे मात्र प्रगतीपथावर असताना. मात्र रिव्हर्सिपचा फटका औदुंबरच्या पैतून डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा क्लिअर करत असताना पहिला चौकार औदुंबर याच्या बॅटमधून. आक्रमक सुरुवात मैदानात एका बाजूने सनम साळगावकर तर दुसऱ्या बाजूने औदुंबर या फलंदाजाकडून 13 धावा धावपलकावरती पहिलं षटक काहीच महागडं षटक वळताना पाहायला मिळतंय असनोडा क्रिकेट संघाकडून गोलंदाज रोहन साळगावकर याचं. बेस्ट वर्सेस बेस्टचा सामना आपण पाहतोय दोन दिग्गज संघ या स्पर्धेदरम्यान. यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू सरळ शरीराचा वेध घेतोय.
काहीसा चेंडू मात्र फलंदाजाला लागतोय, परंतु ही जखम मोठी नसावी, कारण आतापर्यंत अप्रतिम फटकेबाजी, आक्रमक फटकेबाजी मैदानात आपण औदुंबऱ्याची पाहिले. रिव्हर्सिपचा एक देखणा फटका जो डीप लॉंग आपला खेचला गेलाय औदुंबऱ्याच्या पळीतून. नक्कीच पुन्हा एकदा कमबॅक करेल फलंदाज औदुंबरा, कारण आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर पहिलं षटक मार्गस्थ असताना 13 धाव्या धावपलकावरती या सलामी जोडीकडून भागीदारी मात्र होताना पाहायला मिळते मैदानात. प्रथमतः टॉस विन झाल्यानंतर भूमी स्ट्रायकर असनोडा क्रिकेट संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलाय आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ एक ताकदवर क्रिकेट संघ या स्पर्धेत पाहायला मिळतो. तो श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघ हा फलंदाजी करताना मैदानात पाहायला मिळतोय. दोन आक्रमक फलंदाज सलामीच्या जोडीसाठी मैदानात पाहायला मिळतात. स्ट्रायकिंग एंडवरती औदुंबर हा फलंदाज आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती सनम साळगावकर हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. यास मात्र वेगवान गतीचा चेंडू, अक्षरशः फलंदाजाला बीट करणारा, निशब्द करणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. अंतिम चेंडू निर्धाव निघतोय. सलगचे 2 चेंडू जर पाहिले तर अंतिम निर्धाव निघाले फलंदाज औदुंबऱ्याला आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होत असताना सांघिक धावफलक हे बिनबाद 13 धाव्या धावफलकावरती प्रथम फलंदाजी करत असताना श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघ या महत्वपूर्ण लढती दरम्यान. दोन दिग्गज संघ आणि या दोन दिग्गज संघांची ग्रंथी काही जुळली गेली. सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट या स्पर्धेदरम्यान महत्वपूर्ण सामना. प्रथमतः टॉस विन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि हा निर्णय कितपत योग्य साबित ठरवला जाईल हे मात्र येणारे वेळ आणि येणाऱ्या क्रिकेट मैदानात ठरवेल. परंतु दोन्ही क्रिकेट संघ हे संघर्ष करताना आणि मेहनत करताना मैदानात पाहायला मिळत आहेत. थँक्यू डीजे. गोलंदाजी बारकवर पाहिलं गेलं तर नामदेव हा गोलंदाज पाहायला मिळतो दुसरं षटक फेकण्यासाठी. पहिलं षटक महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं, या षटकात 13 धावा खर्च केला गेला गोलंदाज रोहन साळगावकर याच्या करवे. परंतु अंतिम 2 चेंडूवरती कमबॅक झालं गोलंदाज रोहन साळगावकर याचं, कारण 2 अप्रतिम चेंडू अंतिम पाहायला मिळाले निर्धाव पद्धतीचे. आणि त्यानंतर दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर नामदेव हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. स्ट्रायकिंग एंडवरती एक विस्फोटक फलंदाज, आक्रमक फलंदाज सनम साळगावकर सज्ज होतोय. यास मात्र कट करण्याचा प्रयत्न बॅकफुटवर येऊन, परंतु पंचांचा इशारा जर पाहिला गेला तर चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप, चेंडू बराचसा बाहेर निघणारा स्वेर चेंडूचा इशारा. एक अतिरिक्त धाव आमच्या गुणतालिकेत ऍड केली जाईल आणि या अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक काहीसं पुढे सरकले गेले. धावफलकावरती 14 धावा प्रथम फलंदाजी करत असताना. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा ताकदवर फटका, मोठा फटका, चेंडू सरळ डीप मिड विकेटच्या वरून आउट ऑफ द पार्क. दूरवरचा षटकार फलंदाज सनम साळगावकर याच्या बॅटमधून. थँक्यू डीजे. 20 रन स्कोर बोर्डवरती 20 धावा. काहीसा वेगवान गतीने धावफलक पुढे सरकताना पाहायला मिळते मैदानात. शॉर्ट चेंडू, शॉर्ट अँपुलचा फटका डीप मिड विकेटच्या वरून. पुन्हा एकदा चेंडू सरळ हवाई सफर करत असताना सीमारेषा पार निघतोय. दूरवरचा षटकार फलंदाज सनमच्या बॅटमधून. थँक्यू डीजे. सलगच्या 2 चेंडूवरती प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजावरती काहीसं मात्र आक्रमण चढवलं जाते फलंदाज सनम साळगावकर याच्या बॅटमधून. यास मात्र पुन्हा एकदा पाहिलं गेलं तर डीप मिड विकेटला फटका, अलॉंग द कार्पेटचा जमिनीलगतचा फटका. परंतु यावेळेस डीपमध्ये जर पाहिलं गेलं तर सुंदर क्षेत्ररक्षण, परतीची फेकी देखील झाली गोलंदाजाकडे. परंतु सिंगल कंप्लीट करत असताना सांघिक धावफलक परावर्तित झाले. 27 रन 27 धावा या धावफलकावरती. दुसरं षटक प्रगतीपथावर काहीसं महागडं षटक वळताना पाहायला मिळतंय, कारण आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर 14 धावा खर्च करणारं षटक फक्त 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होत असताना. स्ट्रायकिंग एंडवरती औदुंबर हा फलंदाज सज्ज होतोय. यावेळेस मात्र रिव्हर्सिपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु काहीशी दुधारी तलवार यावेळेस मात्र निष्फळ ठरते. निर्धाव चेंडूची समाप्ती बऱ्याच वेळानंतर गुणतालिकेत पाहायला मिळते आणि या निर्धाव चेंडूने सांघिक धावफलक हे 27 रन 27 या धावसंख्येवर स्थिरावलं जाते. सुंदर फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात, परंतु यावेळेस
झेलगड्याची संधी काहीशी मात्र गमावली गेली आणि चेंडूचा प्रवास हा डेप स्क्वेअर लेग सीमारेषा उल्लंघन करणारा चौकार फलंदाज औदुंबर याच्या बॅटमधून. थँक्यू डीजे. 31 रन 31 धावा धावपलकावरती वेगवान गतीने पुढे सरकत असलेला धावपलक आपण पाहू शकतो. 31 धावा धावपलकावर सलामी जोडीकडून सुंदर भागीदारी. एका बाजूने सनम साळगावकर याची विस्फोटक आक्रमक खेळी वादळी खेळी मैदानात साकारली जाते, तर दुसऱ्या बाजूने त्याच्या साथीला मात्र औदुंबर याची मात्र कलात्मक फटकेबाजी मैदानात पाहायला मिळते. यावेळेस जर पाहिलं गेलं तर आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू बराचसा बाहेर निघणारा पंचाचा इशारा असतो. चेंडूचा अतिरिक्त धाव पुन्हा एकदा गुणतालिकेत आणि या अतिरिक्त धावेने सागिक धावपलक 32 रन 32 धावा धावपलकावरती. दुसरं षटक काहीसं महागडे षटक. पहिल्या षटकादरम्यान 13 धावा खर्च झाल्यात, परंतु दुसऱ्या षटकादरम्यान आतापर्यंत 19 धावा खर्च होताना मैदानात पाहायला मिळतात तर नामदेव या गोलंदाजाकडून. मिस टायमिंग फटका. चेंडू बऱ्याच वेळ हवेत डीप लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतो, परंतु एक धाव अंतिम चेंडूवरती कंप्लीट केली जाईल आणि एक या धावसंख्येने सागिक धावपलक 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 33 धावा या धावपलकावरती बिनबाद. या सलामी जोडीकडून एक सुंदर भागीदारी. टॉस विन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय हा पाहायला मिळतोय अस्नोडा क्रिकेट संघाचा, परंतु दुसऱ्या बाजूने फलंदाजी मिळाल्यानंतर आतापर्यंत बहारदार फटकेबाजी कलात्मक फटकेबाजी आणि विस्फोटक फटकेबाजी मैदानात श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवर तिसरा आणि महत्वपूर्ण वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं षटक घेऊन पुनाजी कलंगुटकर हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. आणखी एक मोठं डाव गोवा राज्यातील टेनिस क्रिकेटमध्ये हालीच्या मोसमात बहारदार फलंदाजी इनफॉर्म फलंदाज पुनाजी हा मात्र यावेळेस गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय आपल्या संघासाठी तिसरं षटक फेकण्यासाठी आणि समोर मात्र फलंदाज औदुंबर हा पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी पाहायला मिळतोय. 33 धावा धावपलकावर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 षटकाचा हा सामना. समोरचा क्रिकेट संघ एक ताकदवर क्रिकेट संघ आणि त्या क्रिकेट संघासमोर मात्र एक मोठं टार्गेट उभं करणं या दृष्टिकोनातून या मात्र प्रयत्नातून आतापर्यंत बहारदार फटकेबाजी ही मात्र श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आडव्या बॅटने ऑन साईडला फटका बॅक टू द बॉलर फटका काहीसा पाहायला मिळतो. मिस फिल्डिंग पाहायला मिळाली गोलंदाजाची, परंतु एक धाव मात्र पूर्ण करीत असताना स्ट्राईक रोटेट झाले आणि स्ट्रायकिंग एंड वरती यावेळेस मात्र फलंदाज सनम साळगावकर हा पाहायला मिळतोय. 34 रन स्कोर बोर्डवरती 34 धावा. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. 5 षटकाचा हा सामना नक्कीच 5 षटकादरम्यान 50 ते 60 धावा या मैदानावरती नक्कीच काढल्या जातील ती श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघाकडून, कारण आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर 34 धावा तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर असताना. आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची इंदुक कट लेमन कट रुबी कट चेंडू सरा विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. पहिला झटका बसतोय श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघाला. सनम साळगावकर हा फलंदाज काहीसा घातक ठरत होता, तर फलंदाज यावेळेस मात्र डगआउटचा शिकार बनतोय आणि पहिली सफलता पहिला ब्रेक थ्रू आपल्या संघासाठी गोलंदाजचा पुनाजी कलंगुटकर प्राप्त करून देतोय. थँक्यू डीजे. न्यू बॅटर स्ट्रायकिंग एंड वरती अमृत हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. आणखी एक आक्रमक विस्फोटक फलंदाज. या फलंदाजी बऱ्याच स्पर्धेदरम्यान आम्ही फलंदाजी पाहिले. वलंकित फटके या फलंदाजच्या पैतून बऱ्याच वेळा मैदानात पाहिले, परंतु आज पुन्हा एकदा गरज आपल्या संघासाठी. वन डाऊन बॅटमॅन स्ट्रायकिंग एंड वरती अमृत सज्ज होतोय.
फुल टॉस चेंडू मिस टायमिंग फटका डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फटका पाहायला मिळतोय जमिनीलगतचा फटका एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केली जाईल काय डीप मधून सुंदरपैकी यष्टीरक्षकाकडे पाहायला मिळाले फक्त एकच धाव खर्च झाली या चेंडूवरती आणि एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 35 रन लॉस ऑफ 1 विकेट 35 धावा एक गडी बाद झाल्यानंतर पहिली सफलता आपल्या संघासाठी पुराजी कलगुटकर याने मात्र प्राप्त करून दिली. सुंदर चेंडू अप्रतिम चेंडू फुलर लेनचा परंतु आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू बराचसा बाहेर निघणारा वेगवान गतीचा चेंडू पंचांकडे नजरा फिरल्या पंचांनी मात्र स्वे चेंडू घोषित केला एक अतिरिक्त धाव गुणतालिकेत ऍड झाले आणि या अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक काहीसं परावर्तित होत असताना 36 रन स्कोर बोर्डवरती 36 धावा एक गड्याच्या नुकसानानंतर बऱ्याच वेळानंतर मैदानात ऊन पाहायला मिळतंय आणि या कडक उन्हामध्ये चुरशीची लढत दोन दिग्गज संघादरम्यान ताकदवर फटका बॅटच्या मधोमध फटका खेळला गेला परंतु ऑन साइडला मिड विकेटच्या दिशेने मात्र हे झेल पकडले जाते काहीशी ताकद अपुरी पडली फलंदाज औदुंबऱ्याच्या या फटक्यामध्ये आणि दुसरी सफलता या षटकादरम्यान गोलंदाजचा पुनाजी कलगुटकर हा मात्र प्राप्त करतोय. न्यू बॅटर मैदानात सुहर्षा फलंदाज वर्णी लागते स्ट्रायकिंग एंड वरती सलामीची जोडी डगआउटच्या दिशेने रवाना झाली या षटकादरम्यान दोन सफलता प्राप्त केली गोलंदाज पुनाजी कलगुटकर याने अप्रतिम गोलंदाजी अचूक टप्प्याची धारदार गोलंदाजी काहीशी मात्र धावांना रोखून धरण्याने गोलंदाजी मैदानात पाहायला मिळते या तिसऱ्या षटकादरम्यान पुनाजी याच्याकडून यावेळेस मात्र चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी स्लोवर पद्धतीचा चेंडू काहीसा आक्रमक फटका खेळण्याचा प्रयत्न हा फलंदाजचा सुहर्षाचा पाहायला मिळाला परंतु हा प्रयत्न काहीसा अपुरा ठरतो निर्धाव चेंडूची समाप्ती आमच्या गुणतालिकेत तिसरं षटक प्रगती पथावर अंतरिम एका चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी या षटकादरम्यान यावेळेस मात्र सुंदर फटका डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये मिनी हेलिकॉप्टर फटका पाहायला मिळतो पहिली धाव वेगात गतीने पूर्ण केली गेली दुसऱ्या धावेकडे पावले वळले परंतु महत्वपूर्ण षटकाने मात्र रोखलं गेलं स्ट्रायकिंग एंडवरच्या फलंदाजाकडून नकार दिला गेला आणि अंतिम चेंडूवरती एकच धाव निघत असताना सांघिक धावफलक 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 37 रन लॉस ऑफ 2 विकेट 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 37 धावा 2 गडी बाद होत असताना येणाऱ्या 12 चेंडूंचा 2 षटकांचा खेळ राहिलाय बाकी प्रथम फलंदाजी करत असताना श्री बोडगेश्वर क्रिकेट संघ आतापर्यंत बहारदार फटकेबाजी केली सलामी जोडीकडून सुंदर भागीदारी पाहायला मिळाली आक्रमक सुरुवात पाहायला मिळाली आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 37 धावा येणाऱ्या 12 चेंडूवरती किती धावा जोडल्या जातील प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघासमोर किती धावांचं टार्गेट उभं केलं जाईल हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती सागर सर हे जोडले जातील. Thank you, DJ. Sham is the new bowler going to bowl the 4th over. Meanwhile, there's a chance of a catch. Chance has been created and Punaji is not going to drop. Sushant, the bowler, Sushant strikes on the very first delivery that he has bowled. What a wicket to get. Dangerous looking batsman. Suharsh is back to the pavilion. Thank you, DJ. I would like to request Captain of Gurunath Uzgaon to kindly come for toss as you are going to play against Lakshmi Cricketers. So Captain of Lakshmi Cricketers and Gurunath Uzgaon, kindly come for toss. Meanwhile, new man in is
Mahesh Sakalkar will be on the striking end. He is also capable of hitting the ball quite comfortably out of the ground. Right now, marking his guard at the striker's end. Will be facing Sushant. One more over to be bowled after this over. First 2 overs, it was favoring the batting team. Then Punaji Kalangutkar doing the collateral damage. Low full toss was an opportunity to strike the ball, but Mahesh plays along the carpet, knows that Amrut is at the striker's end, so takes a single and gives strike to Amrut. Amrut have a lot of responsibility on his shoulder now. Will be facing Sushant. Right now, team total is 38. One more over to be bowled after this over. Let's see what is going to be the target in front of Bhumi strikers Asnoda. Sushant onto his run-up mark. Right arm over the stumps. Amrut swings the bat much harder, only not able to connect. Sushant delivers a dot ball. So far, a run and a wicket in this over. Can Amrut bring some fortune for his side? The coming time will tell us. Meanwhile, he is at the striker's end, and look at the guidance from behind the stumps, guiding his bowlers quite comfortably. Punaji Kalangutkar. Another good delivery, hint of a leg cutter. Ball going away from the batsman. Equally well kept by Punaji Kalangutkar. Awkward stance, keeping his right leg behind as he watches the ball coming to him. Nonetheless, it won't matter for him unless it is benefiting his team. So requesting the captain of Lakshmi Cricketers kindly come for toss. Meanwhile, there is a split connection and the ball has travelled the distance. Finally, there is a better connection from Amrut. And that sixer takes the total to 44. Double four on the scorecard. Final delivery of the fourth over. Whether this is going to be a single or Amrut is going to connect as a one more over to be bowled, it will be a dilemma in the mind of the batsman. Wanted to connect the ball, asking for a wide as the batsmen have shuffled. That may have a confirmed umpire to give it as a dot delivery. A dot ball to end the fourth over. After completion of 4, Sri Bodgeshwara going at the run rate of 11 runs per over, 44 on the board for the loss of 3 wickets. So meanwhile here the toss is going to happen between Lakshmi Cricketers and Gurunath Usgaon. And here out in the middle we are into the final over. And it's none other than the depth specialist Sid Varekar with the ball. Meanwhile, another wonderful strike just to give the strike to his non-striker partner. So with that, score moves to 45. So meanwhile, Lakshmi Cricketers have won the toss and they have opted to bat first, which will be the following match. So meanwhile, Sid Varekar with the ball
have bowled two beautiful deliveries, one dot and a run. Oh my dear, what a hit! That is from the sweetest part of the bat, sluggish drive, cross-batted horizontal bat drive over the long on fielder, and it has covered the distance miles apart from the boundary rope. Sixer takes the total to 51, 50 up for Sri Bodgeshwar. So definitely the first better strike from the bat of Amrut. Oh my dear, what a Yorker. No chance for Amrut, no answer from Amrut. Rather than the ball travelling safely to the keeper. And even it looks like Punajay has hurt himself as he was holding his finger. So that was the amount of pace generated by Sid. Another wonderful strike. The ball travels the distance above the head of the long on fielder. And what a strike over the bowler's head. A reply for that Yorker. Deliver a couple of inches here and there and the ball will disappear right above your head. What a strike, takes the total to 57. Final delivery of the inning. 57 on the board. Another wonderful strike, chance of a catch, whether it is going to be caught. Fielder under the ball at the long off and receives the ball safely in his palm. Holds the ball, wicket for Sid on the final delivery. Nonetheless, Bodgeshwar have scored 57 runs. 58 is the target. Let's see what happens as Bhumi Strikers Asnoda will be batting in the second innings in the run chase. Till then, DJ, it's time for you.
थैंक यू सर। तो सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में से तहे दिल से शुक्रिया अदा। दो बड़े टीमें अगर देखा जाए तो पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला भूमि स्ट्राइकर असनोड़ा क्रिकेट टीम ने लिया और बल्लेबाजी करते हुए जो कि श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम ने 5 ओवर में बनाए 57 रन और 58 रन का टारगेट जो कि सामने वाले क्रिकेट टीम के सामने। पहला ओवर लेकर गेंदबाजी मोर्चे पर महेश साकळकर और स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि पुनः जी कलंगुटकर। (58 रन टारगेट का पीछा करते हुए जो कि असनोड़ा क्रिकेट टीम ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर पुनाजी कलंगुटकर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर जो कि समीर ये बल्लेबाज दिखाई देते हुए। पहले गेंद फुलर लेन की गेंद यॉर्कर गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज पूना जी का, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। पहली गेंद डॉट निकली विकेट कीपर के दस्तारों में। 58 रन का पीछा निश्चित तौर से एक ओर से आक्रामक बल्लेबाजी हो रहा बेहद जरूरी। इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड के रीजन में डीप लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बड़ा छक्का बल्लेबाज पूना जी के बल्ले से। छह रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। निश्चित तौर से पहले गेंद महेश की बेहतरीन थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ा शॉट बल्लेबाज के बल्ले से। फिर एक बार बेहतरीन गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, गोल्डन स्पॉट पर गेंद गिरी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो अंपायर के ओर रुक मोड़ा बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट गेंद बेहतरीन गेंदबाजी। पहला ओवर जो कि मैंडेटरी पावर प्ले का निश्चित तौर से गेंदबाजी मोर्चे पर महेश दिखाई देते हुए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद कवर के रीजन में इस गेंद को खेला गैप में, एक बेहतरीन शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज पूना जी के बल्ले से, एक बेहतरीन चौका निकलता हुआ। थैंक यू डीजे। 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब तक एक छक्का एक चौका बल्लेबाज पूना जी के बल्ले से अब तक मैदान के भीतर दिखाई देता हुआ। इस बार मिस टाइमिंग कर बैठे, मौका रहेगा कैच का। सनम साळगावकर हमारे स्क्रीन के ऊपर एक आसान सा कैच लपका और एक बड़ा बल्लेबाज इस बार मैदान के बाहर। बड़ी सफलता इस बार मिलती हुई जो कि श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम को। थैंक यू डीजे। तो पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू अपने टीम के लिए गेंदबाज महेश ने हासिल की। निश्चित तौर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पुना जी का असफल रहा, मिस टाइमिंग कर बैठे और मिड ऑफ पर एक बेहतरीन कैच लपका जो कि सनम साळगावकर ने एक बड़ी मछली जो कि जाल में फंसते हुए बड़ा विकेट, बड़ी सफलता प्राप्त की जो कि महेश इस गेंदबाज ने। स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 10 रन अब तक एक विकेट के नुकसान पर, और नया बैटर जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर विवेक दिखाई देते हुए। इस ओवर के आखिरी गेंद अब तक लाजवाब गेंदबाजी, निश्चित तौर से दो बड़े शॉट पुना जी के बल्ले से देखने को मिले, लेकिन यह सफलता प्राप्त की गेंदबाज महेश ने। ऑन साइड के रीजन में इस गेंद को खेला अलोंग द कारपेट का शॉट, एक बेहतरीन शॉट डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में। एक रन आसानी के साथ बनेगा, आखिरी गेंद पर सिंगल मिला और सिंगल के तहत रन संख्या एक ओवर के बाद अब तक नेल्सन पिगर, मैजिकल पिगर 11 रन के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर। 58 रन के टारगेट का पीछा करते हुए शुरुआत तो बेहतरीन देखने को मिले पुना जी की ओर से, लेकिन सफलता हासिल की जो कि गेंदबाज महेश ने अपने टीम के लिए। और एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन संख्या अब तक 11 रन के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर।
थैंक यू डीजे। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज जो कि तुषार दिखाई देते हुए। पावर प्ले के ओवर में 11 रन खर्च किया, एक सफलता प्राप्त की गेंदबाज महेश ने, और उनके नक्शे कदम पर निश्चित तौर से उसी तरह की गेंदबाजी मैदान पर दिखने को मिलेगी जो कि गेंदबाज तुषार द्वारा, लेकिन स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज से एक विस्फोटक बल्लेबाज जो कि विवेक दिखाई देते हुए। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, थोड़ी सी गेंद हवा में थी, विकेट कीपर के लिए मौका था, लेकिन विकेट कीपर के काफी दूर दिखने को मिलेगी। पहली गेंद डॉट निकली स्कोरबोर्ड के ऊपर, और डॉट गेंद के तहत रण संख्या रुकी स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब तक 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर। इस बार इनसाइड आउट खेला, गेंद हवा में, डीप कवर पर इस गेंद को खेला, एक रन आसानी के साथ तब पूरा किया जाएगा, और जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया गया। विकेटों के बीच में बेहतरीन दौड़, और 2 रन के तहत रण संख्या अब तक आगे बढ़ते हुए जो कि 13 रन के ऊपर। अच्छी गेंद को सम्मान देना बेहद जरूरी, और खराब गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलना यह भी बेहद जरूरी, और इस रन के तहत अब तक बल्लेबाजी मैदान के भीतर। ऑन साइड के रीजन में एक ताकतवर शॉट, मिड विकेट के रीजन में एक रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। दूसरे रन के लिए लौटे, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो गेंदबाज की तरफ देखने को मिला। सिर्फ एक रन निकला इस गेंद पर, एक रन के साथ रण संख्या आगे बढ़ी, स्कोरबोर्ड के ऊपर परावर्तित हुए अब तक 14 रन के ऊपर। 58 रन का पीछा करते हुए जो कि भूमि स्ट्राइकर असनोड़ा क्रिकेट टीम, एक विकेट गिरा जो कि पुनाजी के रूप में, और उसके बाद वन डाउन बैट्समैन तुषार और ओपनिंग बैटर जो कि समीर मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। इस बार शॉर्ट टर्म पुल का शॉट, लेकिन मिस टाइमिंग कर बैठे, मिड विकेट पर मौका कैच का, एक आसान सा कैच लपका, और बल्लेबाज इस बार समीर बैक टू द पवेलियन। का लगातार की दूसरी गेंद पर दूसरी सफलता आते ही बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, और गोल्डन डक के शिकार बने बल्लेबाजों की रोहन। थैंक यू डीजे। तो मौका रहेगा गेंदबाज तुषार के लिए हैट्रिक का, यानी कि ऑन हैट्रिक की गेंद रहेगी। न्यू बैटर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, न्यू बैटर सीड मैदान के भीतर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। कल के दिन अगर बात की जाए तो 2 हैट्रिक इस प्रतियोगिता में देखने को मिले, लेकिन आज के दिन की पहले हैट्रिक होगी या नहीं ये तो आने वाले अगली गेंद पर पता चलेगा। ऑन हैट्रिक की गेंद गेंदबाज तुषार की।
लोअर फुल टॉस गेंद, इस गेंद को ऑन साइड की तरफ डिप स्क्वायर लेग के रीजन में खेला। 1 रन आसानी के साथ बनेगा और 1 रन के साथ रण संख्या जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। 58 रन का पीछा। देखा जाए तो शुरुआत बेहतरीन मिली थी, जो कि आगाज बेहतरीन किया था बल्लेबाज पुनाजी कलगुटकर ने, लेकिन उसके बाद विकेटों का सिलसिला मैदान पर जारी रखा जो कि बल्लेबाजी करने वाले असनोडा क्रिकेट टीम ने। और 2 ओवर के बाद रण संख्या 15 के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 ओवर में इस टारगेट का पीछा किस तरह से किया जाएगा, ये बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सागर सर फिर एक बार जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में। Third over of the inning will be bowled by Amrut. And first delivery goes as a dot ball. 15 on the board, more 43 runs required. Oh my dear, what a lovely delivery delivered by Amrut, proving to be all-rounder. And done with the bat and now with the ball. Strikes onto the second delivery. Uprooted the middle stump. Bales take a troll. Clean bowled. Sid back to the pavilion. So with that, Vishant takes the charge, takes the willow in his hand and marches to take the striking end. So with that, 4 wickets back to the pavilion at the score of 15. New man in is Vishant. Let's see what he is going to do. More 43 runs required. 2 more over to be bowled after this over. Still, it is gettable. 58 is the target, 15 on the board. And the 4 good batsmen are back to the pavilion. Nonetheless, Asnoda is having a very deep batting lineup. Still, powerhouses are yet to come. Meanwhile, Vishant on the striking end. Another good delivery, equally well played. Look at the pace of the bat. Ball traveled like a treasure bullet straight to Mahesh within a flash of second at the widest long on area. Equally well fielded. Otherwise, that would have been a boundary. Meanwhile, a single takes the total to 16. And that brings the left-handed batsman onto the striking end. Vivek. So let's see what Vivek can do. Good strike, chance of a catch, fielder under the ball, and he takes the ball quite comfortably. Vivek back to the pavilion. That was a wonderful strike, but not getting the distance. 5th wicket down of Asnoda. So new man in is Sanket. And as per the modern rules, if the batsman is out caught, then the incoming batsman will be at the striker's end. Let's see what Sanket can do. Sanket means signal. And let's see what signal that is going to happen out in the middle. As Sanket is on the striking end. As the left-handed has arrived to replace the left-hander. Slight field placements are going on. Field changes are going on for Sanket. Okay, the correction in name, it's Aniket. Meanwhile, unorthodox shot. Neither it was a flick nor the sweep, but guides the ball towards the square leg to take a single.
That brings Vishant on the striking end. Score moves to 17. 41 runs required. Still 2 overs to be bowled after this over. Vishant on the striking end. Good delivery, equally well played. One bounce straight towards the long off fielder. Tall guy stops the ball on a bounce, and that concludes over number 3. So after completion of 3, score is 18 for the loss of 5 wickets. Thank you, DJ. 40 runs required from 12 legal deliveries. 20 runs per over is the required run rate. But nevertheless, you never know. If a batsman keeps going, then even 30 runs or 36 runs are possible in an over. And this has been done in the past. So let's see who is going to be that batsman. Kaushal, the tall guy. Lovely delivery. Looks to be batsman was not ready. But he has played. And I think umpire will do the better judgment. So first delivery goes as a dot ball. Low full toss, equally well played. What a strike! Ball goes for a stroll out of the square leg. Biggie sixer takes the total to 24. Checked his 24 runs on the board, 34 runs required. And Vishant has given the signal that he can hit the ball quite comfortably out of the park. Let's see what is going to happen as Kaushal with the ball, 34 runs more required. Swings the bat very hard. There's a pale ball, kisses the edge and travels safely to the veteran player, the experienced legendary player behind the wicket. Shaba takes the catch. 6th wicket back to the pavilion. So now the new man walks in is Namdev. Tall guy, captain of this side. And a huge responsibility on the shoulders of the captain. He can make a statement. He has the chance to mark a statement at the moment. Kaushal with the ball. Another edge has been taken. Meanwhile, throw at the non-striker and chance of a run out, but Namdev is quick enough, takes a single to bring Aniket on the striking end. 25 on the board, 33 runs required from here on. A sixer will minimize the target furthermore and will create the chances in the final over. So let's see whether Aniket can at least strike a sixer out of these 2 deliveries. Meanwhile, bowler looks very confident. Kaushal means skillful and is displaying his skills. Meanwhile, chance of a catch and it has been taken.
Second wicket for Kaushal. The skillful bowler showing his skills and taking the wickets. One more wicket back to the pavilion. In fact, the eighth wicket back to the pavilion. So new man in is Saish. 7 wicket back to the pavilion. 8th wicket is hanging out in the middle. Saish on to the striking end and the final delivery of the second last over. More 33 runs required. If Saish can connect at least a boundary, then chances will be more in the last over. Swings the bat very hard. Wide is the signal from the umpire. One more run to the total. Total moves to 26. 32 runs more required. Swings the ball very hard as a ball hits the backside of the batsman. A dot ball to end the fourth over. Now we are into the final over. 6 deliveries and 32 runs to get. Pressure is not on anyone, but let's see who is the bowler going to deliver the final over. So final over will be bowled by Suharsh. Right arm over the stumps. Namdev on the striking end. Can Namdev get at least couple of sixes in the initial stage of the over? 5 sixes required. First strike towards the vacant area, but well fielded by the fielder from long off. Gathers the ball quite comfortably inside the boundary rope. And a single to bring Saish on the striking end. More 31 runs required. 5 sixes will tie the match. Cut shot in act and a simple catch for the fielder at the short third man. 8th wicket back to the pavilion. So now 9th wicket out in the middle. New man in is Sushant. And from here, the plot looks to be sold to Sri Bodgeshwar all the way from Mapsa. Just the formality remaining. 4 legal deliveries. 31 to get. Meanwhile, Sushant shuffles slightly towards the offside to get the elevation, to get the connection, but no connection. Leaves the ball safely to the keeper. And just the 3 deliveries remaining to seal the victory for Sri Bodgeshwar and to be into the quarterfinals. Meanwhile, ball takes the leading edge, travels safely towards the boundary. Some runs to minimize the gap of the target, with the total moves to 31. Final 2 deliveries of the match. Oh my dear, what a strong connection. Shuffles down the track, but
finally gives a catching practice to the long on fielder. Ninth wicket back to the pavilion, and it looks like the last man have got the chance after a very long time, as Asnoda is a very strong unit, and Prajot seems to be batting for maybe third or fourth time in this year. So let's see what Prajot can do, as he will be at the striking end. Can Prajot hit a sixer so that he can make a statement that I'm also capable of hitting the sixes, and next time he can be promoted up the order. So that sixer is going to be a crucial factor for Prajot. Let's see whether Prajot can connect 1-6, as Prajot is on the striking end. Final delivery of the match. Plays the ball straight back to the bowler. Congratulations, Sri Bodgeshwar, as you are the quarter-finalist on day 2. So next match is going to be played between Lakshmi Cricketers and Guru Nath Usgaon. Lakshmi Cricketers have won the toss, and immediately they have decided to bat first. And the team winning this match will enter into the quarterfinals to play the quarterfinals against Sri Bodgeshwar Mapsa. So now it's time for the man of the match. Requesting Mr. Ajay Naik to kindly do the honors at the presentation area. And a good all-round performance by a guy, a short guy, but hit the big sixes and even delivered a beautiful over. Amrut, man of the match. Kindly come and collect your man of the match trophy from Mr. Ajay Naik, who is already at the presentation area. So man of the match, Amrut, receiving the beautiful trophy from the hands of the guest. And now, next match, crucial match for both the teams. Lakshmi Cricketers versus Guru Nath Usgaon. And for the further updates, over to Sweet Voice, Sumit. के भीतर, लेकिन दो बड़े टीमों के बीच में यह मुकाबला एक और से देखा जाए तो लक्ष्मी क्रिकेटर्स टीम जो कि पहला मुकाबला जीत चुकी है, उसके सामने अगर देखा जाए तो गुरुनाथ उसगांव ये टीम खेलती हुई दिखाई देती हुई। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का महत्वपूर्ण फैसला जो कि लक्ष्मी क्रिकेटर्स टीम ने लिया, और ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर। ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर, स्ट्राइक एंड के ऊपर रोहित और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर उन्हीं का साथ देने के लिए जो कि गौरेश दिखाई देते हुए। महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए।
और दूसरी ओर से देखा जाए तो गुरुनाथ उसगांव क्रिकेट टीम की तरफ से पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाजी मोर्चे पर साइराज दिखाई देते हुए। महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के बीच में, जो जीत हासिल करेगा वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम के सामने खेलेगा, इसलिए जीत हासिल करना यह बेहद जरूरी है दोनों टीमों के लिए। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला, स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बैटर रोहित दिखाई देते हुए पहले गेंद खेलने के लिए, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर उनका साथ देने के लिए गौरेश, और गेंदबाजी मोर्चे पर पहला पावर प्ले का ओवर लेकर गुरुनाथ उसगांव क्रिकेट टीम की ओर से साइराज गेंदबाज दिखाई देता हुआ। पहले गेंद अतिरिक्त उछाल बाउंस देखने को मिला, अंपायर की और रुक बोड़ा गया बल्लेबाज की ओर से, लेकिन अगर देखा जाए तो वन बाउंस का इशारा। पहली गेंद बेहतरीन शॉर्ट गेंद थी, लेकिन अतिरिक्त उछाल देखने को मिला इस गेंद पर। एक बेहतरीन पिच दिखने को मिलते हुए, और इस पिच के ऊपर बल्लेबाज के लिए बड़े शॉट खेलने के लिए आसान सा पिच दिखने को मिलता हुआ। पहले गेंद अतिरिक्त उछाल बाउंस दिखने को मिला पहले गेंद पर गेंदबाज साइराज की गेंद पर, और पहले गेंद जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर डॉट दिखाई देते हुए। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फिर एक बार मिस किया इस गेंद को, लेकिन गेंद बल्लेबाज को जाकर लगे। लगातार की दो गेंद डॉट निकलते हुए बल्लेबाज रोहित को पहला पावर प्ले का ओवर निश्चित तौर से बड़े शॉट खेलने का प्रयास मैदान पर दिखाई देता हुआ, जो कि बल्लेबाज रोहित का 5 ओवर का मुकाबला सामने वाली टीम की तरफ अगर देखा जाए तो अब तक बेहतरीन गेंदबाजी पावर प्ले के ओवर में गेंदबाज साइराज के द्वारा। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला जो कि लक्ष्मी क्रिकेटर्स टीम का, और यह फैसला किस हद तक सही साबित होगा ये तो आने वाला समय आने वाला क्रिकेट मैदान पर साबित करेगा। इस बार शॉर्ट गेंद सफल हुए, बड़ा शॉट खेला डीप फाइन लेग के रीजन में, गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर, एक बड़ा छक्का बल्लेबाज रोहित के बल्ले से निकलता हुआ। थैंक यू डीजे। एक बड़ा शॉट तीसरी गेंद पर बल्लेबाज रोहित के बल्ले से डीप फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। पहली दो गेंद निश्चित तौर से डॉट निकली रोहित को, लेकिन उसके बाद एक तगड़ा शॉट फाइन लेग के रीजन में 6 रन के लिए। फिर एक बार सफल होकर खेलना चाहते थे, अगर देखा जाए तो शॉट बैकवर्ड्स लेग की तरफ जब तक गेंद अपील की जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ बना। लेग बाय के रूप में 1 रन और 1 रन के तहत रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक 7 रन बिना कोई विकेट गंवाए। ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर अब तक स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि गौरेश दिखाई देते हुए एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रोहित का साथ देने के लिए, और लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन मैदान के भीतर लक्ष्मी क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम की ओर से दिखाई देते हुए। 4 गेंद का खेल खत्म होने के बाद रन संख्या 7 के ऊपर पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला जो कि लक्ष्मी क्रिकेटर्स का दिखाई देता हुआ इस मुकाबले के दौरान। आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज गौरेश का, लेकिन एक तेज तरार गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाके रुकी बगैर किसी रन से और बगैर किसी नुकसान के तहत। बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी, गोल्डन स्पॉट पर गेंद गिरी रफ्तार के तहत सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाके रुकी। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का अब तक बेहतरीन घटा हुआ, सिर्फ 7 रन खर्च किए गेंदबाज साइराज ने इस ओवर में। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद डाली, अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग, और आखिरी गेंद भी डॉट निकले बल्लेबाज गौरेश को। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ, रन संख्या अगर देखी जाए तो बिना कोई विकेट गवाए अब तक 7 रन के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्मी क्रिकेटर्स टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। एक छक्का बल्लेबाज रोहित के बल्ले से दिखने को मिला, लेकिन उसके बाद बेहतरीन वापसी गेंदबाज साइराज द्वारा लगातार के आखिरी 2 गेंदें डॉट निकाली बल्लेबाज गौरेश को, और पहले ओवर के खत्म होने के बाद रन संख्या अब तक 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर।
दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी मोर्चे पर गुरुनाथ उसगांव क्रिकेट टीम की ओर से आनंद ये गेंदबाज दिखाई देता हुआ। स्ट्राइक एंड के ऊपर रोहित, जिसके बल्ले से अब तक एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए जो कि पाइन लेग के रीजन में क्या खेला गया था पिछले ओवर के दौरान, और रोहित इस बार स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर आक्रामक ढांचे का बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाली, खोद कर निकालना चाहते थे पॉइंट की तरफ। अगर देखा जाए तो मिस फील्डिंग दिखाई देते हुए पहली गेंद तेजी के साथ ले दूसरे रन का प्रयास, लेकिन सिर्फ 1 रन इस गेंद पर मिला बल्लेबाज रोहित को, और 1 रन के तहत रन संख्या आगे बढ़ी, स्कोरबोर्ड के ऊपर परावर्तित हुई जो कि 8 रन के ऊपर। थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में जो कि पॉइंट के रीजन में देखने को मिली, लेकिन 1 रन निकला पहली गेंद पर रोहित के बल्ले से, और 1 रन के तहत रन संख्या अब तक 8 रन के ऊपर। एक ओर से आक्रामक बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी होगी, तो दूसरी ओर से संयम दिखाना आपको बेहद जरूरी होगा। ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर जो कि रोहित के साथ गौरेश अब स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दिखाई देते हुए। इस बार ऑन साइड के रीजन में अलंग द कारपेट का शॉट डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला गया। 1 रन मिला इस गेंद पर गौरेश के बल्ले से, और 1 रन के तहत रन संख्या आगे बढ़ी 9 रन के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी सटीक लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी जो कि गेंदबाज आनंद द्वारा दिखाई देते हुए। दूसरा ओवर जारी प्रगति के ऊपर। अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर डाली तो 9 रन बिना कोई विकेट गए पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री लक्ष्मी क्रिकेटर्स इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद डीप फाइल लेग के रीजन में इस गेंद को खेला, बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन आखिर के वक्त में अगर देखा जाए तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए निकलते हुए। थैंक यू जी। बल्लेबाज रोहित के बल्ले से चौका निकला, और चौके के 7 रन संख्या 13 रन के ऊपर। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास अपने फॉलो थ्रू में, बेहतरीन फील्डिंग जो कि गेंदबाज आनंद द्वारा दिखने को मिली। डॉट गेंद निकली स्कोरबोर्ड के ऊपर, और डॉट गेंद के तहत रन संख्या 13 के ऊपर। इसके पिछले गेंद की अगर बात की जाए तो बेहतरीन शॉट लोअर फुल टॉस गेंद डीप फाइन लेग के रीजन में इस गेंद को खेला, प्रयास आखिरी वक्त तक हुआ फील्डर की तरफ से, लेकिन वो प्रयास असफल रहा, और चौके के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित हुई 13 रन के ऊपर। इस बार स्लोअर वन गेंद चेंज ऑफ पेस डिलीवरी जिसे कहा जाता है, वो गेंद इस बार अच्छी डाली गेंदबाज आनंद ने सटीक लाइन और लेंथ के तहत। फिर एक बार डॉट गेंद निकली, बल्लेबाज रोहित को डॉट गेंद के साथ रन संख्या रुकी अब तक 13 रन के ऊपर। एक ओर से आक्रामक बल्लेबाजी करना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है अटैक इज बेस्ट डिफेंस, आक्रामकता ही बचाव का साधन। इस बार रिवर्सिप का शॉट डीप स्ट्राइक कवर पर नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और निकली सीधी 1 माउस बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। थैंक यू जी। 2 ओवर का खेल खत्म हुआ, रन संख्या 17 रन के ऊपर बिना कोई विकेट गवाए। तो एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक ओर से अब तक अगर देखा जाए तो रोहित के बल्ले से अब तक 1 छक्का 2 चौके निकले, और दूसरे ओर से उसका साथ देने के लिए अब तक गौरेश की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी। गेंदबाजी मोर्चे पर तीसरा ओवर लेकर पिंटू दिखाई देते हुए। पहले गेंद रिवर्सिप का प्रयास इस बार असफल रहा बल्लेबाज गौरेश का, लेकिन पिंटू की तारीफ करनी होगी। पहली गेंद डॉट निकली, बल्लेबाज के टांस को देखा और बेहतरीन गेंद डाली। डॉट गेंद के साथ रन संख्या अब तक 17 रन के ऊपर। रिवर्सिप का शॉट लगा तो आबाद, नहीं तो बर्बाद, लगा तो बड़े रन दे के जाते, काफी रन दे के जाते, लेकिन इस बार एक ताकतवर शॉट डीप लॉन्ग अप के रीजन में, लेकिन ये शॉट फंसा जहां फील्डर मौजूद था डीप लॉन्ग अप के रीजन में, वहां पर इस शॉट को खेला और पहले विकेट का हुआ पतन। रन संख्या रुकी 17 रन के ऊपर। गौरेश बैक टू द पवेलियन।
थैंक यू डीजे। तो पहली सफलता अपने टीम के लिए हासिल की गेंदबाज पिंटू ने। और नेक्स्ट बैटर मैदान के भीतर विक्रांत यानी कि विक्की मैदान के भीतर। पिछले मुकाबले में बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी विक्की के बल्ले से दिखने को मिली। बड़े शॉट विक्की के बल्ले से निकले और इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान वही बल्लेबाजी होना बेहद जरूरी। पहली सफलता अपने टीम के लिए गेंदबाज पिंटू ने हासिल की और इस ओवर की अगली गेंद लेकर स्ट्राइक एंड के ऊपर न्यू बैटर जो कि विक्की दिखाई देते हुए 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरे ओवर का खेल जो कि मैदान पर जारी रखता हुआ। इस बार हल्के हाथ से इस गेंद को स्टीयर करना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे, लेकिन एक बेहतरीन गेंद, थोड़ी सी बल्लेबाज को चकमा देने वाली गेंद देखने को मिली और बेहतरीन विकेट कीपिंग जो कि विकेटों के पीछे। डॉट गेंद निकली स्कोरबोर्ड के ऊपर, अब तक का 17 रन। इस बार बड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकली, आसमान को छूती ना छूती सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। (23 रन स्कोरबोर्ड वरती, 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर दिखाई देते हुए एक बेहतरीन छक्का बल्लेबाज विक्की के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से। फिर एक बार अगर देखा जाए शॉर्ट गेंद, लेग ब्रेक गेंद पड़ने के बाद काफी घूमे आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद का एक अतिरिक्त रन फिर एक बार खाते में जुड़ा और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि 24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास मिड विकेट के रीजन में, इस गेंद को खेला, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया जा सकता था, लेकिन गेंद निकली जो कि बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो मैदान के भीतर अब आक्रामक बल्लेबाजी जो कि विक्की द्वारा दिखाई देते हुए और स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी, एक सफलता हासिल की इस ओवर में, लेकिन महंगा ओवर क्योंकि अब तक एक छक्का एक चौका निकला इस ओवर में। फिर एक बार खराब गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप में बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर का इशारा, यस इट इज अ वाइट। अतिरिक्त रन फिर एक बार खाते में जुड़ा और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या 29 रन, 29 रन के ऊपर। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग कर बैठे शॉट, फाइन लेग के रीजन में गेंद निकले, थोड़ी सी चकमा दी फील्डर को और उसी के तहत 2 रन आसानी के साथ हासिल किए। विकेटों के बीच में बेहतरीन दौड़, 2 रन के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 ओवर के बाद 31 रन, 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है और 2 ओवर में कितने रन जोड़े जाएंगे लक्ष्मी क्रिकेटर्स टीम की ओर से और कितने रन का टारगेट सामने वाले गुरुनाथ उसगांव क्रिकेट टीम के सामने रखा जाएगा, ये बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सागर सर फिर एक बार कमेंट बॉक्स में जुड़े जाएंगे। Check. Thank you, Sumit. Fourth over of the inning will be bowled by Pradeep Navelkar, another shrewd all-rounder from Usgaon, with the ball in his hand. And recently we have seen many pictures of Pradeep Navelkar taking the trophies as man of the match even. And he has been welcomed by a big six from Rohit. Rohit taking the opportunity and strikes the ball out of the ground. That sixer takes the total to 37. We are into the 4th over. First delivery of the 4th over goes out of the boundary rope for a big six. Big guy hitting the big sixes. 37 on the board. Next delivery of the 4th over, right arm over the stumps. Another good strike, chance of a catch. Fielder at the long off. Holds on his nerve. Waits by judging a superb catch. Straight into his hands. And Rohit back to the pavilion.
Thank you, DJ. So new man replacing Rohit is Suraj. Right now, slightly demoted in the batting order. Normally, Suraj used to open, but finally Rohit decides to open. That's why Suraj is coming at number 3 position. And what a way to hit the ball. Makes his statement as he has arrived on the crease. A big six, a second six in this over. Score moves to 43. Bright out in the middle. Lower full toss, well made, a chance of run out. Keeper collects the ball, throws it back to the bowler. Meanwhile, a single is on in form of buys. An extra to take the total to 44. Double 4 on the board. And still one more over to be bowled. Right now, Vikrant lies Vicky on the striking end. Another wonderful strike, chance of a catch. Let's see who is going to take it. Fielder from the deep long off gives the call. And is not able to reach at the bounce of the delivery. The ball was delivered towards the sky and it landed safely onto the ground. Couple of runs takes the total to 46. Just 4 runs away from a half century of the team. Pradeep to deliver. Swings the bat, horizontal bat shot, no connection, leaves the ball to safely to the keeper. That concludes over number 4. And with that, after completion of 4 overs, score is 46 for the loss of 2 wickets. Meanwhile, it's time to thank the sponsors that happen on this very ground. First of all, a big thank you to Antonio Montserrat, that's Babu's, we call him Babu's with love. And his missus, his wife, Jennifer Montserrat, Ashwini Cafe, Satiri Fast Food, Popular Washing Center, Asmita, Sandesh Kirkar, Zen Beverages, Coca-Cola, Munir, Vellore and Anand Wines. A big thank you to all the sponsors for making this very tournament happen at this beautiful ground at Campal, Panjim. Meanwhile, the final over of the inning. Abhijit, the tallest guy after Praveen Papa, with the ball in his hand. Low full toss, equally well played over the covers. No chance for any fielder as the ball races towards the boundary off in a flash. Boundary, and that's a half century for the team. 50 up for batting team, that is Lakshmi Cricketers. Thank you, DJ. That's a 50 figure up for Lakshmi Cricketers. And so far, none of the batsmen have scored half century of the individual quota. Let's see whether we are going to get them in the coming time. Meanwhile, slightly outside the off stump, wide is the signal from the umpire. Score moves to 51. Final over of the inning in progress. 51 on the board. Lot of pressure will be on the bowler Abhijit. Another wonderful strike towards the long off area, away from the player. What a hit, what a player Suraj is. Maybe in the initial of the inning, the ball remains fresh, tennis doesn't settle. And that is the reason Suraj has been sent little down the order as the match progress. Ball becomes little old, and old tennis ball travels much more distance than the fresh tennis ball. This is the reason Suraj has been sent down the order, and he is shining bright out in the middle. Second sixer from his bat. Total moves to 57. Abhijit feeling pressure, feeling the hit. Another strike in the covers. Chance of a catch. Catch has been dropped. A lucky factor. Suraj won the second chance of a run out. Wicket has been taken, but in form of run out.
But lucky thing for the batting side is Suraj is at striker's end. Change in pace, what an hit! Oh my dear! What a hit! Third sixer from the bat of Suraj, and that sixer takes the score furthermore to 64. Sixes, in fact, a little costly over. And Suraj has struck 3 sixes. So Abhijit, another shot of line delivery. Ball takes the leading edge, travels to Papa. Direct hit, but away from the stump, shy at the striking end. That allows both the batsmen to complete a single comfortably. With that, team total moves to 66. And the target is of 67 runs in front of Gurunath Usgaon. So meanwhile, it's time to thank our sponsors. So meanwhile, let's thank to the sponsors who have made this tournament happen on this very ground. First of all, a big thank you to Antencio Montserrat. We call him Babush with love, Minister for Labour, who has donated the tournament prizes. Along with him, his better half, Mrs. Jennifer Montserrat, MLA of Taligav constituency, local MLA, contributing to make this tournament happen, the big sponsors, and along with them, a helping hand from Ashwini Cafe, Popular Washing Center, have donated all man of the match trophies. Ashmita, Sanjay Sherkar, Zen Beverages, Coca-Cola, Munir Bellur, Anand Wines, and Predator Energy Drink that is under Coca-Cola brand. So these are the sponsors. You were a shadow to my light. Did you feel us? And all the stars, you fade away. Target is of 67 runs. And let's see whether a strong unit of Gurunath Usgaon has got enough power, enough capacity and capability to chase down this target. As we are into the run chase,
waiting for the openers. Let's see who are going to take responsibility to the power play. Let's see what is going to happen. Praveen Thapa and Anand are the two openers. Meanwhile, handing over mic for the further updates. थँक्यू सर. पुन्हा एकदा मैदानात वळूया. 67 धावांचं एक मोठं टार्गेट समोर गुरुनाथ उजगाव क्रिकेट संघासमोर आणि या टार्गेटचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी आपण मैदानात पाहू शकतोय. आनंद आणि प्रवीण ही सलामीची जोडी मैदानात पाहायला मिळते या 67 धावसंख्येच्या टार्गेटचा पाठलाग करण्यासाठी. एक मोठं टार्गेट समोर, उद्दिष्ट समोर, परंतु या उद्दिष्टाचा पाठलाग करण्यासाठी आक्रमक जोडी स्ट्रायकिंग एंडवरती बॅटर आनंद पाहायला मिळतो आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती बॅटर प्रवीण पाहायला मिळतोय. तर पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर लक्ष्मी क्रिकेटर संघाकडून पहिलं संघाचा प्रमुख गोलंदाज लेफ्ट हँडर वेगवान गतीचा गोलंदाज साईश हा पाहायला मिळतो स्क्रीनवर. पहिला चेंडू कव्हरला सुंदर फटका फलंदाज आनंदच्या फळीतून, परंतु अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. फक्त एकच धाव या चेंडूवरती खर्च केली गेली क्षेत्ररक्षण करवे आणि पहिल्या चेंडूवरती एक धाव निघत असताना धावफलकावरती एक धाव 67 धावसंख्येच्या प्रत्युत्तर दाखल मैदानात गुरुनाथ उजगाव क्रिकेट संघ. 67 धावांचं एक मोठं उद्दिष्ट, परंतु या उद्दिष्टाचा पाठलाग करण्यासाठी संयम धैर्य दाखवणं खूप महत्त्वाचं, चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं खूप महत्त्वाचं, खराब चेंडूवरती आक्रमण चढवणं खूप महत्त्वाचं आणि ही रणनीती शेवटच्या चेंडूपर्यंत जर आजमावली गेली तर नक्कीच या 67 धावसंख्येचा पाठलाग अगदी सहजरित्या मैदानात केला जाऊ शकतोय. परंतु दुसऱ्या बाजूने देखील रणनीती आखली गेली प्रतिस्पर्धी क्रिकेट फलंदाजावरती आणि गोलंदाज मार्गावर संघाचा प्रमुख गोलंदाज साईश सज्ज होतोय. शॉर्ट चेंडू सुंदर फटका डीप फाईन लेगला, चेंडूचा प्रवास सीमारेषेला नजदीक, सीमारेषा उल्लंघन करत असताना पहिला चौकार्या दुसऱ्या इनिंग मधील फलंदाज प्रवीणच्या बॅट मधून निघताना पाहायला मिळतोय. पाच धावा धावफलकावरती एक चौकार फलंदाजचा प्रवीणच्या बॅटमधून डीप फाईन लेगच्या रिजन मध्ये आणि या चौकाराने सांघिक धावफलक काहीसं परावर्तित झाले. ते 5 धावा 67 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना शॉर्ट चेंडू सुंदर फटका डीप फाईन लेगला सजवला फलंदाज प्रवीण याने आणि स्ट्रायकिंग एंडवरती पुन्हा एकदा सज्ज होईल. पात्र फुलर लेनचा चेंडू लो फुल टॉस चेंडू सुंदर फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून चेंडू फरार होतोय. दूरवरचा षटकार फलंदाज प्रवीणच्या बॅटमधून. थँक्यू डीजे. सलगच्या दुसऱ्या चेंडूवरती दुसरा आक्रमक फटका 6 धावांसाठी आणि सांघिक धावफलक 11 रन 11 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बहुधा स्वीप करण्याचा प्रयत्न डीप स्क्वेअर लेगला डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रात, परंतु यावेळेस गोलंदाजाने कमबॅक केलं. अप्रतिम चेंडू गुडलँड स्पॉट वरती पडल्यानंतर काहीसं वळण घेणारा चेंडू पाहायला मिळाला आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विश्वास असताना निर्धाव चेंडूची समाप्ती हे आमच्या गुणतालिकेत नोंदवली गेली. इथे मात्र जर पाहिले गेले तर आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू बराचसा बाहेर निघतोय. पंचांचा इशारा स्पेअर चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव यावेळेस आमच्या गुणतालिकेत ऍड केली जाईल आणि अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक 12 रन स्कोर बोर्डवरती 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. यावेळी जर पाहिले गेले तर फटका काहीसा फसतोय. मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर रोहित आमच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतो. एक सेब अँड जेल पकडले जातोय आणि काहीसा जो फलंदाज घातक ठरला असता तो फलंदाज यावेळी माघारी परत त्याला पाहायला मिळतो. डगआउटचा शिकार बनतोय फलंदाज प्रवीण. वैयक्तिक कोट्यात 10 धावांची बहारदार खेळी काहीशी मात्र लवकर समाप्त केली गोलंदाज साईश याच्या माध्यमातून.
न्यू बॅटर मैदानात अभिजित हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. आनंद याची साथ देण्यासाठी काहीसा फलंदाज जो प्रवीण घातक ठरला असता लक्ष्मी क्रिकेटर संघाला, तो प्रवीण मात्र माघारी परत ओव्हरपेच चेंडू, मिस टायमिंग फटका आणि मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवरती आमच्या पाहायला मिळाला. तो रोहित हा फलंदाज आणि अप्रतिम एक सेफ हँडल पकडत असताना फलंदाज प्रवीण याची मात्र खेळी काहीशी समाप्त केली. एक षटकार एक चौकार समावेश त्या खेळीमध्ये प्रवीण याच्या, आणि मात्र ती खेळी काहीशी मात्र लवकर समाप्त केली जाते. यश मात्र आल्या एक आक्रमक फटका मिड विकेटच्या वरून, चेंडू सरळ स्टँड ऑन डिलेवर आउट ऑफ द पार्क, दूरवरचा षटकार फलंदाज अभिजित याच्या बॅट मधून. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. सांघिक धावफलक पाहिलं गेलं तर आतापर्यंत धावफलकावरती 18 धावा पाहायला मिळतात. एक गडी बाद झाल्यानंतर 18 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. एका षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 67 धावांचा पाठलाग आणि चोख प्रत्युत्तर देत असताना आतापर्यंत बहारदार फटकेबाजी गुरुनाथ उसगाव क्रिकेट संघाची मैदानात पाहायला मिळते. पहिल्या षटकादरम्यान 18 धावा प्राप्त केल्या जात आहेत गुरुनाथ उसगाव क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून. येणाऱ्या काळात एका बाजूने आक्रमण करणं खूप महत्वाचं आणि त्या दृष्टिकोनातून आतापर्यंत बहारदार फटकेबाजी अभिजित याची पाहायला मिळाली आणि त्याचबरोबर प्रवीण याची देखील पाहायला मिळते. याच मात्र हलक्या हाताने ग्लान्सचा फटका शॉट फाईन लेगच्या रिजन मध्ये चेंडूचा प्रवास आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होईल फेक होईल तोपर्यंत एक धाव ही वेगात गतीने पूर्ण केली गेली आणि एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 19 धावा या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज मार्कवर दुसरं षटक फेकण्यासाठी शेखर हा गोलंदाज स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. लक्ष्मी क्रिकेटर संघाकडून 67 धावांचा बचाव करण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर. मात्र फुलर लेनचा खोलवर टप्प्याचा चेंडू अक्षरशः खोदून काढला जातोय. जमिनीलगतचा फटका ऑन साईडला डीप लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये, परंतु डीप मध्ये प्रोटेक्शन क्षेत्ररक्षक तैनात. फक्त एकच धाव या चेंडूवरती खर्च केली जाते आणि एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 20 धावा या धावफलकावरती एक गडी बाद झाल्यानंतर 20 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मात्र चालू असताना मैदानात पाहायला मिळतोय. मात्र सुंदर फटका बॅक टू द बॉलर फटका स्ट्रेट ड्राईव्हचा फलंदाज आनंदच्या बॅटमधून चेंडू सरळ सीमारेषा उल्लंघन करत असताना चौकार पाहायला मिळतो. एक नेत्रदीपक चौकार फलंदाज आनंद याच्या बॅटमधून. रन 24 धावा या धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 67 धावांचा पाठलाग करत असताना उद्दिष्टाचा मात्र पाठलाग करत असताना आतापर्यंत गुरुनाथ उसगाव क्रिकेट संघ. यावेळी जर पाहिलं गेलं तर आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू फेकला गेला. कव्हरला फटका खेळण्याचा प्रयत्न बहुधा फलंदाज आनंद याचा, परंतु हा प्रयत्न काहीसा अपुरा ठरतोय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती आमच्या गुणतालिकेत. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. अंतरे अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी या षटका दरम्यान आणि स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज आनंद हा पाहायला मिळतोय. लोअर फुलटा चेंडू बॅक टू द बॉलर फटका. झेल घेण्याची संधी परंतु काहीशी संधी गमावले. वेगवान फटका आणि मात्र निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा समाप्ती या गुणतालिकेत. एक ताकदवर फटका, झेल घेण्याची संधी परंतु वेळ कमी भेटला गोलंदाजाला. झेल सुटल्यानंतर देखील जर पाहिले गेले तर निर्धाव चेंडूची समाप्ती. अप्रतिम गोलंदाजी शेखर याच्या करवी पाहायला मिळते. सलगचे 2 चेंडू निर्धाव गेले. काहीसा दबाव हा मात्र फलंदाजावरती निर्माण होताना पाहायला मिळतोय. षटकातील अंतिम चेंडू आणि स्ट्राईक एंडवरती आनंद हा बॅटर सज्ज होतोय. ऑन साईडला फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये, परंतु डीप मध्ये प्रोटेक्शन तैनात. साईश आमच्या स्क्रीनवरती फक्त एकच धाव या अंतिम चेंडूवरती फलंदाज आनंद याच्या बॅटमधून आणि एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. 25 धावा एक गडी बाद झाल्यानंतर 67 रनचा पाठलाग करत असताना गुरुनाथ उसगाव क्रिकेट संघ. पाहिलं गेलं तर अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि विजयासाठी 42 धावांची आवश्यकता गुरुनाथ उसगाव क्रिकेट संघाला. येणाऱ्या काळात कशा प्रकारची फलंदाजी होईल, फलंदाज आनंद आणि अभिजित याची आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळेल की दुसऱ्या बाजूने ज्याप्रमाणे भेदक गोलंदाजी आतापर्यंत मैदानात झाली ती काहीशी सातत्यपूर्ण ठेवली जाईल हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती आमचे साथी कॉमेंटेटर सागर सर हे मात्र जोडले जातील. थँक्यू सुमित. स्वप्नील
bowling the third over in the run chase. Wanted to heave the bat very hard. Meanwhile, wanted a second. Anand, the batsman, settles for a single. With that score, moves to 26. 26 for the loss of 1 wicket. The big wicket, big man back to the pavilion, Pravin Papa. And what a replacement that have been for Pravin Papa. Even hitting the sixers much more bigger than what Pravin Papa can hit. Abhijit, the unconquered hero right now at the crease. So that big six takes the total to 32. Another strike and the similar result. Oh my dear, what a player. 2 sixes from 2 continuous deliveries, and that is the pressure on Swapnil. Immediately walks back to the keeper to take the advice. Thank you, DJ. Third sixer from the bat of Abhijit. What a player he is proving to be for Gurunath Uzgaon. Swapnil about to deliver the next delivery. Now taking little longer run up. Ball capped a little low. Abhijit not happy with the bounce of the ball. Otherwise, if he had to correct, then definitely there would have been hat-trick of sixes. But deceived by Swapnil. Finally, the advice of working for him. Let's see what is going to happen as Swapnil right arm over the stumps. Oh, God. Ball has been hit miles in the air into the orbit. Finally lands miles away from the fence. Third sixer in the over. Abhijit, the unconquered, hitting the biggies. Fourth sixer from the bat of Abhijit. What a player. And this is called the power hitting in tennis ball. It has come on the second day. Another swing chance created. Whether Swapnil can take it. Yes, he does finally the wicket, but the damage has been already done by Abhijit. Has hit 4 sixes in this inning. Departs at the team total of 44, and that concludes over number 3. Lucky breakthrough has come for Lakshmi cricketers, but before that, those monstrous 3 sixes will be in the minds of the players of both the teams. What a player Abhijit has hit at 4 sixes, back at the score of 44. Thank you, DJ. So now the magical bowler Rohit has been given the responsibility, has opened the inning for while batting and now bowling the 4th over of the inning. 12 deliveries, 23 runs to get. Anand on the striking end. Chance created, keeper running, ball falls a little away from the wicket keeper. That allows both the batsmen to take a single. And that single brings a new man in, Umesh, on the striking end. Score moves to 45. More 22 runs required. So word of advice from Anand
to his partner Umesh, who has recently joined him at the wicket. Rohit, the magical boy, with the ball. Right arm over the stumps. Good delivery, equally well played along the carpet. Ball racing away. Has been well fielded by the fielder at the cow corner. A single to bring Anand back on the striking end. Score moves to 46. And now there is a change of the willow for Anand as he's not happy, he's not able to strike with the existing willow in his hand. So definitely change of bet. Let's see whether this change brings fortune for Anand or the mysterious bowler continues to be mystery for the betting team. So meanwhile, even his partner Umesh also is asking for a change of willow. So now there is a change of willow for both the batsmen. And maybe Anand has asked for the bat that Abhijit was playing with. Let's see whether that bat can bring some fortune. Rohit with the ball, mystery bowler, right arm over the stumps. Definitely the 6 bat. Meanwhile, there's a chance of a catch. Fielder running. Another lucky bat has arrived. That produces luck for Anand. Couple of runs. Rohit has created one more chance, but the fielders were not quick enough. What would have been a comfortable catch for the fielder from the deep covers has waited for the fielder from the circle to take the catch. Eventually, ball drops in no man's land. Couple of runs. Score moves to 48. More 19 runs required. One more over to be bowled. Anand with the magic bat in his hand. Let's see what he can do. Low full toss and the bat has worked. Magical bat strikes. Ball goes out of the orbit. Way over the square leg region. No chance for the fielder rather than watching the ball sailing past. Sixer takes the total to 54. A change in pace is not working for Rohit, but definitely Anand strikes a biggie. Another low full toss into the proper area. There's a appeal, but no doubt in mind of umpire rather than declaring it is at not out. Meanwhile, leg wise is the signal. A single takes the total to 55. And now Umesh on the striking end. Let's see whether he's also got a wizard in his hand as a change of bat also for him. Will be facing Rohit. And that wizard as the wound has worked. Ball goes for a troll much higher into the air. Travels the safe distance. Sixer takes the total to 61 and that concludes over number 4. After completion of 4, 61 for the loss of 2 wickets. Final over to be bowled by another mysterious bowler, Gaurish. With the ball, Anand on the strike, just a 6 away from the victory. 6 runs required from 6 deliveries. This is a crucial juncture. Sometimes a batsman tries to go for glory. Good delivery and a wicket on the very first delivery. This is what happens when a runner ball is the requirement. A straight drive, straight to Rohit, straight into the hands, and a big guy holds on. Anand back to the pavilion. Let's see who is going to be the incoming batsman.
So new man in is Anirudh with jersey number 45 on his back. And jersey number 45 is struggling in IPL even to register a win. But let's see, every person is a different. Every player is a different. And every number brings luck in a different way for the different player. Anirudh on the striking end will be facing Gaurish. 6 runs to win from 5 legal deliveries. Anirudh on the striking end. Gaurish, another mystery bowler, right arm over the stumps. Oh my dear, there was an appeal. Maybe ball has brushed the shoulders or maybe the arms on its way to the keeper. It looked like another wicket down, but ball brushed either shoulder or maybe the sleeves. That is why Anirudh survives. 2 dot balls in this final over. Still 6 runs to get. This is going to be a very close finish. And a lot of pressure will be on Anirudh now. 2 dot balls in this over so far. Wanted to cut the ball slightly outside the off-stump stretch of arms by main umpire Vaman Mayekar. Wide. Now the required runs is 5. 4 legal deliveries, 5 runs to get. Gaurish delivering in the opportunist moment. Another good delivery, there's a beautiful connection. And that is over. Anirudh strikes the big 6, finishes off in a style. Congratulations. Gurunath Usgaon and the captain, please come for toss. Quarterfinals is going to be played between Sri Bodgeshwar versus Gurunath Usgaon. Requesting both the captains kindly come for toss. Meanwhile, let's see who is going to be man of the match. Top performer of the pre-quarters. And it's none other than the big guy who has hit 4 sixes at the right moment. Although he has 20 runs while bowling, but recovered his debit. It's none other than Abhijit. And the man of the match will be given by the guest at the days. At the presentation area, Mr. Naren Naik doing the honors. Abhijit, kindly come and collect your man of the match. You were the shadow to my light. Did you feel us? And all the We are stars. requesting both the captains to kindly come for toss. So the toss has been taken off the final. And going to the back with Gurunath Usgaon. And after winning the toss, Gurunath Usgaon has decided to win run. Pressing the opponent of Sri Bodgeshwar. Be ready as we are going to start the quarterfinals in Mumbai. And let's see which are the teams that are going to play. First match in the presentation will be played
Let's see who is going to be the third semi-finalist in this tournament. Match is going to be played between Shri Bodgeshwar versus Gurunath Usgav. Gurunath Usgav captain has won the toss and they immediately decide to bowl first. And with the further updates in the first inning, over to Sumit Karsekar all the way from Bengaluru. And our sound partner, Audio 22, who is making it possible for us to give the updates onto the loudspeaker so that our voice reaches to different parts of the world as well as at every corner on this ground. Over to Sumit, the youngster delivering with his sweet voice in the quarterfinals in the first inning. Welcome Sumit in the commentary box. थैंक यू सर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दो बड़े टीमें, दिग्गज टीमें आमने सामने इस प्रतियोगिता के दौरान। देखा जाए तो पहले टॉस जीता गुरुनाथ उसगांव क्रिकेट टीम ने और फील्डिंग करने का फैसला और बल्लेबाजी के लिए जो कि बुलाया श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम को। ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर सनम साळगावकर और उन्हीं के साथ उदुम्बर, ये जोड़ी मैदान के भीतर पिछले मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत अपने टीम के लिए, बेहतरीन साझेदारी बनाई थी ओपनिंग के लिए। और अब स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर जो कि सनम साळगावकर दिखाई देते हुए। गुरुनाथ उसगांव क्रिकेट टीम के बारे में अगर देखा जाए तो पिछला मुकाबला 67 रन का पाटला का पीछा करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिले मैदान के भीतर। बेहतरीन बल्लेबाजी, आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी सभी बल्लेबाजों की ओर से। और आज का इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान, क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के दौरान पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का यह फैसला, क्योंकि निश्चित तौर से टारगेट का पीछा आसानी के साथ किया जा सकता है और उसी के तहत टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला इस महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के दौरान। गेंदबाजी मोर्चे पर पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाज साईराज जो कि स्क्रीन पर दिखाई देते हुए, और सामने स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर रिवर्सिप का बादशाह जो कि सनम साळगावकर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, पहली गेंद इस बार गेंदबाज साईराज की सामने जो कि सनम साळगावकर। पहली गेंद तेज तरार गोल्डन स्पॉट पर गिरी, आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन मिस किया इस गेंद को। रफ्तार के साथ बेहतरीन गेंद डाली गेंदबाज जो कि साईराज ने। पहला ओवर जो कि महत्वपूर्ण पावर प्ले का ओवर लेकर अपने टीम की ओर से, और पहले गेंद पर बल्लेबाज को खामोश रखा। 5 ओवर का यह मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, इस मुकाबले में जीत हासिल करेगा वो कल के दिन इस मैदान पर जो कि सेमीफाइनल के मुकाबले के दौरान दिखने को मिलेगा। लेकिन इस मुकाबले में जो हारेगा उस टीम का सफर इस प्रतियोगिता के में समाप्त होगा। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास, अंपायर की ओर रुख मोड़ा गया गेंदबाज की तरफ से, लेकिन डॉट गेंद निकली। फिर एक बार मिस किया इस गेंद को, लगातार की 2 गेंद डॉट निकली। थोड़ा सा प्रेशर अब बल्लेबाज की ओर दिखाई देता हुआ। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का, निश्चित तौर से पावर प्ले के ओवर में ज्यादा रन निकालने की कोशिश मैदान के भीतर सनम साळगावकर इस बल्लेबाज की ओर से दिखने को मिलती हुई, और पहले 2 गेंदों पर बीट हुए, लेकिन आने वाली गेंद पर किस तरह की बल्लेबाजी होगी ये तो मैदान पर दिखने को मिलेगी। फिर एक बार शॉर्ट गेंद शपुले, बड़ा शॉट खेला मिड विकेट के रीजन में, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और निकली बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका इस पहले इनिंग का और पहला बड़ा शॉट बल्लेबाज सनम साळगावकर के बल्ले से। स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 रन
पहले 2 गेंद निश्चित तौर से डॉट निकले, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बड़ा शॉट जो कि डीप मिड विकेट के रीजन में चौके के साथ टीम का अकाउंट ओपन हुआ और स्कोर बोर्ड के ऊपर अब तक 3 गेंद के बाद 4 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम इस मुकाबले के दौरान। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेला, मिड विकेट के रीजन में 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और जब तक डिप स्क्वायर लेग के फील्डर आते तब तक 1 रन निकला इस गेंद पर और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़े परावर्तित हुई स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 रन बिना कोई विकेट गंवाए। ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर सनम का साथ देने के लिए जो कि औदुंबर अब इस बार स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास औदुंबर के द्वारा, लेकिन पहले गेंद पर अगर देखा जाए तो गेंद बल्लेबाज को लगती हुई डॉट गेंद निकली। एक बेहतरीन ओवर गट्टा हुआ पावर प्ले का, सिर्फ 5 रन खर्च किए, अब तक 5 गेंद का खेल करते हुआ इस ओवर में। पहले अगर देखे जाए तो पहले 2 गेंदों पर बीट किया बल्लेबाज सनम को, उसके बाद एक चौका निकला, उसके बाद सिंगल निकला और उसके बाद फिर एक बार डॉट गेंद निकली। अब तक बेहतरीन ओवर पनपता हुआ जो कि साइराज के इस ओवर में, इस ओवर के आखिरी गेंद स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि ओपनिंग बैटर औदुंबर दिखाई देते हुए। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, एक बेहतरीन शॉट डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, गेंद निकली आसमान को छूती रही, 6 रन के लिए। के बाद रन संख्या 11 रन के ऊपर बिना कोई विकेट गंवाए। अब तक बेहतरीन ओवर निकलता हुआ साइराज का, लेकिन आखिरी वक्त में आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट जो कि बल्लेबाज औदुंबर के बल्ले से निकला और 6 रन के साथ इस ओवर को काफी महंगा बनाया। 11 रन बिना कोई विकेट गंवाए पहले पावर प्ले के ओवर में बने और दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी मोर्चे पर गुरुनाथ उसगांव क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाज आनंद दिखाई देते हुए। ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर सनम साळगावकर, उन्हीं के साथ औदुंबर, ये मैदान के भीतर जोड़ी दिखाई देते हुए पिछले मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत अपने टीम के लिए इस जोड़ी की तरफ से देखने को मिले और वही शुरुआत बरकरार रखी इस महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के दौरान। ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेला, अलॉन्ग द कारपेट का शॉट मिड विकेट के रीजन में, डिप में फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिला इस गेंद पर और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 12 रन के ऊपर। हर एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जो कि सनम का, निश्चित तौर से गेंदबाज पर प्रेशर बढ़ाने का प्रयास सनम साळगावकर की ओर से देखने को मिलता हुआ, लेकिन दूसरी ओर से अगर बात की जाए तो अब तक एक छक्का देखने को मिला बल्लेबाज औदुंबर के बल्ले से। गेंदबाजी मोर्चे पर दूसरा ओवर लेकर अपने टीम की ओर से आनंद जो कि स्क्रीन पर दिखाई देते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार जड़ में गेंद डाली, इस गेंद को ऑन साइड के रीजन में, डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में इस गेंद को खेला, जब तक डीप पर खिलाड़ी मौजूद फील्ड करते तब तक 1 रन इस गेंद पर फिर एक बार निकला। अच्छी गेंद को सम्मान देना बेहद जरूरी और उसी के तहत अब तक बल्लेबाजी मैदान के बेहतर दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से दिखाई देते हुए सिंगल के तहत रन संख्या आगे बढ़ी 13 रन के ऊपर। दूसरा ओवर जो की जा रही गेंदबाजी मोर्चे पर अगर देखा जाए तो आनंद गेंदबाज दिखाई देते हुए। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग कर बैठे और गेंद निकली सीधे गेंदबाज के हाथों में। पहले विकेट का हुआ बदल, पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू अपने टीम के लिए हासिल किया गेंदबाज आनंद ने और जो कि बल्लेबाज इस बार मैदान के बाहर डगआउट का शिकार बने सनम साळगावकर जो कि बैक टू पवेलियन निकलते हुए।
थैंक यू डीजे। बड़ी सफलता अपने टीम के लिए हासिल की गेंदबाज आनंद ने, जो बल्लेबाज निश्चित तौर से बड़े शॉट खेल रहा था मैदान के भीतर, सनम सायगावकर उसकी विकेट हासिल की। और नया बल्लेबाज वन डाउन बैट्समैन, न्यू बैटर स्ट्राइकिंग एंड पर अमृत वेरलेकर। स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अब तक अगर देखा जाए तो दूसरा ओवर जारी। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद निकली गली के रीजन में। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, जब तक फील्डर पहुंच पाते तब तक गेंद ने सफर तय कर लिया बाउंड्री लाइन का, और बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हुए गेंद निकली 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। आते ही एक नजाकत भरा शॉट बल्लेबाज अमृत वेरलेकर के बल्ले से निकलता हुआ, और उस चौके के साथ रण संख्या 17 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अतिरिक्त उछाल इस गेंद पर दिखने को मिले, गोल्डन स्पॉट पर गिरने के बाद अतिरिक्त उछाल इस गेंद पर। एक बेहतरीन गेंद डाली गेंदबाज आनंद के द्वारा, और डॉट गेंद निकली, बेहतरीन विकेट कीपिंग, और डॉट गेंद के तहत रन संख्या अब तक 17 रन के ऊपर। दूसरा ओवर जारी, लगभग 5 गेंद का खेल खत्म होता हुआ। एक सफलता इस ओवर में हासिल की, जो कि बड़े बल्लेबाज की सफलता हासिल की, सनम सायगावकर जो कि मैदान के बाहर लौटे। उसके बाद मैदान के भीतर जो कि अमृत वेरलेकर स्ट्राइक एंड के ऊपर। इस बार रिवर्सिप का शॉट, एक नजाकत भरा शॉट डीप पॉइंट के तरफ, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ट्वेंटी 23 रन लॉस ऑफ 1 विकेट, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आनंद की आखिरी गेंद पर एक लाजवाब शॉट, रिवर्सिप का बल्लेबाज अमृत वेरलेकर के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार रिवर्सिप का प्रयास लेकिन असफल रहा, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। अंपायर का इशारा जो कि लेग बाइक का, एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा, और अतिरिक्त रन के साथ रण संख्या जो कि आगे बढ़ी 24 रन, 24 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी मोर्चे पर तीसरा ओवर लेकर जो कि प्रदीप हमारे स्क्रीन के ऊपर 1 रन के तहत स्ट्राइक रोटेट हुई, स्ट्राइक के एंड पर अब अमृत वेरलेकर ये बल्लेबाज से दिखाई देता हुआ। इस बार कवर पर एक बेहतरीन लाजवाब शॉट, नजाकत भरा शॉट, डी बेस्ट कवर पर गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। थैंक यू डीजे। तो बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के भीतर अमृत वेरलेकर की तरफ से। स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो अब तक 28 रन, 28 रन, तीसरा ओवर जो की जा रही। इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाली, हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक फील्ड करते तब तक सिंगल बना इस गेंद पर, और सिंगल के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़े 29 रन के ऊपर, 29 रन लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। तीसरे ओवर का खेल जारी, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनस्टॉपेबल बल्लेबाज जो कि अमृत वेरलेकर नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि औदुंबर दिखाई देते हुए। इस बार सफल हुए, बड़ा शॉट खेला लेकिन मिस टाइमिंग कर बैठे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, और एक आसान सा कैच लपका, और ओपनिंग बल्लेबाज जो कि अब औदुंबर मैदान के बाहर डगआउट की तरफ रवाना होते हुए। दूसरे विकेट का हुआ पतन, रन संख्या रुकी 29 रन के ऊपर।
थैंक यू डीजे। न्यू बैटर सुहर्ष अब मैदान के भीतर। ओपनिंग जोड़ी डगआउट की तरफ रवाना हुई। सनम सागावकर उन्हीं के साथ औदुंबरे बल्लेबाज कैच आउट होकर मैदान के बाहर डगआउट की तरफ रवाना हुए। और अब तक अगर देखा जाए तो 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम इस महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के दौरान। इस बार बेहतरीन शॉट डीप लॉन्ग ऑफ के रीजन में। डीप पर फील्डर मौजूद, 1 रन, लेकिन मिस फील्डिंग। गेंद निकली जो कि डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। थैंक यू डीजे। छोटी सी गलती, लेकिन अगर देखा जाए तो छोटी सी गलती आने वाले वक्त में एक बड़ी गलती साबित होगी। चौके के साथ रण संख्या 23 रन के ऊपर। इस बार जड़ में गेंद डाली है अंपायर की तरफ ब्रूक बोड़ा। और इस बार एलबीडब्ल्यू के तहत बल्लेबाज जो कि सुहर्ष आउट होकर मैदान के बाहर लौटते हुए। तीसरे विकेट का हुआ पतन। रण संख्या 33 रन के ऊपर। 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। कंप्लीट 3 ओवर। 3 ओवरों का खेल खत्म होता है। रण संख्या 33 रन के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 2 ओवरों का खेल अभी भी बचा हुआ है और 2 ओवरों में कितने रन जोड़े जाएंगे श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम की तरफ से, क्योंकि महत्वपूर्ण मुकाबला जो कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 2 बड़े टीमों के बीच में दिखता हुआ। इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी ये तो आने वाला समय तय करेगा, आने वाला क्रिकेट तय करेगा। लेकिन आने वाले 2 ओवरों में फिर एक बार कमेंट बॉक्स में चेंज। हमारे साथी कमेंटेटर जो कि सागर सर फिर एक बार जुड़े जाएंगे कमेंट बॉक्स में से। Abhijit the bowler. Meanwhile, a chance has been created on the very first delivery. Fielder have judged the ball. As we can see, he was moving like a, I'm not going to mention what it is, but a zigzag movement. As the ball may be trolling the bowler, a hint of breeze, and ball was going with the breeze. But equally well judged catch from Umesh. The fielder from the long off gathers his hands together and receives the ball quite comfortably. Amrut back to the pavilion in the fourth over. Thank you, DJ. That brings Sadev Kandolkar, popularly known as Tushar, on the striking end. Oh my dear, what a pacey delivery bowled by Abhijit. Tall guy, having strong shoulders, using his shoulders to optimum. But wide is the signal from the umpire. With that, score moves to 34. Fourth over in progress, 34 on the board. Sadev Kandolkar on the striking end. Another basic delivery, again deviating from line and length. Wide is the signal. Consecutive wides delivered by Abhijit. Team total moves to 35. So let's see what is going to happen next. Abhijit with the ball. Switch it in act into the gap. No need to run. Even Sadev watches the ball as he strolls to meet his partner. Boundary to take the total to 39. And a wonderful job done by the volunteer.
youngster running into the bushes to get the ball from where it was hit. Boundary takes the total to 39. Fourth over in progress. Abhijit, the bowler. Another good flick off the wrist, strong hands. Guys, the ball towards the square leg. Meanwhile, a throw. Chance of a run out at the non-striker's end. Good throw. Good receive. And Tushar Sadev Kandolkar back to the pavilion in form of run out. There was a miscommunication that has costed the wicket. Abhijit strikes, takes a wicket in form of run out. And total is 40. So new man in his Sanket will be at the non-striker's end. Fourth over in progress. Mahesh Sakalkar on to the striking end. Abhijit the bowler. Score is 40 at the moment. And one more over to be bowled after this over. Let's see what will be the final total. Meanwhile, a lot of field adjustments are going on for the left-handed batsman. And here we go finally. Abhijit right arm over the stumps onto his run-up mark. Switch hit in act. There's a proper connection. Ball has been bit away from the field as well as away from the boundary rope. And a big six from the bat of Mahesh. Sixer takes the total to 46. So meanwhile, requesting amazing boys to kindly come and take the player list and write your names. Amazing Margao kindly contacted the committee box. Meanwhile, a switch hit was on. No connection. Slight fumble from the keeper that allows a single in form of byes. And that takes the total to 47. Final delivery in the fourth over. Call is going out for the captain of Amazing Margao. Kindly contact the commentary box and submit the list of your players as well as come for the toss. Meanwhile, a quick delivery again, deviating from line and length. Outside the off stump, wide takes the total furthermore to 48. Swings the bat very hard. There was an appeal denied by the umpire. Meanwhile, that concludes over number 4. After the 4, score is 48 for the loss of 5 wickets. Come on! Come on! So the final over will be bowled by Anant. And man on strike, Mahesh Sakarkar. So this is going to be an even contest between Mahesh and Anant. Let's see who is going to be top at the end of the inning. Whether it is going to be Mahesh or whether it is going to be Anant. The time will tell us the friction of seconds remaining in this final over. Another switch hit was the attempt, but Anant is a very shrewd bowler. Immediately I judged that it is going to be a switch hit. Delivers right near the body line of Mahesh, who was shuffling towards the leg side. Good response from Anant. Delivers a dot ball in the final over.
Another switch hit was attempted, but the ball was pitched way down the leg stump. That is why wide is the signal. Otherwise, when you switch both these sides becomes the offside as per the modern rules. And the wide takes the total to 49. Another attempt. No proper connection. Takes the ball towards the short third man for another single, and 50 up for Sri Bodgeshwar into the fifth over. Still, deliveries are yet to be bowled. A word of advice from Mahesh to his incoming partner Sanket. Let's see what Sanket can do as he will be at the striking end. Anant with the ball, delivering the penultimate over. Let's see what is going to happen out in the middle. Right arm over the stumps, and a couple of field placements going on for the right-handed batsman. So finally, the settlement is done. Anant, right arm over the stumps. A flighted delivery, chance of catch, good covered. The fielder Umesh have covered the ground but could not hold on. Lovely running displayed, good quick fits to cover the gap from a long off till the ball which was hit over the extra cover. And couple of runs takes the total to 52. Oh, God, dear. Even I thought that ball will be declared as a wide, but the leg cutter ball takes the turn at the very last moment after hitting on the deck, and the leg stump has been dismissed. Sanket back to the pavilion, 6th wicket down of Sri Bodgeshwar. So requesting the captain of CC Boys kindly come for toss as captain of Amazing Margam is already in front of the commentary box. Meanwhile, final over is on. New man in is Gavresh. Let's see what Gavresh can do as he's on the striking end. Low full toss, equally well played. Guys, the ball towards the mid-wicket area. Ball bounces a lot more. Crosses the fence comfortably. And that boundary takes the total furthermore to 56. So, final delivery of the inning. Can Gauresh connect handsomely, or Anant is not going to give it easy? Beautiful connection. That is a wonderful strike to finish off in a style. Gauresh connects. Team total moves to 62. Target is of 63 runs in front of Gurunath Usgaon. Let's see which team becomes the third semi-finalist. We'll come to the in a while as this is an inning break. We'll be joining soon with the updates. Till then, it's time for DJ. Will be taken of the
will be awarded for winning side to complete the total of 20 over 5 overs. Even the batsman will get 90 seconds to be present at the by two openers Anand and Praveen. So the stage is set for the run chase. What a setup as the sun also hiding behind the clouds and a perfect weather to continue this beautiful game of cricket. Strong breeze blowing from offside towards the leg. And here we go with the first delivery in the power play. There is a wonderful delivery, equally well played by Anand. Knows Mahesh is a very shrewd bowler, not taking any chance against Mahesh. Drives the ball straight towards long off area for a single. With that, Gurunath Uzgaon have opened the account. Now Praveen onto the striking end. Wanted to swing the bat towards the mid wicket. Good throw at the striker's end, slightly away from the stumps. Shy at the striker's end. And both the openers have opened their beautiful account. Score moves to 2. Anand onto the striking end. Another good Yorker, equally well played, drives the ball through the covers. Ball races like a tracer bullet. Off towards the boundary in a flash. What a wonderful cricketing shot to watch. Boundary takes the total to 6. Wonderful boundary. Similar delivery, equally well played towards the mid-on area. Fielder from the circle, slight fumble. Equally backed up by the fielder from the cow corner. Stops the ball from crossing the fence. Meanwhile, a single to take the total to 7. First over in progress. Power play over is on. 7 runs onto the board. Another good delivery. Swings the bat very hard. Slight fumble from keeper Shaba. No harm done as a batsman settles down without taking a run. 7 on the board. Praveen Papa finding it difficult, knows the capacity of Mahesh Sakalkar. Another good delivery. Yorker, there was a chance of catch. Oh my dear. Misjudged the catch. What could have been a wicket has been put down. He stayed at his spot. A step ahead would have been curtains for Praveen. Meanwhile, a single to end the power play. 8 runs have come off it. What a beautiful over. Bowled by Malinga of Goa playing for Bodgeshwar. So let's see what happens as the second over will be bowled by Sahadev Kandolkar, popularly known as Tushar. Taking a word of advice from his senior bowler, Mahesh, giving the proper advice, may have discussed how to carry on, where to deliver for Praveen. Praveen on the striking end, Sahadev left arm over the stumps. Short pitch delivery, strikes the ball up mile in the air. 2 fielders and finally the catch has been taken. Praveen departs without doing much at the crease. First wicket back to the pavilion at the score of 8.
Thank you, DJ. As Praveen departs, a new man joins in Abhijit, man of the match in the pre-quarters. Let's see what he can do for his side into the very important match. Team winning this match will qualify for the semi-finals. Sadev manages to take a wicket, provides a breakthrough for his side. A wide is Yorker, but outside the guideline. That's why wide is the signal from the umpire. That wide takes the total to 9. Oh my dear, what a hit! Ball has been pitched slightly fuller, and Abhijit taking the maximum advantage of it. Sixer takes the total to 15. Abhijit, what a player. Fifth sixer from his bat in this tournament. Another ball, a sense of opportunity. Pulls the ball onto his back foot. What a beautiful strike over the mid wicket. Second continuous six. Sadev has been taken for a troll. A wicket was taken in this over, but 2 sixes also have come from the bat of Abhijit. Sixth sixer from his bat in this tournament. Team total moves to 21 into the quarterfinals. So meanwhile, a word of advice from the senior player to his bowler. And Sadev decides to come round the stump. That is working at the moment. Change of angle, change of the line. Meanwhile, slight fumble, but both the batsmen settles for a single. And that single brings Anand on the striking end. Anand knows the importance of the wicket of Abhijit. That's why he knows that score has already come. Required run rate have matched. That's why not taking the risk. And he himself at the striker's end. Reverse switch it attempted. No connection. Beautiful delivery. Right into the block hole. Wideish Yorker. Score is 22 at the moment. Swings the bat very hard. Not proper connection, but a still ball races towards the square leg area. Fielder from the deep gathers the ball, throws it back to the keeper. And that concludes over number 2. After completion of 2 overs, score is 23. So more 40 runs required from 18 legal deliveries. Let's see what is going to happen. Till then, it's time for DJ. Thank you, DJ. As we can see, Amrut warming up at the bowling end. So Amrut going to be bowling the third over. So many plans will be working out in the dugout of Guru Nath Usgaon as a whom to target, whom to go after. Meanwhile, Amrut right arm over the stumps. Good delivery, chance created. Shaba running, but won't be able to catch the ball as ball drops away from the keeper. Meanwhile, a single to start with the proceedings in the third over. Single takes the total to 24. More 39 runs required. Abhijit now on to the striking end. Right now he is proving to be Bahubali of Guru Nath Usgaon. Low full toss, a hammer has been hit and the hammer takes the ball out for a troll. What a player, what a player, hitting the sixes on a regular interval. That 6 takes the total to exactly 30.
So it looked like the way Abhijit is betting, I'm not going to spare anyone. Let it be Amrut. I don't care if the ball is delivered in my region. And definitely it is going for a 12. Meanwhile, change in pace does the trick as the ball came little slower than the previous one. That has created little difficulty for Abhijit. So definitely that will be the thought that will be considered by the bowler. Let's see what is going to come next. A word of advice from Sanam Salgaonkar to his bowler. And here we go with the next delivery. Lower full toss has been hit along the carpet towards the cow corner. Anand wanted the second, wanted Abhijit to be at the striking end. But Abhijit decides to settle for a single. A single take the total to 31. More 32 runs required. 2 more overs to be bowled after this over. Anand on to the striking end. So far little quiet as usual. Taking his time before exploding. Another Yorker slide fumble allows both the batsmen to take a single. And that single takes the total to 32. 31 more runs required. Another good looking strike, chance of a catch where the fielder is going to take it. Yes, it is. The catch has been taken towards the long off, and look at the jubilation. Pack of 11 players running towards the fielder to congratulate him as the danger man back to the pavilion. Thank you, DJ. 3 overs have been bowled. Suharsh bowling the 4th over. Man on strike, Umesh. Exactly 31 runs required from here on. First delivery, good delivery into the right area. Equally well played for a single. And that single brings Anand on the striking end. Now, a lot depends on this batsman. 30 more runs required from 11 legal deliveries. 5 sixers to get to book themselves into the semi-finals. 2 good teams are fighting it out in the middle. Another good delivery, equally well played. Misfielded onto his follow-through. That will allow both the batsmen to take 1 more single. Meanwhile, 2 is the call, but good fielding by Sahdev. Waited before taking the call to throw the ball. And just a single. Score moves to 34. 10 legal deliveries, 29 to get. So a short discussion going on out in the middle as how to carry on. Who is going to take the charge? That must have discussed. Finally, Umesh on the striking end. Suharsh the bowler. Swings the bat, ball bounces much more than the expectation as ball travels safely to the keeper. Dot ball in the end. Whether Umesh can strike a sixer, that will be the question in the mind of the dugout of his team. Swings the bat,
There's a connection, chance of a catch. Amrut, the safest fielder, takes a safe catch. And that makes Umesh to walk back to the pavilion. So new man in is Anirudh, and Anirudh is the man who have struck that beautiful six to finish the match in the pre-quarters. Let's see whether he can do the same thing for him as well as his team. But now this is a different bowler in front of him. Suharsh, the tall guy, with the ball. Anirudh on to the striking end. Suharsh, the successful bowler in this over so far. 29 more runs required. So far, only 2 runs have come in this over. Again, a good delivery way outside the off stump. Wide is the signal. That wide takes the total to 35. Swings the bat very hard. There's a appeal. Definitely there's a fall of a wicket as Anirudh walks back to the pavilion. 2 wickets for Suharsh in this over. What a comeback by Suharsh in the 4th over. So new man in is Utkarsh, walking with the willow in his hand. More 28 runs required. And the final delivery of this second last over. Still a hit will bring some hope of joy for the dugout of Gurunath Usgaon. Let's see whether the incoming batsman Utkarsh can hit a 6 of the last delivery, or Suharsh is going to deliver very tight line and length. The time will tell us. Meanwhile, Suharsh on his run-up mark. Utkarsh on to the striking end. Final delivery of the 4th over of the run chase. And the ball has been struck along the carpet towards the long on area. Anand is not interested, knows that he should be the man on the strike. That's why the last delivery of the 4th over goes as a dot ball. 35 on the board, 28 more required from the final over. Kaushal with the ball in his hand. Anand on the striking end. Kaushal means skillful. Let's see whether Kaushal can repeat the similar skill that he have applied in the pre-quarters, doing his warm-up, and will be at his run-up mark. Kaushal with a very short run-up as he's going to deliver. Man on strike, Anand. Crucial moment of this quarterfinal, as the team winning will be posting their name as the 3rd semi-finalist of this tournament. And fielding umpire, please note, there is a time for you as well.
Meanwhile, umpire is asking something, maybe asking the fielding side to carry on as quick as possible, otherwise they might have to face the penalty. First delivery, Anand swings the bat very hard. Ball travels safely to the keeper. First delivery goes as a dot ball. Still 28 runs required. Short pitch delivery has been pulled towards the cow corner area. Mahesh Sagalkar gathers the ball. A single. More 27 runs required from 4 deliveries that are left in this match. Now just the formalities remaining in this match as Utkarsh is on striking end. Swings the bat with the maximum power. No connection. Makes the ball to travel safely to the keeper. So good over continues from Kaushal as well. So meanwhile, a single has been taken in form of leg by. Good throw at the non-striker's end. Now Anand on the striking end. Let's see whether Anand can connect at least in this over. Meanwhile, another single. And the final delivery. But the plot has been already sealed by Sri Bodgeshwar all the way from Mapsa. Just the formalities remaining. Final delivery of the match. And before that, congratulations, Sri Bodgeshwar. You are the third semi-finalist of this tournament. Meanwhile, the next match is going to be played between CC Boys versus Amazing Margao. CC Boys has won the toss and they have decided to field first. So in a while, in a short, we are going to start with the second session of the second day. And with the updates, would like to invite Sumit at the commentary box with the further updates.
एक सुचोवणी आसा हांगा एक आमकां चावी मेळिल्ली आसा मातशी कोणाली आसा ती शेणल्या जाल्यार मातशे पळयात बॉल्सा चेक करात महिंद्रा वयर लोगो जो पळयलो जाल्यार महिंद्राचे दिसता म्हाका हांगा कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन कॉन्टॅक्ट करचो जर तुमची चावी बी शेणला जाल्यार हय येस So meanwhile, it's time to honor the man of the match of the quarterfinals. Shri Bodgeshwar are the winners. They are the semi-finalists. And let's see who is going to be the most valuable player. And it is none other than the bowler who has delivered beautifully into the fourth over. Suharsh, man of the match. If you are present on the ground, please kindly come and collect your man of the match trophy from the hands of Dheeraj, who will be doing the honors at the presentation area. Suharsh is already marched, requesting Dheeraj to kindly do the honors. Man of the match waiting at the presentation area. So I think Mr. Dheeraj is quite shy. That's why our senior umpire Vaman Maekar will be doing the honors. Man of the match, a shrewd bowler, Suharsh will be receiving the trophy of the presentation area. And with the second session of the day, over to Sumit with his sweet voice with the updates of the first match of the afternoon session. थैंक यू सर। तो दोपहर के सत्र में सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। मुकाबला अगर देखा जाए तो सीसी बॉयज पंजीम बनाम अमेजिंग मडगांव इन दो बड़े टीमों के बीच में पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट टीम का और बल्लेबाजी करते हुए जो कि अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम। ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि विवेक और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर जो कि राहुल, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। दोपहर का सत्र कड़ी धूप मैदान के भीतर, लेकिन एक हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान के भीतर देखने को मिलेगा क्योंकि दो बड़े दिग्गज टीमें आमने सामने इस प्रतियोगिता के दौरान। और गेंदबाजी मोर्चे पर पहला ओवर लेकर सीसी बॉयज पंजीम टीम की तरफ से विवेक। पहली गेंद अगर देखी जाए तो आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया और अतिरिक्त रन के तहत अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम के अकाउंट ओपन होता हुआ। हेलो, तो इस बार बेहतरीन चौका जो कि 22 के रूप में मिलता हुआ टीम के खाते में। और चौके के साथ रन संख्या अगर देखी जाए तो 5 रन के ऊपर अतिरिक्त रन के साथ टीम का खाते का अकाउंट ओपन हुआ। उसके बाद एक 22 के रूप में चौका मिला और चौके के साथ रन संख्या अब तक 5 रन के ऊपर। ओपनिंग जोड़ी जो कि अखिल और उन्हीं के साथ राहुल मैदान के भीतर और गेंदबाजी मोर्चे पर पहला ओवर लेकर जो कि पावर प्ले का पहला महत्वपूर्ण ओवर लेकर विवेक का दिखाई देते हुए। इस बार तेज तरार गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद फिर एक बार निकली शॉट थर्ड मैन पर, लेकिन मिस फील्डिंग देखने को मिली। एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और जब तक देखा जाए तो गेंद ने सीमा रेखा बाहर निकले 4 रन के लिए।
लगातार की खराब फील्डिंग मैदान के भीतर सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम की ओर से दिखाई देते हुए और चौके के साथ रन संख्या अब तक का 9 रन के ऊपर। स्ट्राइक के एंड के ऊपर जो कि अखिल दिखाई देते हुए अब तक एक चौका अखिल के बल्ले से और 22 के रूप में एक चौका। इस बार बेहतरीन शॉट इनसाइड आउट, डीप कवर पर इस गेंद को खेला, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और जब तक फील्डर पहुंच पाते तब तक 2 रन फिर एक बार आसानी के साथ पूरे किए। विकेटों के बीच में बेहतरीन दौड़, इसके पिछली गेंद पर चौका निकला, उसके बाद था सेंसिबल क्रिकेट मैदान के भीतर 2 रन के तहत रन संख्या जो कि अगर देखी जाए तो अब तक 11 रन के ऊपर बिना कोई विकेट गवाए, जो कि ओपनिंग जोड़ी की तरफ से साझेदारी पनपती हुई। महत्वपूर्ण मुकाबला दोपहर के सत्र में सेकेंड सेशन जो कि ये शुरुआत होता हुआ और पहला मुकाबला। लोअर फील्ड टॉस गेंद मिस टाइमिंग कर बैठे, कवर पॉइंट पर इस बार एक आसान सा कैच लपका फील्डर ने और पहले विकेट का हुआ पतन। अकील जो कि वापस लौटे डगआउट की तरफ और रन संख्या रुकी अब तक 11 रन के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट गिरा जो कि अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम का। अखिल जो कि मैदान के बाहर डगआउट की तरफ रवाना होते हुए एक चौका अखिल के बल्ले से, लेकिन मिस टाइमिंग, लोअर फुल टॉस गेंद मिस टाइमिंग कर बैठे और कवर पॉइंट पर एक आसान सा कैच दे बैठे। नया बल्लेबाज जो कि न्यू बैटर मैदान के भीतर राहुल का साथ देने के लिए, सिद्धू जो कि मैदान के भीतर 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर 11 रन की साझेदारी तोड़ी गेंदबाज विवेक ने और पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए। सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया और वो फैसला अब तक अगर देखा जाए तो सही साबित हुआ, क्योंकि एक सफलता अपने टीम के लिए मिली जो कि पहले ओवर में गेंदबाज विवेक द्वारा और नया बल्लेबाज जो कि लेफ्ट हैंड स्ट्राइक एंड के ऊपर सिद्धू दिखाई देता हुआ। इस बार तेज तरार गेंद विकेटों को हवा दे करने के लिए विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन और बगैर किसी नुकसान के साथ डॉट गेंद निकली और डॉट गेंद के साथ रन संख्या रुकी स्कोरबोर्ड के ऊपर 11 रन। पहला ओवर जो कि महत्वपूर्ण पावर प्ले का, निश्चित तौर से इस पावर प्ले के ओवर में बड़े शॉट मैदान पर खेले जाएंगे जो कि दोनों ही बल्लेबाज की ओर से। फुलर लेंथ की गेंद इस बार कवर पर इस गेंद को खेला, शॉर्ट कवर पर जब तक फील्ड किया जाता तब तक एक रन तेजी के साथ पूरा किया। आखिरी गेंद पर एक रन मिला बल्लेबाज सिद्धू के बल्ले से और एक रन के साथ रन संख्या पहले ओवर के बाद 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर। निश्चित तौर से टॉस हारी पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला जो कि अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम को, लेकिन शुरुआत अच्छी रही। 11 रन पर पहला विकेट गिरा और अब तक अगर देखा जाए तो पावर प्ले कवर में 12 रन बने एक विकेट के नुकसान पर। सिद्धू और राहुल ये जोड़ी मैदान के भीतर अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम की ओर से दिखते हुए आने वाले वक्त में निश्चित तौर से आखिर के गेंद पर मैदान पर रहना बेहद जरूरी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम एक बड़ी टीम, ताकतवर क्रिकेट टीम, उसके सामने बड़ा टारगेट सेट करना बेहद जरूरी रहेगा इस मुकाबले के दौरान। सेकेंड सेशन का यह पहला मुकाबला जो कि सीसी बॉयज पंजिम बनाम अमेजिंग मडगांव के बीच में। दूसरे ओवर की पहली गेंद, बड़ा शॉट मिड विकेट के रीजन में, लेकिन यह भी शॉट फंसता हुआ। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने बेहतरीन कैच लपका, एक आसान सा कैच लपका और सिद्धू जो कि वापस लौटे डगआउट की तरफ। दूसरे विकेट का पतन हुआ, रन संख्या रुकी 12 रन के ऊपर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग कर बैठे, शॉट सिलेक्शन गलत, ऑन साइड के रीजन में मिड विकेट की तरफ एक बेहतरीन कैच लपका।
दूसरा ओवर गेंदबाजी मोर्चे पर अगर देखा जाए तो साहिल ये गेंदबाज दिखाई देता है और पहली गेंद पर सफलता अपने टीम के लिए हासिल की। दूसरा ब्रेक थ्रू अपने टीम के लिए, जो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास दिखने को मिला सिद्धू की तरफ से, लेकिन वो शॉट सिलेक्शन गलत था। मिड विकेट के रीजन में मिस टाइमिंग शॉट खेल बैठे और डिप स्क्वेयर की तरफ से बेहतरीन दौड़ लगाई इस कैच के लिए और एक आसान सा कैच बनाया। 2 विकेट के नुकसान पर अब तक 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। दूसरा ओवर जारी और न्यू बैटर अब मैदान के बेहतर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर विदेश दिखाई देते हुए। इस बार बेहतरीन गेंद, तेज तरार गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास ऑन साइड के रीजन में मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। लाजवाब गेंदबाजी मैदान के भीतर सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट टीम की ओर से। दूसरा ओवर जारी। अब तक अगर देखा जाए तो 2 गेंद का खेल खत्म हुआ, रन संख्या 12 के ऊपर रुकते हुए 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार फिर एक बार मिस किया। लेग ब्रेक गेंद थी, पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज विदेश और फिर एक बार डॉट गेंद निकली। लगातार की 2 गेंदें डॉट निकले। दूसरा ओवर जारी है, निश्चित तौर से पेशर बढ़ेगा हर एक गेंद डॉट निकलते हुए। लगातार की तीसरी गेंद डॉट निकले। बेहतरीन गेंदबाजी सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाज साहिल द्वारा दिखाई देते हुए। बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बारंबार मैदान के भीतर, लेकिन अगर अब तक अगर देखा जाए तो हर एक गेंद पर अगर स्ट्राइक रोटेट होती हुई तो निश्चित तौर से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। लोअर फील्ड टॉस गेंद ऑन साइड के रीजन में इस गेंद को खेला मिड विकेट के रीजन में। जब तक फील्डर पहुंच पाते तब तक 1 रन आसानी के साथ बना इस गेंद पर और कुछ देर के बाद फिर एक बार 1 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार अगर देखा जाए तो पहली बार स्ट्राइक एंड के ऊपर थे राहुल ये बल्लेबाज, लेकिन आखिर की गेंद राहुल को भी डॉट निकले। एक बेहतरीन ओवर घटा। दूसरे ओवर में सिर्फ निकले अब तक 1 रन और एक सफलता हासिल की। लाजवाब गेंदबाजी साहिल द्वारा दूसरे ओवर में। पहले ओवर में निकले थे 12 रन, लेकिन दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन। 13 रन 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम इस मुकाबले के दौरान। 5 ओवर का ये मुकाबला आने वाले वक्त में आपको संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी, कल्पकता से बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी। हर एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के बावजूद हर एक गेंद पर अगर स्ट्राइक रोटेट हुए तो निश्चित तौर से गेंदबाज पर भी प्रेशर बढ़ेगा। 5 ओवर का ये मुकाबला सामने वाली टीम की तरफ अगर देखा जाए तो एक ताकतवर क्रिकेट टीम, उसके सामने एक अच्छा फाइटिंग टोटल खड़ा करना बेहद जरूरी है, जो कि अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम को। अब तक 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन संख्या जो कि 13 रन के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 ओवरों का खेल अभी भी जारी रहेगा मैदान पर और इस 3 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी होगी ये तो आने वाला समय तय मैदान पर करेगा। गेंदबाजी पर तीसरा ओवर लेकर अर्जुन दिखाई देते हुए स्क्रीन पर। इस बार लेट कट खेला इस गेंद को, गली के रीजन में गेंद निकली। जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन निकला। थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में देखने को मिले। 1 रन आसानी के साथ निकला, लेकिन बैकअप नहीं और उसके 2 रन निकले। बैकअप नहीं, उसके परिणाम 2 रन निकले इस गेंद पर। निश्चित तौर से थोड़ी गड़बड़ाहट दिखने को मिली, हड़बड़ाहट दिखने को मिली मैदान के भीतर फील्डर की तरफ से, लेकिन उस गेंद पर 2 रन निकले और 2 रन के तहत रन संख्या अब तक 15 रन के ऊपर। तीसरा ओवर जारी गेंदबाजी मोर्चे पर अर्जुन जो कि गेंदबाज दिखाई देते हुए। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास मिस कर बैठे, गेंद ने डंडिया उखाड़ डाली और तीसरे विकेट का हुआ पतन। विदेश जो कि मैदान के बाहर डगआउट की तरफ रवाना होते हुए। 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला जो कि सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट टीम का, और वो फैसला अब तक सही साबित होता हुआ।
न्यू बैटर मैदान के भीतर जो कि सुदेश राहुल का साथ देने के लिए। एक ओर से अगर देखा जाए तो विकेट का सिलसिला जारी रखा मैदान के भीतर अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम ने। और दूसरे ओर से अगर फील्डिंग करने वाली टीम की अगर तरफ से देखा जाए तो तारीफ कर देने वाली गेंदबाजी मैदान के भीतर सभी गेंदबाजों की तरफ से। पहला ओवर जो कि गेंदबाज विवेक ने डाला था, सफलता हासिल की। दूसरे ओवर में साहिल ने सफलता हासिल की और तीसरे ओवर में अब अर्जुन ने अपने टीम के लिए सफलता हासिल की। इस बार इस गेंद को खेला कवर के रीजन में। एक रन आसानी के साथ बना इस गेंद पर और एक रन के साथ रन संख्या जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जो कि जारी गेंदबाजी मोर्चे पर अर्जुन यह गेंदबाज दिखाई देता है जो कि सीसी बॉयज पंजाब क्रिकेट टीम की ओर से। इस बार का फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट डीप फाइनल के रीजन में गेंद निकली जो कि सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और अंपायर का इशारा जो कि 9 गेंद का यानी कि अतिरिक्त 1 रन जुड़ेगा। टोटल 5 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी जो कि 21 रन 21 रन के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। मौका रहेगा फ्री हिट का, एक बड़ा शॉट खेलने का जो कि बल्लेबाज राहुल के लिए। एक खराब गेंद देखने को मिले गेंदबाज अर्जुन द्वारा, फुल टॉस गेंद बीमर गेंद और उसका फायदा उठाया। डीप फाइनल के रीजन में एक बेहतरीन चौका निकला और अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर 21 रन। सफल होकर बड़ा शॉट स्क्वायर लेग के रीजन में 1 रन निश्चित तौर से पूरा किया जाएगा। अगर देखा जाए तो डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन इस फ्री हिट की गेंद पर और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी। 22 रन लॉस ऑफ 3 विकेट, 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, लेकिन अगर देखा जाए तो ताकत कम पड़ी इस शॉट में और एक आसान सा कैच डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने और चौथे विकेट का हुआ पतन अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम के। के नुकसान पर। एक ओर से देखा जाए तो विकेट का सिलसिला जारी रखा अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम ने, तो दूसरे ओर से राहुल जो कि अपने कदम मैदान पर जमाए रखते हुए 9 स्ट्राइक एंड पर और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज जो कि विकी मैदान के बेहतर आप लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर दिखाई देते हुए। इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद का खेल बचा हुआ है और स्ट्राइक एंड पर न्यू बैटर जो कि विकी दिखाई देते हुए। इस बार शॉर्ट गेंद हल्के हाथ से अगर देखा जाए तो इस गेंद को छोड़ दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी बाहर जाने वाले गेंद। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ एक अतिरिक्त रन जो कि खाते में जुड़ा और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी स्कोरबोर्ड के ऊपर 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास बल्लेबाज विकी द्वारा, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। आखिरी गेंद डॉट निकले, विकेट कीपर के दस्तानों में जाके रुकी और डॉट गेंद के साथ रन संख्या जो कि 3 ओवरों के बाद 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम इस मुकाबले के दौरान। आने वाले अभी भी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है। निश्चित तौर से रणनीति आपको बनानी होगी सामने वाले टीम की तरफ, क्योंकि एक ताकतवर क्रिकेट टीम उस टीम के खिलाफ एक अच्छा फाइटिंग टोटल खड़ा करना बेहद जरूरी है। अब तक अगर देखा जाए तो 4 विकेट गिरे अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम के और 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर दिखाई देते हुए। गेंदबाजी मोर्चे पर चौथा ओवर लेकर जो कि सीसी बॉयज पंजाब क्रिकेट टीम की ओर से रोहित गेंदबाजी पर। दूसरी ओर से स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि राहुल दिखाई देते हुए। निश्चित तौर से राहुल और विकी को अब मैदान पर आखिरी के गेंद पर रहना बेहद जरूरी।
23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देते हुए 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए मडगांव क्रिकेट टीम, जो कि टॉस हारने के बाद इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान सेकेंड सेशन दोपहर का 17 पहला मुकाबला दो बड़े दिग्गज टीमों के बीच में। पहले गेंद आउटसाइड लेग स्टंप काफी तेज डाले, लेकिन लाइन और लेंथ से भटके। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी। स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर गेंदबाजी मोर्चे पर अगर देखा जाए तो रोहित ये गेंदबाज दिखाई देता, और आगाज अगर देखा जाए तो वाइड गेंद के साथ किया इस ओवर का। इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डालिए, खोद कर निकालना चाहते थे, और जब तक फील्ड करते स्लिम डाउन पर तब तक 1 रन आसानी के साथ बना, और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद को सम्मान देना यह बेहद जरूरी बल्लेबाज की ओर से, और उस देखा जाए तो जड़ में गेंद डाली, खोद कर निकालने का प्रयास दिखने को मिला, लेकिन 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई। स्ट्राइक एंड के ऊपर अप लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि विकी दिखाई देते हुए। इस ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और गेंदबाज जो कि रोहित राइट हम राउंड विकेट चले। इस बार बड़ा शॉट डीप लॉन्ग अप के रीजन में, लेकिन ये शॉट उस शॉट में ताकत नहीं थी, मिस टाइमिंग शॉट कर बैठे और एक आसान सा कैच लपका। 5वीं विकेट का हुआ पतन। विकी भी लौटे जो कि डग आउट की तरफ, और रन संख्या रुकी अब तक 25 रन के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू विजय। तो न्यू बैटर मैदान के भीतर जो कि संतोष राहुल का साथ देने के लिए 5 विकेट का पतन हुआ। विकी मैदान के बाहर लौटे, एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास मिस टाइमिंग कर बैठे, और एक आसान सा कैच लपका फील्डर ने। 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद जो कि बल्लेबाज को लगे। 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ इस गेंद पर, और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 26 रन 26 रन के ऊपर। एक बड़ा टारगेट सेट करने के इरादे से मैदान पर उतरी जो कि अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम, लेकिन एक ओर से विकेट का सिलसिला जारी रखा मैदान के भीतर। अब तक 5 बल्लेबाज जो कि डगआउट की तरफ रवाना होते हुए। इस बार बेहतरीन बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग कर बैठे। 2 फील्डर कैच लेने के लिए प्रयास करते हुए, लेकिन नो मैंस लैंड में आखिरी वक्त में अगर देखा जाए जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक 2 रन निकले इस गेंद पर। विकेटों के बीच में बेहतरीन दौड़, महत्वपूर्ण 2 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी। परावर्तित हुई स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी, गेंदबाजी मोर्चे पर रोहित दिखाई देते हुए। अब तक एक सफलता इस ओवर में जो कि रोहित की इस गेंदबाजी पर। इस बार शॉर्ट गेंद सफल होकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज राहुल का, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। निश्चित तौर से अपने खुद पर नाराजी दिखाते हुए डॉट गेंद के साथ रन संख्या रुकी जो कि 28 रन के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की, चौथे ओवर के। इसके बाद अभी भी 1 ओवर आना बाकी इस पहले इनिंग का। बेहतरीन गेंद जड़ में डाली, खोद कर निकालना चाहते थे। यॉर्कर लाइन की गेंद, गेंदबाज रोहित की। आखिरी गेंद भी डॉट निकली, और डॉट गेंद के साथ रन संख्या जो कि 28 रन लॉस ऑफ 5 विकेट, 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ 4 ओवर का खेल खत्म हुआ। 5 ओवर का ये मुकाबला आने वाले अभी भी 6 गेंदों का खेल जारी रहेगा मैदान के भीतर। पहले इनिंग में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला जो कि सीसी बॉयज पंजाब क्रिकेट टीम का, और ये फैसला अब तक सही साबित हुआ, क्योंकि सामने वाली टीम को बड़े शॉट खेलने से रोक रखा गेंदबाजों ने, और सटीक लाइन और लेन के साथ बेहतरीन गेंदबाजी अब तक इस 4 ओवर में दिखने को मिले।
आखिरी ओवर लेकर स्लॉग ओवर लेकर गेंदबाजी पर जो कि प्रीतिश दिखाई देते हुए। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहले इनिंग का। निश्चित तौर से कहा गया है कि मेहनत करने वाले विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। आपको प्रयास आखिर के गेंद पर करना होगा मैदान के भीतर। बेहतरीन गेंद, हेलीकॉप्टर पर शॉट, इस बार डीप लॉन्ग अप के रीजन में, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन, फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन इस गेंद पर सिंगल मिला और सिंगल के साथ रन संख्या 29 रन, 29 रन के ऊपर 5 ओवर जो की जारी। दो बड़े शॉट निश्चित तौर से एक अच्छा फाइटिंग टोटल खड़ा करेंगे सामने वाले टीम के सामने, लेकिन वो दो बड़े शॉट किस बल्लेबाज के बल्ले से आएंगे। इस बार ऑन साइड के रीजन में, मिड विकेट स्क्वायर लेग के रीजन में इस गेंद को खेला, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ एक रन फिर एक बार इस गेंद पर मिला बल्लेबाज राहुल को, और एक रन के साथ रन संख्या 30 रन के ऊपर। फुल टॉस गेंद, ताकतवर शॉट, मिड विकेट के रीजन में, कैच का मौका, और इस बार आसान सा कैच लपका। छठे विकेट का हुआ पतन, संतोष भी लौटे डगआउट की तरफ और रन संख्या अब तक रुकी 30 रन के ऊपर 6 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। तो न्यू बैटर मैदान के भीतर स्ट्राइक एंड के ऊपर आने वाले आखिरी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहले इनिंग का। लगातार विकेटों का सिलसिला जारी, छठा विकेट गिरा जो कि संतोष मैदान के बाहर लौटे। फुल टॉस गेंद, मौका था एक बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन मिस टाइमिंग कर बैठे। मिड विकेट के रीजन में एक बेहतरीन कैच। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, अलग द कारपेट का शॉट, मिड विकेट के रीजन में, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, सिर्फ एक रन इस गेंद पर। बेहतरीन फील्डिंग मिड विकेट के रीजन से और बेहतरीन थ्रो जो कि सीधे गेंदबाज के हाथों में। एक रन के साथ रन संख्या 31 रन, 31 रन के ऊपर 6 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि ओपनिंग बल्लेबाज राहुल दिखाई देते हुए। इस बार शफल हुए, बल्लेबाज को फॉलो किया, बेहतरीन गेंद जड़ में डाली, खोद कर निकाला, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए पलटेंगे, लेकिन लाजवाब फील्डिंग। खुद गेंदबाज जो कि गेंद पर निकले, सिर्फ एक रन इस गेंद पर मिला राहुल को, और एक रन के साथ रन संख्या जो कि 32 रन के ऊपर, 32 रन के ऊपर। इस पहले इनिंग की आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज जो कि प्रीतेश दिखाई देते हुए हमारे स्क्रीन के ऊपर। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट मिड विकेट के रीजन में, और अब फिर एक बार आसानी के साथ ये कैच को लपका। 7वें विकेट का हुआ पतन, रन संख्या रुके जो कि 32 रन के ऊपर, 32 रन के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम का, और वो फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि सामने वाले क्रिकेट टीम को रोका 32 रन के ऊपर, और 33 रन का टारगेट जो कि सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम के सामने खड़ा किया, जो कि बल्लेबाजी करते हुए अमेजिंग मड़गांव क्रिकेट टीम ने। प्लीज रिपोर्ट करा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। 33 धावांचं लक्ष्य सीसी बॉयचा पंजिम क्रिकेट संघासमोर, आणि या लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल हे सांगण्यासाठी आमचे सहयोगी कमेंटेटर सागर सर हे पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडतील।
is just going to set the field. And even two openers are out in a flash. Neil and Sachin. You fade away. Sachin Bangari with the jersey number 66 and Neil with the jersey number 7. One, but there's a slight flash in between, which is unusual, which is a very rare scenario for that number 1. So can't make out whether it is 7 or 1, but this is 1. That means he You is were the a opener. shadow to my Along light. with him, Did the you boom feel boom guy. that? 66 on his back. Another Let's see star. whether he can You hit those fade sixes, away. which are been depicted as his jersey number on his back. Will be mostly at the non-striker's end. Neil will be taking the strike. Let's see who is going to be the bowler. None other than Vikram. Setting the field for himself. Meanwhile, requesting the captain of Panjim cricketers kindly comfort toss, as captain of Mathura cricketers is already out in the commentary box. So I think Vikram will deliver in the later half of the inning. So meanwhile, Mathura has won the toss and they will be fielding first. Meanwhile, Sudesh to open the bowling. Starts with a Yorker, slight fumble from Akhil, who is keeping the stumps, but no harm done. And the result is a dot ball. 33 runs required from 30 deliveries. Neil on the striking end. First delivery goes as a dot ball. Ball bounces a bit after hitting the deck. That makes the ball to go as a dot ball for the consecutive time. Power play is on, but a good power play has been favoring now for the bowler. Let's see whether he can continue with the similar fashion. Neil connects straight to the cover, chance of a run out. Slight late Sidhu to react. Otherwise, that would have been the first wicket back to the pavilion. And that single brings Sachin Bangari on to the striking end. A man known for the big sixes. Andre Russell of CC Boys. Oh my dear, what an connection. But equally well saved by Vikram. He has to run right from the long on area towards the long off. Almost 25 yards to cover the distance. What would have been a catch was missed by Vikram, but a wonderful effort. Both the openers have opened their account. Score moves to 2. Another good delivery. Ball takes the leading edge, travel towards the wide-ish gully area for another single. Score moves to 3. Some more 30 runs required. So let's see whether this is going to be the big one from the big guy, as Sachin is not going to keep quiet. Definite swing of the bat, swings the bat very hard. Ball races again towards the keeper. A lovely over concluded by Sudesh. After completion of 1, score is 3 without any loss of wicket. So definitely this is going to be a very tough call for the captain of Amazing Margao, as 4 overs remaining and 30 runs to get. Still a good deliveries from here on,
and a couple of wickets may tilt the game from CC Boys towards Amazing Margao. Babu the bowler, checking his field setup for himself as a big guy Neil on the striking end. So many things depend on this over. Couple of good deliveries will boost the morals of the fielding side, and the power hitting from these two powerhouses will make it easy for the batting team. Many things to happen out in the middle as two teams are fighting it out in the first round of the second session of day 2. And captains, not to forget, you are getting only 20 minutes to complete the quota of 5 overs. Good delivery, equally well played, straight above the bowler's head. Good fielding at the long on area. Safe fielder again, Vikram. Stops the ball from crossing the fence. Another single to bring big guy, the Thangabali of the team, Sachin Bangari on the striking end. Oh my dear. What a delivery that have been delivered by Babu. Right between the legs. Just can't understand how the ball has missed those 3 timber. Nonetheless, Sachin survives of that yorker. Change in pace as ball went much slower past the bat. Definitely another dot ball, and that is boosting the confidence of the fielding side. But let me tell you, the man on the strike, if he connects one, then definitely will finish the match. And this is the connection that was we were talking about. Sachin Bangari doing the damage. What would have been a beautiful over has been spoiled by that hammer. Sixer takes the total to 10. More 23 runs required. Now Sachin Bangari charged up. Let's see whether he can continue with that power. Another good looking strike over the covers as the ball races away. One drop across the fence. Boundary from the bat of Sachin Bangari. Score moves to 14. And the dugout is calling out one more hit. Let's see whether this is going to be one more. So far, a 6 has been hit as per his jersey number. Another connection. And that is going to be the second hit. So jersey number is complete of Sachin Bangari. 2 sixes on his back and 2 sixes from the bat. Score moves to 20. So from here on, more 13 runs required. And let's see who is going to take the pressure. It's none other than the most experienced bowler who has a big name as far as tennis ball cricket is concerned in Goa as well as out of Goa. Vikram to deliver. Nickname Vicky. Left arm over the stumps and Neil on the striking end. Immediately shifts his balance onto the back foot. Pulls the ball along the carpet. A couple of bounces across the fence. Score moves to 24. So now here we go with the second delivery. Again swings the bat very hard. Chance of a run out. Shakil fumbles. Slips onto his way towards the ball. That allows Sachin to make his ground quite comfortably. Meanwhile, the search party has brought the match ball inside the ground and the ball has been marching towards the keeper. So match ball will be taken. That single takes the total to 25. 8 more runs required. Wanted to cut the ball. No connection. Leaves the ball straight to the keeper.
And now I understood the jersey numbers properly. 260 from Sachin Bangari. After that, Neil has strike a boundary. So 2 6s and then a boundary, then single. Another beautiful strike straight down the ground. Ball racing towards the long on area. Meanwhile, a single. That single brings Neil on the striking end. So far, Sachin has taken a single. Let's see. Reply of Neil. Neil strikes the ball. So that is a perfect example. A single and a boundary, playing safely in those which are the vacant areas, sending the ball in those vacancies on the ground. That boundary takes the total to 30. Just 3 runs required. Pulls the ball again in the similar way. And that concludes the match. Congratulations, Sissy boys. You have entered the pre-quarters of the evening session. Next match is going to be played between Mathura Cricketers and Panjim Cricketers. Captain of Mathura Cricketers have won the toss and they have decided to field first. So meanwhile, let's see who is going to be the man of the match, as there are many good performances with the ball as well as with the bat. And will be giving away the man of the match. Man of the match is a very easy choice. And Sahil, who has delivered over, has given only 1 run and taken a wicket. That was a crucial point of the match as per the statistician. So man of the match, Sahil, will be receiving the trophy from Ramesh Naidu at the presentation area. Meanwhile, next match is going to be played between Mathura Cricketers versus Panjim Cricketers. Mathura Cricketers, after winning toss, have decided to bowl first. So meanwhile, we can see the players of Mathura Cricketers already onto the field. And captains, kindly note,
You will be awarded only 20 minutes to complete the quota of 5 overs. And the incoming batsman will have to come at the crease within 90 seconds. Meanwhile, would like to welcome Imtaz Sheikh, partner as the officials. So it's my duty to welcome him on this ground as we are the partners as the officials in most of the tournaments. So meanwhile, here we go with this second match of the afternoon session. After winning toss, Mathura cricketers have decided to bowl first. Rudresh to bowl the first over. Suraj and Dinesh, two openers out in the middle. Suraj on the striking end. Opening pair of Panjim cricketers will be facing Rudresh, a youngster from Mathura cricketers. First delivery, there's a wonderful strike. Fielder in act. Looks to be a slight misfield maybe. Swapnesh had a chance. Has saved 4 runs for his side. Meanwhile, 2 runs on the board. Short pitch delivery, look at the connection. Fielder has been placed, but ball goes in the gap between a cow corner and the long on, and that's a boundary from the bat of Suraj. Score moves to 6. Swing of arm by the umpire across, signifying 4 runs to be added to the total. So one team from the afternoon session will be the 4th semi-finalist in this tournament. Another short pitch delivery, equally well played, cuts the ball between the gap of Gully and the point. 2 fielders running, stops the ball. Meanwhile, another couple of runs to take the total to furthermore to 8 runs on the board. Early wickets will be the need for Mathura cricketers. Most of the youngsters are playing in that squad. Another good delivery, cuts the ball again between the gap of a third man, another Gully. And the ball finally races across the fence. Boundary taking the total to 12. Still power play over is on, and now the actual power play has come after a very long time in this tournament, as we have seen a power hitting in the morning session. Now total moves to 12. Still the 6s are dried up. 2 boundaries and a couple of runs for the second time. Plays watchfully towards the cover. What is the call? Chance over and out. Oh my dear, direct hit would have sent Suraj back to the pavilion. Meanwhile, slight fumble, but equally well backed up by Swapnesh. A single takes the total to 13. If the fielder has to throw at the bowler, then definitely it would have been interesting at the non-striker's end. This is where you have to apply your mind while playing. Another good delivery considered by Rudresh to complete the first over, that is the power play over. After completion of 1, score is 13 without any loss of wicket. So second over will be bowled by captain himself, jersey number 1 on his back. Keeping KL Rahul as role model in front right now with the ball in his hand. Ashwin setting field for himself as the power play over is completed.
5 fielders have been kept outside the 30-yard circle. Suraj on the striking end. Lovely delivery, equally well played. Ball has been hit straight to the fielder at the long on. Ashwin strikes on the very first delivery. Suraj back to the pavilion. So new man in is Sunil at the striker's end. Another good delivery, equally well played. Chance of a run out. Slight fumble from the fielder. That allows both the batsmen to take a single. And that single brings Dinesh on the striking end. So good all-rounder cricket happening out in the middle. The team Mathura cricketers are all the way from Kucharam. But a rare occasion where regular Kucharam municipality players are not as seen on the ground. And the sole reason will be these players are not getting chance in the senior team. That's why juniors have clubbed together and made the team, and they are playing in on this very ground. So promising youngsters. Meanwhile, Ashwin leading the side, leading with an example. Another dot ball delivered. Good delivery, oh my dear. Second wicket for Ashwin as the ball takes the leading edge, rolls onto the stumps. Good bowling continues. Juniors making an impact, playing for the very first time together in the big format. And what a way to start their career, their future on this very ground. Second wicket back to the pavilion. So the legendary players are playing for Panjim cricketers. Dinesh Amrute back to the pavilion as a youngster, young blood has striked, and now that brings another shrewd all-rounder of his time, still rocking hard. Dinesh Naik on to the striking end, nicknamed Dinya. Good ball, lovely delivery to deceive Dinesh. Ball travels safely to the keeper. It's a wonderful opportunity for these youngsters to make a statement as these matches are live courtesy AB25 on YouTube. And the sound is made possible by Audio 22. Meanwhile, another chance of catch. Similar fielder not able to stop. Lovely fielding at the boundary rope by the fielder from the car corner area. Aniket stops the ball from crossing the fence. Meanwhile, couple of runs. And with that, that concludes over number 2. So after completion of 2, very disciplined bowling takes the total to 16 for the loss of 2 wickets. So now the third over will be delivered by
Somesh Priolkar, another youngster, right arm over the stumps. Short pitch delivery, change in pace on the very first delivery he has delivered in this tournament. Will definitely create a hint of doubt in the mind of batsmen as of what is going to come next. Very shrewd bowler, has won best bowler in a recently concluded Kucharam Premier League, where Australian players also have played in the tournament. And this guy was a best bowler in that tournament. So continuing the similar form, right arm over the stumps. Lovely delivery, second dot ball, pacer, pacey delivery delivered by Somesh, playing with the mind of the batsman, mixing up his strategies, mixing up his deliveries. Sunil not able to understand what is going to come. Another good delivery, change in pace, slight fumble from the keeper that will allow both the batsmen to rotate the strike in form of a bye. And with that bye takes the total to 17. So far, 3 deliveries and a single run has come in form of extra. So now Dinesh Naik on the striking end, and Dinesh Naik is not going to keep quiet. Wanted to flick the ball towards the square leg area, no connection. Leaves the ball to travel safely to the keeper. Meanwhile, wide is the signal from the umpire. That extra takes the total furthermore to 18. On to the back foot, pulls the ball. There is a fielder in act, Aniket Rivonkar at the mid-wicket area, gathers the ball comfortably, throws it back to the keeper. A single takes the total furthermore to 19. So far, a decent line and length continues. Another change in pace. That's the trick done by Somesh as well. Timber has been shaken. Third wicket back to the pavilion. So now the incoming batsman for Panjim cricketers is Augustine. And a chance for Augustine to take Somesh for a troll. Let's see whether he has enough capacity and enough power to get the ball from right, from the middle of the bat. Or Somesh, shrewd bowler, continues the decent line and length. A lovely delivery, equally played well with respect. Those good deliveries are to be respected. That is the basics of cricket. Augustine doing the basic right. Takes a single. That concludes over number 3 after completion of 320 for the loss of 3 wickets. And now over to Sumit, my fellow partner in the commentary box. Will be giving updates for the next 2 overs. चौथा ओवर लेकर मथुरा क्रिकेट टीम की ओर से वतन नाइक दिखाई देते हुए गेंदबाजी मोर्चे पर, और सामने जो कि नया बल्लेबाज इस बार बेहतरीन गेंद, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, तेज तरार गेंद जड़ में डाली, खुद कल निकालना चाहते थे लेकिन जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन तेजी के साथ पूरा किया और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़े, परावर्तित हुई स्कोर बोर्ड के ऊपर 21 रन 21 रन के ऊपर।
स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज जो कि दिनेश, इस बार बेहतरीन गेंद, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी। फिर एक बार डॉट गेंद निकले और डॉट गेंद के साथ रन संख्या जो कि 21 रन के ऊपर, 21 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार बेहतरीन तेज तरार गेंद सिजा के अगर देखी जाए तो पैड के ऊपर लगी लेग बाय का इशारा हमारे कमेंट्री बॉक्स में अंपायर की ओर से, और लेग बाय के तहत अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला जो कि मथुरा क्रिकेटर्स ने लिया और बल्लेबाजी करते हुए जो कि पंजिम क्रिकेटर्स टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। इस बार बेहतरीन शॉट मिड विकेट के रीजन में, गेंद निकली आसमान को छूती न छूती 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। तो एक बेहतरीन छक्का जो कि ऑगस्टन के बल्ले से निकला मिड विकेट के ऊपर से, और 6 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित हुई 28 रन के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा शॉट निश्चित तौर से राहत की सांस दिलाएगा पंजिम क्रिकेटर्स टीम को, क्योंकि रन संख्या 28 के ऊपर। एक बार अगर देखा जाए तो खराब गेंद, बीमार गेंद, स्पेलर के रीजन में इस गेंद को खेला, 1 रन तो तेजी के साथ पूरा किया, लेकिन फ्री हिट का मौका बल्लेबाज दिनेश के लिए रहेगा। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे बढ़े 30 रन के ऊपर। टोटल इस गेंद पर मिले 2 रन, और 2 रन के साथ रन संख्या 30 रन के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। 30 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, चौथे ओवर का खेल जारी, और फ्री हिट का मौका स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज दिनेश के लिए। शॉर्ट गेंद, हुक्का शॉट डीप फाइल लेग के रीजन में, बेहतरीन इस बार एफर्ट दिखने को मिला फील्डर की ओर से। निश्चित तौर से महत्वपूर्ण 5 रन बचाइए। एक बेहतरीन शॉट बल्लेबाज दिनेश के बल्ले से निकला जो कि फाइल लेग के रीजन में, लेकिन 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी स्कोरबोर्ड के ऊपर जो कि 31 रन के ऊपर। महत्वपूर्ण 5 रन रोके बेहतरीन एफर्ट जो कि फील्डर के द्वारा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर के द्वारा देखने को मिला। इस बार फ्लिक किया स्क्वायर लेग के रीजन में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, जब तक फील्ड किया जाता गेंद को तब तक 1 रन निकला जो कि ऑगस्टन के बल्ले से, और 1 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी। 4 ओवर का खेल इसी के साथ समाप्त हुआ। रन संख्या 32 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 32 रन के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंदों का खेल अभी भी जारी रहेगा इस पहले इनिंग का, और 6 गेंदों में कितने रन जोड़े जाएंगे इन 2 बल्लेबाजों के तरफ से। थैंक यू डीजे। तो आखिरी ओवर लेकर नया गेंदबाज जो कि गेंदबाजी मोर्चे पर स्लॉग का ओवर है यहाँ पर। निश्चित तौर से स्लॉग ओवर में बड़े शॉट देखने को मिलेंगे जो कि ऑगस्टन के बल्ले से और उन्हीं के साथ दिनेश के बल्ले से। अब तक 32 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 32 रन, 5 ओवर जो कि जारी मैदान पर। पहले गेंद आगे बढ़कर इस गेंद को खेला जो कि कवर के रीजन में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे के लिए पलटे, जब तक फील्डर पहुंच पाते फील्ड करते तब तक 2 रन तेजी के साथ पूरे किए। बेहतरीन दौड़ विकेटों के बीच में, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और महत्वपूर्ण 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 34 रन, 34 रन के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी स्पेल, आखिरी ओवर जो कि स्लॉग ओवर वैभव गेंदबाजी मोर्चे पर दिखाई देते हुए, और स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि ऑगस्टन ये बल्लेबाज दिखाई देता हुआ। इस बार शॉर्ट गेंद, अतिरिक्त उछाल, बाउंस दिखने को मिला। अंपायर का इशारा है, यस इट इज वाइट।
अतिरिक्त रन फिर एक बार जुड़ा खाते में और अतिरिक्त रन के साथ रण संख्या 35 रन के ऊपर 35 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। निश्चित तौर से बोनस स्वरूप में 1 रन दिया जो कि बल्लेबाजी करने वाले पंजाब क्रिकेट टीम को गेंदबाज की तरफ से। इस बार आगे बढ़े बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद निकली जो कि शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में। जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन तेजी के साथ पूरा किया जो कि दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 रन के साथ रण संख्या जो कि आगे बढ़े अब तक 36 रन। आखिरी ओवर जारी है गेंदबाजी मोर्चे पर, वैभव जो कि दिखाई देते हुए अब तक 2 गेंद का खेल करते हुआ रण संख्या 36 रन। निश्चित तौर से 2 बड़े शॉट एक अच्छा फाइटिंग टोटल खड़ा करेगा। इस बार शॉट गेंद, शॉर्ट टर्म पुल का शॉट लेकिन मिस टाइम कर बैठे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच का दिनेश की पारी हुई समाप्त। चौथे विकेट का हुआ पतन। रण संख्या अगर देखी जाए 36 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। थैंक यू डीजे। तो न्यू बैटर मैदान के भीतर अब स्ट्राइक एंड के ऊपर अमय दिखाई देते हुए। इस बार शॉर्ट गेंद, फिर एक बार इस गेंद को हुक किया जो कि डीप फाइल के रीजन में। निश्चित तौर से हड़बड़ाहट दिखने को मिली फील्डर की तरफ से और गेंद निकली जो कि बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। आते आते चौका निकला बल्लेबाज अमय के बल्ले से। निश्चित तौर से महत्वपूर्ण यह चौका खाते में जुड़ा और चौके के साथ रण संख्या 40 रन के ऊपर। आखिरी ओवर जारी है, अभी भी 2 गेंद का खेल बचा हुआ है इस ओवर में और लगभग अच्छा फाइटिंग टोटल जो कि खड़ा करते हुए पंजाब क्रिकेट टीम सामने वाले मथुरा क्रिकेटर्स के भी सामने। इस बार बेहतरीन फ्लिक का शॉट, नजाकत भरा डीप फाइन लेग के रीजन में, गेंद निकली वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। थैंक यू डीजे। एक नजाकत भरा शॉट बल्लेबाज अमय के बल्ले से। लगातार की 2 गेंदों पर 2 चौके और रन संख्या अब देखी जाए तो 44 रन के ऊपर। एक अच्छा फाइटिंग टोटल की तरफ पर रुख मोड़ते हुए जो कि पंजाब क्रिकेटर टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान इस ओवर की आखिरी गेंद, इसी रंग की आखिरी गेंद लेकर जो कि इस गेंद को छोड़ दिया। देखा जाए तो आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद पिच की थी। आखिरी गेंद डॉट निकली बल्लेबाज अमय को। इसी के साथ 5 ओवर का खेल खत्म हुआ। रण संख्या 44 रन के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि पंजाब क्रिकेट टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान टॉस जीता था मथुरा क्रिकेटर्स ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। बेहतरीन गेंदबाजी शुरुआती दौर में देखने को मिली लेकिन आखिर के वक्त में अगर देखा जाए तो बल्लेबाज हावी हुए गेंदबाज पर और अब तक 5 ओवर में 44 रन, 45 रन का टारगेट मथुरा क्रिकेटर्स के सामने। 45 रन का पीछा किस तरह से किया जाएगा ये बताने के लिए फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर सागर सर। Thank you, DJ. Meanwhile, inviting captain of CC Boys and Satya Devi Kedar Naibag, captain, kindly come for toss. Captain of Satya Devi Kedar Naibag and captain of CC Boys, kindly come for toss. And
number of Virender Sehwag on the scoreboard. And jersey number 45 is the youngster Rohit Sharma for the youngsters to chase. So let's see whether it is going to be the legends or the youngsters that are going to put their hands into the second round. Has counted. First wicket back to the pavilion in form of run out. So Mathura cricketers are yet to open the account. Amit Sayed, the new man in, tall guy, at the non-striker's end as a run out was at the fall of first wicket. Ashwin on the striking end. Meanwhile, here we are taking the toss of this. Oh my dear, there was a definite chance missed by the fielder at the mid-on. Was otherwise, second wicket would have been back to the pavilion. So meanwhile, requesting the captain of CC boys kindly come for toss. So toss is going to be happen between Satya Devi, Kedar Naibag versus CC boys for the pre-quarters match. And here
team total moves to 4. So exactly 41 runs required. Augustine doing the proper field placement as the catch has been dropped. So want the proper better fielders at the right position. Here we go with the next delivery. Slightly outside the off stump, Ashwin leaves the ball to travel safely to the keeper. Wide is the signal. With that, total moves to 5. So meanwhile, toss has won by Satya Devi, Kedar Naibag, and immediately they have decided to field first. Another good delivery, equally well played, but straight to the middle fielder who is closing in to stop that single. So dot ball. Score is still at 5. Another good delivery, equally well played. Even the fielder has been plotted towards the long on area, none other than the legendary Dinesh Naik fields the ball. So after the completion of first over, score moves to 6 for the loss of 1 wicket. And now Dinesh Naik with the ball in his hand. The most experienced bowler, still rocking hard in the world of cricket. Here we go, right arm over the stumps. Good delivery, equally well played along the carpet towards the cow corner area for a single. So single takes the total to 7. And that brings Amit Syed at the striker's end. Again a good strike along the carpet towards the cow corner area. Well fielded there by the fielder at the deep. Another single. And the single takes the total to 8. So slow and steady this match is happening as the target is of 45 runs. But now team total is at 8. Another good delivery. There's a wonderful strike. Fielder has been act. And a wicket for Dinesh Naik. Second wicket. Captain departs in the hunt of a sixer. Not getting the power. Second wicket back to the pavilion. So now the new man in is experienced player as far as Mathura cricket is concerned. Swapnesh Naik onto the striking end. And he will be facing Dinesh Naik with the ball. Good delivery, wonderful strike as the ball has traveled the distance. This is the
strength of Swapnesh Naik. Hits a beautiful six, and that sixer takes the team total to 14. So meanwhile, Swapnesh on the striking end, Dinesh to deliver the next. Another good delivery. There's a speed connection. Fielder under the ball. Only jumps to see the ball sailing past. Consecutive sixes from the bat of Swapnesh. And that takes the total to 20. So exactly 25 runs required from here on. More 3 overs to be bowled after this over. Still a second over continues. Let's see what is going to come next. A middle-aged player facing the legend strikes the 2 sixes. Let's see what is going to come next. Change in pace, and that deceives Swapnesh. So that concludes over number 2. After completion of 2 overs, score is 20 for the loss of 2 wickets. And for the further updates, over to Sumit, my co-commentator. Welcome, Sumit, with the microphone. यावेळी मात्र खराब चेंडू, कारण उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर जाणारा चेंडू, पंचाचा इशारा, स्प्रे चेंडूचा एक अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक पाहिले गेले तर 21 या आकड्यावरती 21 रन या स्कोर बोर्डवरती पाहायला मिळत आहेत. चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी यावेळेस पाहायला मिळाले गोलंदाजाकडून. थोडंसं शप्पलून फटका खेळायचा प्रयत्न, पुढे सरसावून फटका खेळायचा प्रयत्न, परंतु हा प्रयत्न काहीसा अपुरा ठरलाय. गोलंदाज मार्कवर अमय हा गोलंदाज पाहायला मिळतो तिसरं षटक हाताळण्यासाठी. फुल टॉस चेंडू, ताकदवर फटका ऑन साइडला काव कॉर्नरच्या दिशेमध्ये. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, फक्त एकच धाव या चेंडूवरती. एक ताकदवर फटका होता, परंतु पाहिलं गेलं तर डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, प्रोटेक्शन तैनात, फक्त एकच धाव निघाली या चेंडूवरती. आणि 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक हे 22 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचतंय. फुल टॉस चेंडू, संधी होती फलंदाजाला एक आक्रमक फटका खेळण्याची, परंतु संधी काहीशी गमावली गेली फलंदाजाकडून. आणि मात्र पुन्हा एकदा पाहिलं गेलं तर निर्धाव चेंडूची समाप्ती ही आमच्या गुणतालिकेत नोंदवली गेली आणि त्या निर्धाव चेंडूने सांघिक धावफलक स्थिरावले गेले. 45 धावांचा पाठलाग करतोय मथुरा क्रिकेटर्स संघ या महत्वपूर्ण लढती दरम्यान. चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी, लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू, शप्पलून फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा प्रवास गलीच्या दिशेने, बाईटच्या स्वरूपात ही एक धाव मात्र आमच्या गुणतालिकेत ऍड केली गेली. आणि 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक हे परावर्तित झाले धावफलकावरती आतापर्यंत 23 रन, 23 धावा, 45 धावांचा पाठलाग करत असताना. फुल टॉस चेंडू, बॅक टू द बॉलर, फटका डीप लॉंग, आपला क्षेत्ररक्षक तैनात. आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक होईल तोपर्यंत एकच धाव पुन्हा एकदा या चेंडूवरती. फुल टॉस चेंडू, संधी होती कोणत्याही क्षेत्रात या फटक्याला खेळण्याची, परंतु क्षेत्र निवडलं डीप लॉंग ऑफचं, परंतु त्या चेंडूवरती एकच धाव निघाली. आणि 1 या धावसंख्येने आतापर्यंत धावफलक 24 रन, 24 धावा या धावफलकावरती. 45 धावांचा पाठलाग, परंतु संघर्ष करत असताना आपण पाहू शकतो मैदानात मथुरा क्रिकेटर्स संघ. एका बाजूने अमित हा फलंदाज, दुसऱ्या बाजूने स्वप्नेश हा फलंदाज पाहायला मिळतोय मैदानात. यावेळी रिव्हर्सिपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न स्वप्नेशाचा, परंतु हा प्रयत्न काहीसा असफल ठरतोय, निरर्थक ठरतोय. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावफलक आतापर्यंत 24 या आकड्यावरती. येणाऱ्या 12 चेंडूंचा खेळ मैदानात बाकी राहिलाय आणि 12 चेंडूवरती अजूनही विजयासाठी 21 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल अँड 21 रन टू विन. 21 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या 12 चेंडूवरती. महत्वपूर्ण सामना दोन्ही क्रिकेट संघासाठी. कोणता क्रिकेट संघ हा अंतिम
क्षणी विजय संपादन करेल, विजयाची सलामी देईल, ही मात्र येणारी वेळ येणाऱ्या क्रिकेट मैदानात ठरवेल. परंतु आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर 45 धावांचा पाठलाग करत असताना भेदक मारा मैदानात पाहायला मिळतो तो पंजीम क्रिकेटर संघाकडून. प्रथमतः फलंदाजी केली, 44 धावा धावपलकावरती जोडल्या, 45 धावा डिफेंड करत असताना आतापर्यंत अप्रतिम गोलंदाजी ही पंजीम क्रिकेट संघाकडून पाहायला मिळते. परंतु दुसऱ्या बाजूने जर पाहिलं गेलं तर अमित आणि स्वप्नेशी आक्रमक जोडी नक्कीच शेवटच्या षटकापर्यंत जर मैदानात राहिली तर या 45 धावांचा पाठलाग देखील सहजरित्या करू शकते. गोलंदाजी मार्गवरती चौथं षटक घेऊन मनोहर हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप, चेंडू बराचसा बाहेर वळण घेणारा पंचांचा इशारा. स्पेअर चेंडूचा क्रिकेटच्या परिभाषेत ज्या चेंडूला पंजाब टू हरियाणा असं संबोधलं गेलं, काशी टू वाशी असं संबोधलं गेलं, तो अतिरिक्त धावा खर्च करणारा चेंडू गोलंदाजचा मनोहर याचा मैत्र पाहायला मिळतोय. लेफ्ट हँडर गोलंदाजचा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो आमच्या स्क्रीनवरती पाहायला मिळेल. मिस टायमिंग फटका, चेंडू बराच वेळ हवेत, संधी असेल झेल घेण्याची, विकेट किपर मात्र काहीशी चूक करतो. एक साधं सोपं झेल होतं परंतु हे झेल सोडलं गेलं. जीवनदान मिळालं फलंदाज अमित याला आणि मात्र पाहिलं गेलं तर काहीशी चूक ही विकेट किपरची मैदानात पाहायला मिळते. सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येने 26 या धावसंख्येवरती 26 रन या स्कोर बोर्डवरती चौथं षटक हे प्रगतीपथावर असताना 45 धावांचा पाठलाग, परंतु मिळालेल्या संधीचं सोनं करणं खूप महत्वाचं असतं. संधी मिळाली फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाज अमित याला एक जीवनदान प्राप्त झाले, परंतु या जीवनदानाचा फायदा कशा प्रकारे येणाऱ्या काळात उठवला जाईल. परंतु दुसऱ्या बाजूने जर पाहिलं गेलं तर मैदानात झेल सुटलं गेलं आणि प्रत्येक वेळी म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये कॅचेस विन दिस मॅचेस विन, परंतु यावेळी झेल सुटल्यानंतर कशा प्रकारची रणनीती असेल हे दोन्ही फलंदाजांसाठी हे येणारी वेळ आणि येणाऱ्या क्रिकेट मैदानात ठरवेल. गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट हँडर गोलंदाज मनोहर सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, शॉर्ट चेंडू, शॉर्ट आर्म पुलचा एक बहारदार फटका डीप लेगच्या डोक्यावरून, चेंडू सरळ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आणि 6 धावांसाठी निघतोय. बेंगळुरूचे 32 रन स्कोर बोर्डवरती लॉस ऑफ 2 विकेट. 32 धावा 2 गडी बाद झाल्यानंतर 45 धावांचा पाठलाग करत असताना पुन्हा एकदा शपलून फटका खेळण्याचा, अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न हा फलंदाजचा स्वप्नेशाचा, परंतु हा प्रयत्न कसा यावेळेस अपुरा ठरतोय. एक वेगवान गतीचा चेंडू गोलंदाजचा मनोहर याचा पाहायला मिळतोय आणि बऱ्याच वेळानंतर एक निर्धाव चेंडू हा आमच्या गुणतालिकेत मात्र नोंदवला जातोय. शॉर्ट चेंडू पुन्हा एकदा बॅक पुढे येऊन फटका खेळला जातो. डेप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केली जाईल, कारण डेप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, फेकी देखील सुंदर पद्धतीने पाहायला मिळाले विकेट किपरकडे आणि 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 33 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 33 धावा 2 गडी बाद होत असताना अजूनही विजयासाठी 12 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा मिस टायमिंग फटका, झेल घेण्याची संधी, परंतु यावेळी सुद्धा देखील पाहायला गेलं तर नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू विसावतोय. पुन्हा एकदा जीवनदान फलंदाज अमित याला मिळतंय आणि 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक हे 34 रन स्कोर बोर्ड वरती. 34 धावा धावफलकावरती. नेहमीच म्हटलं जातं की किस्मत भी बहादुर का साथ देते आणि आज मात्र नशीब पाहायला गेलं तर अमित याचं पाहायला मिळतंय मैदानात. सलगची 2 झेल सुटली गेली. येणाऱ्या काळात या जीवनदानाचा फायदा कशा प्रकारे उठवला जाईल, कारण अजूनही विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता. 34 रन स्कोर बोर्ड वरती. यावेळेस ओव्हर पिच चेंडू, मोठा फटका, लॉफ्टेड फटका, मिड विकेटच्या वरून चेंडू सरळ स्टँड ऑन डिलिव्हर, 6 धावांसाठी निघतोय. बेंगळुरूचे 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. धावफलक प्रति षटक 10च्या सरासरीने आतापर्यंत मैदानात पाहायला मिळते ते 40 धावा धावफलकावरती.
येणाऱ्या 6 चेंडूंचा खेळ मैदानात बाकी राहिला आणि विजयासाठी अजूनही 5 धावांची आवश्यकता मथुरा क्रिकेटर्स संघाला. 6 बॉल अँड 5 रन्स टू विन. या सामन्याचं समीकरण पाहिलं तर 6 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर शेवटचं स्लॉक षटक घेऊन सुनील हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. तर स्ट्रायकिंग एंडवरती पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी अमित हा फलंदाज सज्ज होईल. 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. एक रोमहर्षक सामना दोन दिग्गज संघादरम्यान आपण पाहतोय. शॉर्ट चेंडू बॅक पुढे जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न अमित याचा, परंतु हा प्रयत्न काहीसा अपुरा ठरतोय. पहिला चेंडू धावफलकावरती निर्धाव. आता समीकरण थोडस बदललं गेले. 5 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवणारा सामना मैदानात रंगतो की कोणता क्रिकेट संघ हा विजयी ठरेल. येणारी वेळ येणाऱ्या काळ मैदानात ठरवेल, कारण 5 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र पाहिलं गेलं तर स्पेअर चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर जाणारा चेंडू. पंचाचा इशारा वाईटचा येतो आणि अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक 41 या धावसंख्येवरती. आता मात्र समीकरण बदलतंय. येणाऱ्या 5 चेंडूवरती 4 धावांची आवश्यकता. 41 रन स्कोर बोर्डवरती. 41 धावा 45 धावांचा पाठलाग करत असताना लोअर फुल टॉस चेंडू सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु निर्धाव चेंडूची समाप्ती. प्रत्येक चेंडूवरती काहीसं मात्र क्षणिक चित्र बदलवणारे क्रिकेट आपण मैदानात पाहतोय, कारण येणाऱ्या 4 चेंडूवरती विजयासाठी 4 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडवरचा फलंदाज ज्याला 2 जीवनदानं भेटली तो अमित स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय. एक मोठा फटका या सामन्यात विजय संपादन करेल मथुरा क्रिकेटर्स, परंतु एक सफलता नक्कीच पुन्हा एकदा रोमहर्षकता वाढवेल. शॉर्ट चेंडू ऑन साइडला फटका खेळला जातोय. डीप लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. पहिली धाव वेगात गतीने पूर्ण केली गेली, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण. फक्त एकच धाव या चेंडूवरती आणि 1 या धावसंख्येने सागिक धावफलक. 42 रन 42 धाव या धावफलकावर. 3 बॉल्स अँड 3 रन्स टू विन. 3 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता या सामन्यात. स्ट्रायकिंग एंड वरती विस्फोटक आक्रमक घडाघाती फलंदाज स्वप्नेश पाहायला मिळतोय. सुंदर अप्रतिम चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू अक्षरशः खोदून काढण्याचा प्रयत्न झालाय आणि गोलंदाजाचं जे ब्रह्मास्त्र संबोधलं जातं ते ऐन मोक्याच्या शेडी त्या ब्रह्मास्त्राचा वापर केला जातो. यॉर्कर चेंडू अप्रतिम चेंडू. आता मात्र येणाऱ्या 2 चेंडूवरती 3 धावांची आवश्यकता. 2 बॉल्स अँड 3 रन्स टू विन. एक रोमहर्षक सामना, प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवणारा सामना मैदानात रंगतोय. दोन दिग्गज संघ पाहिले गेले तर 45 धावांचा पाठलाग आणि आतापर्यंत 42 धावा. शॉर्ट चेंडू शॉर्ट अँपुलचा फटका, काहीसा फटका पोचतोय. झेल घेण्याची संधी. डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर आणि फलंदाज स्वप्नेश यावेळेस बॅक टू द पवेलियन. थँक्यू डीजे. न्यू बॅटर संजीत स्ट्रायकिंग एंड वरती. 1 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. लास्ट बॉल 3 रन्स टू विन. शेवटचा चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. रोमहर्षक सामना. 6 चेंडू आणि 6 धावा 5 धावांची आवश्यकता होती आणि त्यावेळी जर पाहिलं गेलं तर अप्रतिम गोलंदाजी
अंतिम क्षणी सुनील याच्याकडून पाहायला मिळाले. आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर फक्त 4 धावा खर्च 2 धावा खर्च होत आहेत या षटकादरम्यान आणि एक सफलता देखील प्राप्त केली. फलंदाज स्वप्नेश याला मात्र बाद करत असताना एक चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. लास्ट 1 बॉल अँड 3 रन्स टू विन. लास्ट 1 बॉल अँड 3 रन टू विन. शेवटचा अंतिम चेंडू. कोणत्या क्रिकेट संघाचं नशीब घडवेल या सामन्यादरम्यान, कारण एक चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. कोणता क्रिकेट संघ हा विजयाचा शिक्कामोर्तब करेल. यावेळी मात्र आडव्या बॅटने फटका. मिड विकेटला झेल घेण्याची संधी, परंतु यावेळी संधी गमावली गेली. 2 धावा पूर्ण झाल्या. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु सामना टाय होतोय. सामना टाय होतोय. 44 धावा धावपलकावर. एका चेंडूवरती 3 धावांची आवश्यकता, परंतु अंतिम क्षणी 2 धावा निघाल्यात आणि तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद होतोय. या सामन्याचा निकाल सुपर ओव्हर मध्ये खेळवण्यात येईल. सामना टाय होतोय, त्यामुळे सुपर ओव्हर होईल या दोन्ही संघादरम्यान आणि त्यामध्ये ठरेल कोणता क्रिकेट संघ हा विजय संघ असेल. एक रोमहर्षक लढत. प्रत्येक प्रेक्षकांची नजर या सामन्यावरती होते. अंतिम चेंडूवरती 3 धावांची आवश्यकता. झेल उडालं, परंतु झेल सुटलं गेलं. त्यानंतर 2 धावा निघाल्या. तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न झाला फलंदाजाकडून, परंतु तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद झालाय आणि मात्र क्षणिक चित्र बदलवणारे क्रिकेट मैदान पुन्हा एकदा आपण पाहिलं, कारण 2 धावा निघत असताना सामना सुपर ओव्हर मध्ये निघताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपल्या सोबत जोडले जातील इंग्लिशचा बुलंद आवाज आमचे सहयोगी समालोचक, सहयोगी कॉमेंटेटर सागर सर. What a crucial situation. 5 runs were required from 6 deliveries and it has turned out to be a tie. So this is the beauty of cricket, and the legends, the experienced players, they have done it. If the catch would have taken, then definitely there would have been curtains for the youngsters. Right now, both the teams have scored Virender Sehwag at the end. And the match is tied on a score of 44. Super over. Mathura cricketers to bat first. Sunil, the mystery bowler, will continue in the super over. Here we go with the first delivery of the super over. Swapnesh on the striking end. Uttam at the non-striker's end. First delivery ball out goes towards the square leg area. Chance of a second. A slight fumble, and definitely it is going to be 2 runs. So Mathura cricketers open the account with couple of runs in the super over. Let's see what will be the total at the end of the first super over. That's a wonderful delivery straight into the block hole, slightly outside the off stump. No clue for Swapnesh as a ball travels quickly to the keeper. Equally well kept behind the stumps by Amey. Otherwise, definitely the ball would have raced towards the boundary.
So 2 deliveries, a sixer in the super over, team total moves to 8. So lovely tracks played by DJ to entertain the crowd. And the sound travels courtesy Audio 22. So meanwhile, 8 runs on the board. Low full toss, not getting the proper treatment. Meanwhile, ball racing towards the mid-wicket area. Similar fielder fields the ball, a single to bring Uttam on the striking end. Score moves to 9. Final 2 deliveries of the super over. Can Uttam connect at least a biggie? 8 is the jersey number of him. Can he score 8 runs for his side? The time will tell us. Swings the bat very hard. Swapnesh wants this strike. Dot delivery. Nine runs on the board. Lovely bowling by Sunil. Another good delivery. There's a appeal. And what a way to finish. Swapnesh would have taken the strike on the 5th delivery, but he retains the non-striker's end. 9 runs, 10 runs to win for Panjim cricketers. Let's see who are going to be the 2 openers. And the 3rd player for Panjim has only 3 batsmen can bat. And a fall of 2 wickets will conclude the match. So depends on who is going to bowl this super over. Many things are going to happen. Meanwhile, DJ is going to entertain the crowd. Suraj and Agustin. Suraj at the striker's end. Let's see whether he can make up for that drop catch. If he had to receive that catch, then definitely this super over wouldn't have been happened. So he has a job to do. And meanwhile, the shrewd bowler Somesh with the ball. The mystery bowler mixes up his deliveries on regular interval. So this will be a good contest. A challenge is on for Suraj. So here we go with the super over. 10 runs to win. First delivery, better connection. And that is the big 6. Now again the similar situation.
5 legal deliveries, 4 runs to get. Dot balls will put pressure. First dot delivery, meanwhile a single has been taken. And that's a leg by is a signal from the umpire. 4 deliveries, 3 runs to get. Still the field is spread out. Definitely. Let's see what will be the strategies from here on. Only 3 runs required. Well played for a single. And this is where Agustin is very shrewd. If that field is spread, guides the ball to take a single. Wonderful cricket from Agustin. Still, the youngsters are spread out, giving a chance for a single. This is where you have to apply your mind. 2 runs required from 3 deliveries. Another chance of a catch. Ball has been played away from the fielder. They are running for the second. Throw at the wrong end. Meanwhile, the ball, I think, has dropped onto the stumps. That's why the finger was raised up. And it's a run out. So now the final wicket on the crease. A wicket will tie the match. 2 balls remaining. 1 run to get. Two deliveries and 1 run to get. This fielding would have been much more earlier. Now just 1 run required. Let's see what Suraj can do. 2 balls and a run. Definitely he will be looking for a big hit as 2 deliveries are remaining. But a wicket will tie the match. Plays watchfully. Chance of a run out. And a quick single has been taken. There was an appeal. Leg bias is the signal. Congratulations, Legend. Finally, Legends winning the match in a super over. Let's see who will be man of the match. And it's a payback time by Suraj as he had dropped the catch, which happened to be a super over, finally hitting a big 6 and sealing the victory for his side. Panjim cricketers make it to the second round. So let's see who is the man of the match. Meanwhile, requesting the captain of Gumteshwar Margaon kindly come at the commentary box and fill
the players list and be ready for the toss. As you are playing the following match against Panjim cricketers. So requesting the guest at the occasion, Shri Virendra Narvekar, kindly do the honors. Man of the match of the last match, courtesy of very good decent bowling, has defended 5 runs, which ended to a super over. But a wonderful bowling effort. Sunil, man of the match, kindly come and receive your man of the match trophy from the hands of the guest. Sunil of Panjim cricketers, man of the match. And now the next match is on between Satya Devi Kedar Naibag versus CC Boys. Satya Devi, winning the toss, immediately decides to bowl first and inviting the organizers CC Boys to bat first. Over to Sumit with the further updates of the first inning. थँक्यू सर. सामना रंगतोय सत्यदेवी केदार नायबाग विपक्ष सीसी बॉयज या दोन संघ दरम्यान. एका बाजूने जर पाहिलं गेलं तर सीसी बॉयज पंजाब क्रिकेट संघ हा पहिल्या फेरीतील सामना विजयी ठरतो. तो दुसऱ्या बाजूने मात्र आपली पहिलीच गाठभेट होती ती सीसी बॉयज पंजाब या क्रिकेट संघाबरोबर ती सत्यादेवी केदार नायबाग या संघाची. प्रथमतः टॉस विन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला मात्र निमंत्रण दिले गेले ते प्रथमतः फलंदाजीसाठी. सलामीची जोडी जर पाहिली गेली तर सचिन बंगारी आणि त्याच्या साथीला नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती नील हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. सत्यदेवी केदार नायबाग क्रिकेट संघाचा 12th मॅन आपणास विनंती की आपण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती विस्फोटक घड्याघाती फलंदाज तो सचिन बंगारी पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती साथ देण्यासाठी त्याची नील हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्गवरती पहिलं षटक घेऊन प्रमुख गोलंदाज जयेश पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू कटचा सुंदर एक फटका डीप का पॉइंटच्या डोक्यावर डीप पॉइंट सीमारेषा पार करत असताना पहिल्या चेंडूवरती एक नेत्रदीपक चौकार फलंदाज सचिन बंगारी याच्या बॅटमधून. पहिल्या चेंडूवरती एक बहारदार नेत्रदीपक चौकार फलंदाज सचिन बंगारी याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतो आणि या चौकारने सांघिक धावसंख्येचं मात्र अकाउंट ओपन केलं जात आहे. थोडस रनअप मध्ये गडबडी पाहायला मिळाले गोलंदाज जयेश याच्याकडून आणि मात्र महत्वपूर्ण श्रेणी रोखलं गेलं. ऐन मोक्याच्या श्रेणी रोखलं गेलं रनअप. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावरती 4 धावा सीसी बॉयज पंजाब क्रिकेट संघ हा नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना या सामन्यादरम्यान पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा बॅक पुढे जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न परंतु बॅट चिंदुकशी कटले मनकट घेऊन चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. पहिला धक्का बसतोय सीसी बॉयज पंजाब क्रिकेट संघाला. काहीसा घातक ठरला असता जो फलंदाज सचिन बंगारी तो मात्र यावेळेस 4 या धावसंख्येवरती माघारी परततोय. न्यू बॅटर मैदानात पावलं टाकतोय तो अमित हा फलंदाज नील याची साथ देण्यासाठी. सलामीचा पहिला फलंदाज एक आक्रमक फलंदाज सचिन बंगारी माघारी परतला. वैयक्तिक कुट्यात 4 या धावसंख्येवर पहिल्या चेंडूवरती एक नेत्रदीपक चौकार. परंतु पाहिलं गेलं तर त्यानंतर पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न हा फलंदाज सचिन याचा काहीसा अपना ठरलोय आणि मात्र झेलबाजच्या स्वरूपात सचिन बंगारी माघारी परततोय. डगआउटच्या दिशेने रवाना होतोय.
4 धावा धावपलकावरती 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. पहिली सफलता, पहिला ब्रेक थ्रू आपल्या सगळ्यासाठी गोलंदाजचा जयेश प्राप्त करून देतोय. याच मात्र रिव्हर्सिपचा एक देखना नजाकत भरा फटका डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या वरून चेंडू सरा सीमा रेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. आल्या एक अनोख्या शैलीने फटका फलंदाज अमितच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. रिव्हर्स हिटचा स्विच हिटचा फटका आणि या 6 धावांनी सागिक धावफलक हे पाहिले गेले तर आतापर्यंत डबल फिगर 10 या धावसंख्येवरती 1 गडी बाद झाल्यानंतर 10 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. प्रोग्रेसचा फर्स्ट ओव्हर. यश मात्र वेगवान गतीचा चेंडू गोलंदाजचा जयेशाचा अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न बहुधा ऑन साइडला मिड विकेटच्या रिजन मध्ये, परंतु हा फटका काही मात्र असफल ठरतोय, अपुरा ठरतोय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती हे आमच्या गुणतालिकेवरती आणि सांघिक धावफलक रोखले गेले तर आतापर्यंत 10 धावा 1 गडी बाद होत असताना पुन्हा एकदा रिव्हर्सिपचा प्रयत्न, परंतु यावेळी 6 प्रयत्न काहीसा असफल ठरतोय, निरर्थक ठरतोय. वेगवान गतीची गोलंदाजी ही गोलंदाज जयेशाच्या कर्वे वारंवार मैदानात पाहायला मिळाले. सलगचे 2 चेंडू काहीशे फलंदाजाला निशब्द करणारे ठरले आणि निर्धाव चेंडूने सागिक धावफलक काहीसं रोखलं गेलं. आतापर्यंत 10 या धावसंख्येवर नक्कीच एक षटकार फलंदाज अमितच्या बॅटमधून पाहिला, परंतु कमबॅक काय असतं याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानात जयेश या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळतंय. शॉर्ट चेंडू, शॉर्ट अँपुलचा फटका मिड विकेटला फटका फसला गेला आणि फलंदाज यावेळेस अमित बॅक टू द पवेलियन. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलक 10 धावा 2 गडी बाद होत असताना 10 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. कंप्लीट फर्स्ट ओव्हर. सलामीचा फलंदाज सचिन बंगारे माघारी परतला एक चौकार मारून, त्यानंतर वन डाऊन बॅट्समन 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज अमित देखील एक षटकार खेचून माघारी परततो. काहीशी मात्र उत्साही फलंदाजी मैदानात आणि मात्र 2 फलंदाज माघारी परतल्यानंतर मैदानात पावले पडली ती राजेश गोसावी या फलंदाजाची. स्ट्राइकिंग एंडवरती नील हा फलंदाज पाहायला मिळेल, परंतु नॉन स्ट्राइकिंग एंडवरती राजेश गोसावी हा फलंदाज सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट संघाकडून मैदानात दाखल होतोय. कौतुक करावं लागेल गोलंदाज जयेशाचं, अप्रतिम गोलंदाजी. नक्कीच एक षटकार एक चौकार जयेशच्या गोलंदाजीत पाहायला मिळाला, परंतु 2 महत्वपूर्ण सफलता आपल्या संघासाठी प्राप्त करून दिले. गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज रजत पाहायला मिळतो स्क्रीनवरती. समोर मात्र फलंदाज प्रथम स्ट्राइकिंग एंडवरती नील हा फलंदाज सज्ज होईल पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी. 10 रन स्कोर बोर्डवरती लॉस ऑफ 2 विकेट. लोअर फुल टॉस चेंडू ऑन साइडला फटका मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केले जाईल, कारण डीपमध्ये प्रोटेक्शन, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव निघाले आणि 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक हे 11 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचतोय. सिंगल नंतर स्ट्राइक रोटेट स्ट्राइकिंग एंडवरती यावेळेस एक आक्रमक फलंदाज राजेश गोसावी पाहायला मिळतोय. लोअर फुल टॉस चेंडू, चेंडू सरळ यष्ट्यांचा वेध घेतोय. त्रिफाचीच्या स्वरूपात फलंदाज राजेश गोसावी बॅक टू द पवेलियन गोल्डन डकचा शिकार बनतोय. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा मानस बहुधा इरादा पाहायला मिळाला, परंतु हा मानस कायसा अपुरा ठरलाय. थँक्यू. तिसरा फलंदाज माघारी परतोय. राजेश गोसावे गोल्डन डकचा शिकार बनतोय. सांघिक धावफलक स्थिरावले गेले 11 या धावसंख्येवरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात.
गोलंदाज रजत आपल्या संघासाठी तिसरी सफलता प्राप्त करून देतोय आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिली सफलता रजत याच्या नावावर मात्र नोंदवली गेली. न्यू बॅटर मैदानात नरेन पाहायला मिळतोय. नरेनच्या बाबतीत सांगायला गेलं तर बेती मध्ये झालेली स्पर्धा जी झिंगारोची स्पर्धा, त्या स्पर्धेत तब्बल 6 चेंडूत 6 षटकार ठोकण्याचा विक्रम या नरेन या फलंदाजच्या नावावर नोंदवला गेला होता. तो नरेन यावेळेस मात्र मैदानात पाहायला मिळतो स्ट्रायकिंग एंडवरती. धावफलक 11 धावा. 3 फलंदाज माघारी परतल्यानंतर लोअर फुलटॉ चेंडू बॅटची कड लागली. चेंडूचा प्रवास गलीच्या दिशेने. एक धाव तर नक्कीच पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झाला आणि जोपर्यंत फेकी केली जाईल तोपर्यंत तिहेरी धावेची लहर मैदानात. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानात पाहायला मिळालं दोन्ही फलंदाजच्या माध्यमातून. सुंदर कॉलिंग आणि महत्वपूर्ण 3 धावेने सांघिक धावफलक परावर्तित झालाय. 14 रन 14 धाव्या धावफलकावरती. 3 फलंदाज नक्कीच स्वस्तात माघारी परतले. काहीशी अतिघाई मैदानात पाहायला मिळाले, परंतु त्यानंतर काहीशे पाय मैदानात रोवून राहणं खूप महत्वाचं. नरेन या फलंदाजाला आणि त्याच्या साथीला नील या फलंदाजाला. सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू. गोलंदाजचं जे ब्रह्मास्त्र क्रिकेटमध्ये संबोधलं गेलं त्या ब्रह्मास्त्राचा वापर ऐन मौकेच्या क्षणी मात्र पाहायला मिळतो. गोलंदाज रजत याचा निर्धाव चेंडूची समाप्ती ही आमच्या गुणतालिकेवरती पाहायला मिळाली आणि या निर्धाव चेंडूने सांघिक धावफलक हे 14 या धावसंख्येवरती 3 फलंदाज माघारी परतल्यानंतर. 14 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मात्र सुरू असताना पाहायला मिळतोय. ऑन साइडला फटका पाहायला मिळतो. डे बॅकवर्ड स्पेलिंगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. जोपर्यंत डेपचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचेल, ताबा मिळेल तोपर्यंत एकच धाव या चेंडूवरती. एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 15 रन 15 धाव्या धावफलकावरती. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर असताना अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला गेले तर सत्यादेवी केदार नायबाग या क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून प्रथमतः टॉस विन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि तो निर्णय काहीसा मात्र यशस्वीरित्या मैदानात पार पाडताना हा संघ पाहायला मिळतोय. सुंदर फटका कव्हरला खेळला गेला, परंतु एक धाव जलद गतीने पूर्ण करत असताना अंतिम चेंडूवरती एक धाव निघाली आणि सांघिक धावफलक 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रतिषटक 8च्या सरासरीने 16 धावा आतापर्यंत धावफलकावर. 3 फलंदाज माघारी परतल्यानंतर टॉस विन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि तो निर्णय काहीसा मात्र योग्य साबित ठरवला गेला. आतापर्यंत गोलंदाजी जर पाहिली तर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाचे 3 मोहरे मात्र टिपले गेले आणि मात्र सांघिक धावसंख्येला काहीशी रोधक लावणारी गोलंदाजी ही मैदानात पाहायला मिळते ती सत्यादेवी केदार नायबाग क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून. गोलंदाजी मार्कवर बदल पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक घेऊन सचिन हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती लेफ्ट हँडर फलंदाज नरेन सज्ज होईल पहिल्या चेंडू फेस करण्यासाठी. पहिला चेंडू इनसाइड आउट फटका. डीप स्ट्रायकरला फटका, परंतु डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. एकच धाव पहिल्या चेंडूवरती मिळेल फलंदाज नरेन याला आणि एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 17 धाव्या धावफलकावरती. प्रत्येक चेंडूवरती आक्रमण करण्याऐवजी प्रत्येक चेंडूवरती जर स्ट्राईक रोटेट झाली तर तरी देखील धावसंख्येची गती मात्र वाढू शकते, परंतु पाहिलं गेलं तर आतापर्यंत एका बाजूने नरेन याची मात्र सुंदर फटकेबाजी तर त्याच्या साथीला मात्र नील हा फलंदाज देखील अप्रतिम फटकेबाजी करताना पाहायला मिळतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग फटका, शॉट फाईन लेगला चेंडूचा प्रवास, लेग बाईटचा इशारा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि एक अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक हे मात्र 18 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचतोय. सुरुवातीला आक्रमक फटकेबाजी झाली, परंतु त्यानंतर जी सफलता प्राप्त केली गोलंदाजाने त्यानंतर कुठेतरी धावसंख्येला मात्र रोखून धरणारी गोलंदाजी ही मैदानात पाहायला मिळते ती वारंवार सत्यदेवी केदार नायबाग क्रिकेट संघाकडून. मात्र फ्लेकचा फटका, काहीसा फटका, चेंडू बऱ्याच वेळ हवेत. डेप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवरती ताबा मिळेल तोपर्यंत 2 धावा अगदी सहजरित्या मैदानात पूर्ण होताना पाहायला मिळत आहेत. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, महत्वपूर्ण 2 धावा आणि या 2 धावेने सांघिक धावफलक 20 रन स्कोर बोर्डवरती. 20 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना आतापर्यंत 20 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. मात्र सुंदर फटका जमिनीलगतचा अलॉंग द कार्पेटचा डीप लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये फक्त एकच धाव या चेंडूवरती फलंदाज नरेनच्या बॅटमधून.
आणि एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 21 रन 21 धावा धावफलकावर तिसरं षटक मार्गस्थ अंतरे मजुरे 2 चेंडूंचा खेळ बाकी या षटकातील आणि गोलंदाजी मार्गवर पाहिलं गेलं तर तिसरं षटक हाताळत असताना सचिन हा गोलंदाज स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू अप्रतिम चेंडू अतिरिक्त उंची पाहायला मिळाली चेंडू पिच झाल्यानंतर परंतु कौतुक करावं लागेल विकेट किपर याचं अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडूची समाप्ती आमच्या गुणतालिकेत आणि या निर्धाव चेंडूने सांघिक धावफलक देखील स्थिरावले गेले 21 रन स्कोर बोर्ड वरती. यावेळी मात्र सुंदर चेंडू यष्ट्या उद्ध्वस्त करून देणारा यू मिस मी आय डेफिनेटली हिट यू त्रिपाचीच्या स्वरूपात फलंदाज चौथा माघारी परततोय. सलामीचा नील हा फलंदाज देखील यावेळेस माघारी परततोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 21 धाव्या धावफलकावरती प्रथम फलंदाजी करत असताना सीसी बॉयजचा पंजिम क्रिकेट संघ. येणाऱ्या 12 चेंडूंचा 2 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी राहिलाय आणि न्यू बॅटर मैदानात पावले टाकतोय साहिल नरेन याची साथ देण्यासाठी. येणाऱ्या 12 चेंडूवरती किती धावा जोडल्या जातील कारण भेदक मारा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाकडून पाहायला मिळते. आतापर्यंत 3 षटकादरम्यान फक्त 21च धावा आणि 4 फलंदाज बाद केले गेले. येणाऱ्या 2 षटकासाठी पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती जोडले जातील सहकारी कॉमेंटेटर सागर सर. Thank you, DJ. So here at the moment, CC Boys looks to be in a deep trouble as they have lost 4 wickets. And the score is only 21 after the completion of 3 overs. Current run rate at the moment is 7 runs per over. Nothing to worry. One of these batsmen have to really take the charge from here on as 12 legal deliveries are remaining in this inning. Rupesh, the bowler. Short pitch delivery. There was a definite chance. Even if he has to take the ball somewhere, even at the side part of the bat, then definitely ball would have gone towards the boundary. Nonetheless, wide is the signal from the umpire. So that will boost the total by 1 run. That is 22 on the board. Good delivery down the leg stump. We have to wait for umpire signal. Definitely swing, stretch of arms at the shoulder level saying another wide to be added and score moves to 23. So not a good start by Rupesh. Still all 12 deliveries are intact with the batting team. Let's see what is going to come. Maybe Rupesh finding it difficult for the left-handed batsman. Right arm round the right arm over to continue. Good delivery, wonderful strike. Fielder under the ball. And that is a biggie. Now the acceleration have started with those 2 wides. 8 runs have come on the first delivery and that takes the total to 29. So there were some advices for Rupesh as a beautiful 6 has been hit by the man on strike. Naren. Can Naren get 1 more out of this over? Another full pitch delivery. Well bowled, well kept onto his follow through. Good catch taken. Good anticipation. 1 more wicket back to the pavilion. So now Newman in his
Pritesh with jersey number 22 on his back. Can he score 22 runs? That will be very handy for his team. At the moment, team is at 29 and 5 wickets back to the pavilion. One more over to be bowled. Sahil is at the non-striker's end, waiting for his turn to regain at the striker's end. So meanwhile, Pritesh is having a close look at the match ball. So here we go. Rupesh being successful after being hit for a big six and been able to get rid of Naren. There's a slog sweep in act. Hits the ball towards the mid-wicket fielder. Good fielding down the boundary rope by Amit, jersey number 9. And a single to bring Sahil on the striking, and many things depend on this guy who is holding the willow at the striker's end. With that single, team total moves to 30. Can Sahil strike? Strikes a biggie. What a monstrous hit as the fielder watches the ball sailing past his head. And what a hit at the difficult end. To 36. Another delivery, another similar hit. Ball has been hit miles in the air. Can it travel the distance? Beautiful attempt. Wonderful catch taken. And we have to wait for umpire signal. The way batsman is showing it. The way the fielder is showing it. Looks to be both the players have said that it is a 6. As both the players have already confirmed by raising both the hands up. So let's see what we have to get from the umpire. Two players have raised both the hands. So we are waiting for the umpire signal. Let's see what is going to be it. As whether the runs to be added or whether this is going to be fall of a wicket. The umpire will confirm. They are checking with the fielder. And a 6 is a signal. That is a wonderful strike from Sahil as the ball goes the distance for the second time. So wonderful hitting from Sahil. 2 sixes from 2 deliveries that he has faced. Score moves to 42. Now something to cheer about. Can Sahil connect one more? Can he get hat-trick of 6s? Lot of pressure on the bowler. Another strike. And the ball travels the distance much more than the previous one. Hat-trick of 6s. Score moves to 48. So finally some acceleration for CC boys as from 21 a score moves to 48. So 27 runs scored, not 27. 27 scored from the previous over.
most costliest over so far in the tournament. And the power hitting continues as the ball has been struck away from the fielder. Odd bounce, the ball traveled the distance. Now Pritesh joining the party. Boundary from the bat of Pritesh. And the total moves to 50 up for CC boys on the very first delivery into the fifth over. So Pritesh joining 22 on his back. And 27 runs have scored from the previous over. Not able to connect properly. Meanwhile, a single is on. And single brings Sahil back on the striking end. So definitely there will be some power hitting to be witnessed. Either the ball will go out of the ground or the Sahil may come out of the ground. That is the nature of Sahil's batting. Definitely the ball has been hit again into the vacant area. Ball bounces much more than at the height of the player. Could not stop. 57. This time the ball went out of the ground. And such is the capacity of Sahil. Definitely, either the ball will go out or it will disappear. Another wonderful strike towards the longest part because of the strong breeze. Fourth sixer from the bat of Sahil. Ball goes out of the park. Score moves to 63. And Amit feeling the pressure, who is delivering in the penultimate over. Last two legal deliveries remaining in this final over. Whether this is going to be 2 out of 2 or whether Amit can get some dot balls, time will tell us. Another wonderful strike, chance of a catch. This time catch has been taken completely inside the rope. And a wicket for Amit. So with that, a fall of wicket, incoming batsman Vicky Karapurkar. What a cameo played by Sahil. Just faced 6 deliveries and hit 4 monstrous sixes. And individual total of 28 runs. Well played Sahil for his team. 63 on the board. Final delivery of the inning. Can Vicky connect such a stylish batsman? Swings the bat very hard. Ball takes the leading edge, travels safely to the keeper. And the catch has been taken. Couple of wickets for Amit as well into the final over. A wicket to end the inning. So after completion of 5, score is 63. 64 runs required for Satya Devi Kedar Naibag in the second innings. Thank you, DJ. Meanwhile, requesting the captain of Gumteshwar kindly come for toss as you are going to play against Indian cricketers. Requesting both the captains kindly come in front of the commentary box for the toss.
Gumteshwar Margaon as well as Benjamin cricketers. You were the shadow to my light. Did you feel us? And all the stars, you Captain fade of away. Gumteshwar will report as we have to submit the players list as well as the toss to be taken. And even request going out for the captain of Benjamin cricketers, kindly come for toss. You were the shadow to my light. We are Did you into the feel second innings. us? And let's begin the second And innings all with the a sweet stars, voice all the way you from fade Bengal. away. Sumit, kindly join in the commentary box with the updates in a sweet Marathi language. थँक्यू डीजे. 64 धावांचं उद्दिष्ट समोर सत्यदेवी केदार नायबा क्रिकेट संघासमोर आणि या 64 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी आपण मैदानात पाहतोय. सलामीची जोडी मैदानात अमित आणि साई दत्त हा फलंदाज मैदानात पाहायला मिळतोय. बहुधा स्ट्रायकिंग एंडवरती अमित हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला साई दत्त हा फलंदाज. 64 धावांचं उद्दिष्ट. सुरुवातीच्या 3 षटकामध्ये जर पाहिलं गेलं तर सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघ कुठेतरी धावसंख्येपासून लांब पाहायला मिळत होता, कारण 21 धावा 3 षटकादरम्यान होत्या. परंतु त्यानंतर जो गेअर चेंज केला सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाने, कारण तब्बल 2 षटकादरम्यान बहारदार फटकेबाजी पाहायला मिळाली आणि मात्र 42 धावा तब्बल 2 षटकादरम्यान. पहिला चेंडू अनोख्या शैलीने फटका खेळण्याचा प्रयत्न बहुधा फाईन लेगच्या रिजन मध्ये, परंतु फटका जर पाहायला गेला तर काहीसा फसला जातोय. सिरी पॉइंटला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण झाले तोपर्यंत 1 धाव निघाली आणि पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव निघत असताना संघाचा अकाउंट ओपन होताना पाहायला मिळते. 64 धावांचा पाठलाग करत असताना एका बाजूने आक्रमण होणं खूप महत्त्वाचं, कारण 64 धावांचं एक मोठं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर आणि त्या उद्दिष्टाचा पाठलाग करण्यासाठी आपण पाहतोय मैदानात सलामीची जोडी. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव निघाले फलंदाज अमित याच्या बॅटमधून आणि त्यानंतर स्ट्राईक रोटेट होत असताना स्ट्रायकिंग एंडवरती यावेळेस प्रथमच साई दत्त हा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय. सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाकडून पॉवर प्लेचं महत्त्वपूर्ण षटक घेऊन संघाचा प्रमुख गोलंदाज स्क्रीनवरती विवेक पाहायला मिळतोय. मागच्या सामन्यादरम्यान बहारदार गोलंदाजी विवेकाची आपण पाहिली, परंतु या सामन्यादरम्यान त्याच पद्धतीची लयबद्ध आणि धारदार गोलंदाजी मैदानात पाहायला मिळेल. यानंतर सामना होतोय पंजीम क्रिकेटर्स विपक्ष घुमटेश्वर मडगाव या 2 संघ दरम्यान. दोन्ही संघ कॅप्टन्स आपण टॉस साठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. स्ट्राईक एंडवरती लेफ्ट हँडर फलंदाज साई दत्त सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षणाचा जर विचार केला तर ऑफ साइडला एक क्षेत्ररक्षक 30 या सर्कलच्या बाहेर डीप एक्स्ट्रा कव्हरला आणि एक क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला डीप लॉंग ऑनला मात्र तैनात केला जातो फलंदाज साई दत्त याच्यासाठी. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, पंचांकडे अपील, लाऊड अपील आणि मात्र पंच अपील घेत आहेत. फलंदाज LBWच्या स्वरूपात माघारी परततो, पायचीच्या स्वरूपात माघारी परततो आणि पहिला धक्का बसतोय सत्यदेवी केदार नायबा क्रिकेट संघाला धावफलक 1 या धावसंख्येवरती.
थँक्यू डीजे. पावले टाकतोय वन डाऊन बॅटमन तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज हा सचिन मैदानात पावले टाकताना पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती गोल्डन डकचा शिकार फलंदाज साई दत्त हा ठरतोय. एक अप्रतिम यॉर्कर चेंडू जो क्रिकेटमध्ये गोलंदाजचा ब्रह्मास्त्र संबोधला जातो. तो ऐनमोक्याच्या क्षणी त्या ब्रह्मास्त्राचा वापर केला गेला आणि ते ब्रह्मास्त्र मात्र ऐनमोक्याच्या क्षणी मात्र महत्वपूर्ण ठरलं कारण सफलता प्राप्त केली. याच मात्र फटका खोदून काढलाय शॉर्ट पॉईंटच्या डोक्यावरून डीप पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण झाले तोपर्यंत 2 धावा अगदी सहजरित्या मैदानात पूर्ण होताना पाहायला मिळत आहेत. 2 धावेने सांघिक धावफलक परावर्तित झाले. धावफलकावरती 3 धावा एक गडी बाद झाल्यानंतर 64 धावांचं उत्तर देत असताना मैदानात सत्यदेवी केदार नायबा क्रिकेट संघ. नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवरती 2 या धावसंख्येने आपलं वैयक्तिक खातं ओपन करतोय. तो फलंदाज सचिन स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय. लोअर फुल टच चेंडू सुंदर कव्हर ड्राईव्हचा फटका. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये जी गॅप होती ती गॅप मात्र भेदली आणि चेंडूचा प्रवास डे बॅस्ट्रॅकवर सीमारेषा उल्लंघन करत असताना एक नेत्रदीपक चौकार फलंदाज सचिनच्या बॅटमधून. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती विवेक हा गोलंदाज सज्ज होतोय. एक सफलता देखील या गोलंदाजाने प्राप्त केली परंतु तो आत्मविश्वास दुणावला आहे. त्या आत्मविश्वासाने गोलंदाजीकडे खूप महत्वाचं. अप्रतिम चेंडू वेगवान शैलीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. वेगवान गतीचा चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. प्रयत्न झालाय फलंदाज सचिन याचा एक आक्रमक फटका टोलवण्याचा परंतु या प्रयत्नांना काहीसं निरर्थक ठरवणारा चेंडू गोलंदाज विवेक याचा मैदानात पाहायला मिळतोय. आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती झाल्यानंतर धावफलक हे स्थिरावलं गेले. आतापर्यंत 7 या धावसंख्येवरती. अंतरिम अजूनही एका चेंडूचा खेळ बाकी. या पहिल्या षटकादरम्यान महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक आणि या पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान संघाचा प्रमुख गोलंदाज स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय तो विवेक हा गोलंदाज. सुंदर चेंडू अप्रतिम चेंडू वेगवान गतीचा चेंडू पाहायला मिळतो. अंतिम चेंडू देखील निर्धाव निघतोय. कौतुक करावं लागेल विकेट किपर याचा. अप्रतिम चेंडू अडवला गेलाय आणि मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होत असताना सांघिक धावफलक 7 धावा 64 धावांचा उत्तर देतोय सत्यदेवी केदार नायबा क्रिकेट संघ. अजूनही येणाऱ्या 4 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी राहिलाय आणि पाहिलं गेलं तर विजयासाठी अजूनही 57 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या 4 षटकादरम्यान. हे मात्र सत्यदेवी केदार नायबा क्रिकेट संघाला महत्वपूर्ण लढत दोन्ही क्रिकेट संघासाठी. कारण या सामन्यात जो विजयी क्रिकेट संघ ठरेल तो क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करेल आणि त्यामुळे प्रत्येक दोन्ही संघाचं एकच ध्येय असेल की शेवटपर्यंत विजय मिळवणं. हे एकच ध्येय डोळ्यासमोर राखून दोन्ही संघाचा प्रयत्न हा मैदान होताना पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ संघर्ष करतात परंतु कोणता क्रिकेट संघ हा अंतिम क्षणी या सामन्यात विजय शिक्कामोर्तब करेल. गोलंदाजी मार्कवरती बदल पाहायला मिळतोय. गोलंदाज साईल आमच्या स्क्रीनवरती दुसरं षटक फेकण्यासाठी. मिस टायमिंग फटका डीप मिड विकेटला फटका काही सापसतोय. राजेश गोसावी स्क्रीनवरती एक सेफ हँडल पकडले गेले आणि सलामीचा दुसरा फलंदाज अमित देखील माघारी परततोय. दुसरा धक्का बसतोय सत्यदेवी केदार नायबा क्रिकेट संघाला. धावफलक 7 या धावसंख्येवर. पंजिम क्रिकेटर्स आणि विपक्ष घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेटर्स दोन्ही कॅप्टन्स टॉस साठी आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. न्यू बॅटर मैदानात नितीन हा मात्र पाहायला मिळतोय सचिन याची साथ देण्यासाठी.
7 रन स्कोरबोर्डवरती लॉस ऑफ 2 विकेट 7 धावा 2 गडी बाद झाल्यानंतर स्ट्राईक रेटवरती फलंदाज नितीन पाहायला मिळतोय. लोअर फुल टच चेंडू आडव्या बॅटने फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण अप्रतिम एफर्ट लावला गेला क्षेत्ररक्षकाकरवी महत्वपूर्ण 2 धावा रोखल्यात. सुंदर एफर्ट मैदानात सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाच्या क्षेत्ररक्षकाकरवी पाहायला मिळाला आणि या महत्वपूर्ण 2 धावेने सांघिक धावफलक हे 9व्या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचतंय. दुसरं षटक प्रगतीपथावर पहिल्या चेंडूवरती सफलता. सुंदर चेंडू अप्रतिम चेंडू गुल्डन स्पॉट वर चेंडू पडल्यानंतर थोडासा उंचीला येतोय. फलंदाज काहीसा मात्र प्रयत्न करतोय आक्रमकरित्या अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा बहुधा ऑनसाइडला फटका टोलवण्याचा प्रयत्न हा फलंदाज नितीन याचा पाहायला मिळाला आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना सांघिक धावफलक स्थिरावलं गेलं आतापर्यंत 9व्या धावसंख्येवर. विजयासाठी अजूनही 55 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा पुढे सरसावून स्टेप आउट करत फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु अप्रतिम गोलंदाजी अचूक टप्प्याची नियंत्रबद्ध आणि धारदार गोलंदाजी काहीशी फलंदाजाला निशब्द करून ठेवणारी गोलंदाजी ही मैदानात पाहायला मिळते ती साहिल या गोलंदाजाकडून. दुसरं षटक हाताळलं जाते आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर फक्त 2 धावा खर्च केल्या एक सफलता प्राप्त केली या षटकादरम्यान साहिल नामक गोलंदाजाने आणि भेदक मारा मैदानात सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजाकरवी. यावेळेस मात्र शप्पलवून फटका परंतु फटका काहीसा फसला जातोय स्वतः गोलंदाज स्क्रीनवर परंतु यावेळी जर पाहिलं गेलं तर फटका फसलेला झेलगिड्याची संधी परंतु झेल सुटलं गेलं. 1 धाव निघाली आणि 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर डबल फिगर 10 या धावसंख्येवरती 2 गडी बाद झाल्यानंतर येणाऱ्या 3 षटकांचा खेळ राहिलाय बाकी. विजयासाठी 18 चेंडू आणि अजूनही 54 धावांची आवश्यकता या सामन्यादरम्यान. काय घडतंय काय बिघडतंय कारण अजूनही पाहिलं गेलं तर प्रवास दूरवर पाहायला मिळतोय सत्यादेवी केदार नायबा क्रिकेट संघासाठी परंतु 18 चेंडूवरती 54 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे होईल हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर आमचे सहयोगी कॉमेंटेटर सागर सर हे जोडले जातील. Thank you, Sumit. Arjun to deliver the third over. Meanwhile, a slog sweep attempted. Lovely fielding effort, definitely saved. 4 runs for his side. What could have been a monstrous hit have been saved by Rajesh. Meanwhile, couple of runs to take the total to 12. So more 52 runs required. Nitin on the striking end. Another good looking drive straight across the bowler. Straight towards the long off area. Meanwhile, a single that brings Sachin on the strike. Another good delivery. Arjun making the life of batsman difficult. A dot ball bowled by Arjun. Sachin could not understand the length and the deviation of the ball. Another good delivery, equally well played, straight down the ground into the vacant area between long on and the cow corner. But Rajesh is into action. Have saved at least 8 runs for his side. What would have been sixers have been stopped inside the boundary rope. So meanwhile, Nitin on the striking end. Short pitch delivery, guides the ball away from the fielder. Ball racing towards the boundary as it beats the fielder with the circle. No stopping. Ball traveled the distance quite comfortably. Nitin guides the ball towards the boundary. 4 runs on that strike. 18 on the board.
So definitely the captain of CC Boys will be eyeing for the wicket of Nitin. He looks to be rock solid. Onto the back foot, there's a chance of a catch. Whether Arjun can take it. Almost reached near the ball. Chance of a run out. Good throw. Missed by the keeper, but dislodges the bails on the second attempt before Nitin could reach inside the popping crease. Fall of wicket in the hunt of the second run. So with that total moves to 19. More 45 runs required and the third wicket back to the pavilion. So now Jayesh rolls his sleeves, take the willow in his hand. Will be at the striker's end. But that concludes over number 3. Meanwhile, Rohit the bowler, bowling the 4th over. So meanwhile, as a left-handed batsman, Jayesh on the striking end, we can see shift in the placements as far as the left-handed batsman is concerned. And here we go, Rohit with the ball. Switch it was the attempt, not getting the proper connection. Good fielding towards the shot. Third man by none other than Vicky Karapurkar. Stops the ball from crossing the fence. Meanwhile, a single that brings Sachin on the striking end. Rohit, the guy with the ball, delivering right arm round the stumps. And this left hand and right hand combination making it headache for the fielders. Ball has been pitched way outside the off stump. Wide is the signal. That wide will add on 1 run to the total. .22 on the board. More 42 runs required. This is a wonderful hit. Away from the player, the tallest guy. If he can't catch the ball, then no one else will do it. Sachin Bangari watches the ball sailing past his head. With that, Biggie score moves to 28. A short pitch delivery has been cut much finer away from Sahil. There was an effort but could not stop the ball. Boundary. So with that boundary, total moves to 32. Exactly 32 runs required from 8 legal deliveries. 8 deliveries to go and 5 sixes need of the hour. Change in pace, ball bounces a bit. Another fumble, but equally backed up by Vicky Karapurkar. Stops the ball from crossing furthermore. And meanwhile, that results in a dot ball.
So there was a fall of a wicket. Meantime, we are into the final over. 5 sixes and Rajesh to deliver. I beg your pardon, he's Pritesh. As a strong sun is smiling bright and all the sunlight is falling into eyes. So similar stretcher. Pritesh delivering the final over. Delivers a dot ball initially. Good strike only to the tallest guy, big man. Sachin Bangari collects the ball quite comfortably. Throws it back to the bowler. A single. So only 4 deliveries remaining. And it looks to be CC boys will be through easily. As 31 runs required from here on. Change in pace, equally well played into the vacant area. Ivan Rajesh gives up the race. Boundary from the bat of Jayesh, and that will minimize the target by more 4 runs. Score moves to 37, so 27 more required. Oh my dear, squatted onto his knees as if he is doing the prayers much more before the ball could be delivered. But the prayers not working, no connection, ball travels safely to the keeper. Let's see whether Jayesh can hit a 6 just to boost his confidence. Can he strike? Switch it is the attempt. Still he has got one more chance. You can try, Jayesh, get some confidence, at least hit a 6 towards the pendle, so that in your future tournaments your confidence will be high as you are up against a very decent all-rounder. Low full toss, wonderful strike, and the confidence will be high of Jayesh, although they have lost the match. Nonetheless, congratulations CC boys for a win, and you are into the quarter-finals. So next match is going to be played between Gumteshwar Margaon versus Panjim cricketers. Gumteshwar Margaon has won the toss and they will be fielding first. To honor the man of the match, and without much delay, requesting the proprietor, one of the proprietor of AB25, Bharat Dargas, kindly do the honors. Man of the match for the second time with those 4 monstrous 6s and a good over. Captain of the team Sahil, consecutive second man of the match in the pre-quarters. What a player for CC boys.
So now inviting another sweet voice all the way from Bengal, Sumit Karsekar, kindly give the further details of this match. So over to Sumit. थँक्यू विजय. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मधून तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि खेळाडूंचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आजचा दुसरा दिवस आपण पाहतोय सीसी बॉयज पंजीम आयोजित पंचायत लेवलची आणि म्युन्सिपाल्टी लेवलची एक भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा आणि महत्वपूर्ण सामने संध्याकाळच्या सत्रातील दोन दिग्गज संघ दरम्यान. पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस जमलेलगतचा एक सुंदर फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव निघत असताना संघाचा अकाउंट इथे मात्र ओपन केले जात आहे. पंजीम क्रिकेट संघ हा प्रथम फलंदाजी करत असताना मैदानात पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाकडून पहिलं षटक फेकण्यासाठी गुरुशांत हा गोलंदाज स्क्रीनवरती आपण पाहू शकतो. आणि दुसऱ्या बाजूने पहिल्या चेंडूवरती चित्रा या फलंदाजाने मात्र एक धाव काढली. मात्र ग्लान्सचा फटका सुंदर पदे डीप फायलेगच्या रिजन मध्ये जोपर्यंत शॉर्ट फायलेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडू पाशी पोहोचेल तोपर्यंत चेंडू मात्र बीट करून निघत असताना डीप फायलेग सीमारेषा उल्लंघन करतोय चौकारासाठी आणि पहिला चौकार फलंदाज सूरजच्या बॅट मधून निघताना पाहायला मिळतोय. फाईव्ह रन स्कोर बोर्ड वरती 5 धावा धावपलकावरती पाहायला मिळत आहे दोन चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. शॉर्ट चेंडू हुकचा फटका बॅटची लिडिंग एज टॉप एज लागत असता चेंडूचा प्रवास थर्डमॅनच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव तर नक्कीच पूर्ण केली जाईल कारण अप्रतिम क्षेत्ररक्षण शॉट थर्डमॅनच्या क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं आणि एक या धावसंख्येने सांघिक धावपलक परावरती धावपलकावरती 6 धावा. महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर एक चौकार फलंदाज सूरजच्या बॅट मधून पाहायला मिळालाय. स्ट्रायकिंग एंडवरती चित्रा हा फलंदाज सज्ज होतोय. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव निघत असताना चित्रा याने मात्र आपलं अकाउंट ओपन केलंय. मात्र सुंदर चेंडू स्टेअरचा फटका सिलेमिड ऑफला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होईल तोपर्यंत एकच धाव या चेंडूवरती निघत असताना थोडंसं फंबल पाहायला मिळालं क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून परंतु एक धाव निघाले आणि सांघिक धावपलक परावर्तित झाले तब्बल आतापर्यंत 7 या धावसंख्येवरती. महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक फेकत असताना गोलंदाजी मार्कवर गुरुशांत हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून. यावेळी मात्र सुंदर चेंडू अप्रतिम चेंडू एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजचा सूरज याचा परंतु हा प्रयत्न कसा अपुरा ठरतोय. अचूक टप्प्यावरती भेदक मारा हा गोलंदाज गुरुशांत याचा पाहायला मिळतोय आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती बऱ्याच वेळानंतर आमच्या गुणतालिकेत पाहायला मिळते. ऑन साईडला फटका जमिनीलगत चालवून ते कार्पेटचा फटका जोपर्यंत डेप स्क्वेअर लेगला चेंडू अडवला जाईल तोपर्यंत सुंदर फेकी सरळ स्टँड वरती आणि फलंदाज यावेळी सूरज हा मात्र रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परततोय. पहिला धक्का बसतोय पंजीम क्रिकेटर संघाला. सांघिक धावपलक पाहिलं गेलं तर धावपलकावरती आतापर्यंत 8 धावा एक गडी बाद होत असताना मेले. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय धावपलकावरती 8 धावा एक गडी बाद होत असताना आणि दुसऱ्या षटका दरम्यान गोलंदाजी मार्कवर संघाचा कर्णधार
नरेश हा पाहायला मिळतोय. शॉर्ट चेंडू, शॉर्ट अपुलचा फटका डेप स्क्वेअर लेगला. चेंडू सरळ हवाई सफर करत असताना सीमारेषच्या पार निघतोय 6 धावांसाठी. धावफलकावरती एक आक्रमक फटका फलंदाज चित्राच्या बॅटमधून डेप स्क्वेअर लेगच्या विरोधात गोलंदाज नरेशच्या विरोधात मैदानात पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र ओव्हरपेच चेंडू सरळ बॅटने डीप लॉंग ऑनच्या दिशेने, परंतु यावेळी फटका फसला गेलाय. ताकद अपुरी पडली आणि चेंडू डीप लॉंग ऑनला एक अप्रतिम झेल पकडल्यानंतर फलंदाज चित्रा याची खेळी समाप्त केली जाते. माघारी परततोय एक षटकार फलंदाज चित्राच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला, परंतु चित्रा देखील माघारी परततोय. काहीशा आशा अपेक्षा चित्रावरती देखील होत्या कर्णधाराचा, परंतु त्या आशा अपेक्षांना निराशा करत असताना डगआउटच्या दिशेने रवाना होतोय. दुसरा धक्का बसतोय फलंदाजी करणाऱ्या पंजाब क्रिकेटर्स संघाला. सांघिक धावफलक 14 या धावसंख्येवरती. तर दुसऱ्या बाजूने पाहिलं गेलं तर नरेश हा गोलंदाज मात्र पहिली सफलता आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील प्राप्त करतोय. न्यू बॅटर स्ट्राइकिंग एंडवरती दिनेश नाईक. सुंदर चेंडू जमलेला लगतचा एक ताकदवर फटका डीप लॉंग ऑफच्या रिजन मध्ये. एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केली जाईल, कारण डीप मध्ये प्रोटेक्शन पाहायला मिळते फक्त एकच धाव या चेंडूवरती. आणि सांघिक धावफलक बऱ्याच वेळानंतर 15 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचते. 15 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना आतापर्यंत 15 धावा या धावफलकावर. नियंत्रबद्ध गोलंदाजी आतापर्यंत घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते, कारण टॉस विन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय हा घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाच्या या सामन्यादरम्यान पाहायला मिळतोय. आज मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू सन्मानजनक फटका डीप लॉंग ऑफच्या रिजन मध्ये. एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केली जाईल आणि एक या धावसंख्येने सागिक धावफलक काहीसा आगेकूच करताना पाहायला मिळते. ते 16 धावा या धावफलकावरती. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर असताना चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं खूप महत्त्वाचं. खराब चेंडूवरती आक्रमण चढवणं हे खूप महत्त्वाचं समजलं जात आहे. अप्रतिम चेंडू गोल्डन स्पॉटवर चेंडू पडल्यानंतर काहीसा वेग घेतो. विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावतो आणि बऱ्याच वेळानंतर निर्धाव चेंडूची समाप्ती हे आमच्या गुणतालिकेवरती पाहायला मिळते. सांघिक धावफलकाला रोग लावणारी गोलंदाजी ही दुसऱ्या षटकादरम्यान नरेश या गोलंदाजाकडून आणि धावफलक आतापर्यंत 16 धावा. ओव्हरपेच चेंडू लेफ्ट फटका डीप मिड विकेटच्या वरून. दिनेश नाईकच्या बॅटमधून चेंडू सरळ स्टँड ऑन डिलिव्हर 6 धावांसाठी. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलक 22 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 22 धावा 2 गडी बाद होत असताना दिनेश नाईक यांच्या बॅटमधून एक बहारदार फटका अंतिम चेंडूवरती नरेश याच्या विरोधात डिमिड विकेटच्या वरून आणि त्यानंतर सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित झाला आतापर्यंत 22 या धावसंख्येवर. गोलंदाज मार्कवर वरद हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक फेकण्यासाठी समोर फलंदाज सज्ज होतोय. सुनील हा फलंदाज पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी पाहायला मिळतोय स्ट्राइकिंग एंडवरती. 22 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू हलक्या स्टिअर करण्याचा प्रयत्न फलंदाज सुनील याचा, परंतु हा प्रयत्न कैसा अपुरा ठरतोय. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी, नियंत्रबद्ध गोलंदाजी गोलंदाजचं वरत या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळते आणि पहिला चेंडू कायचं त्याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण मात्र मैदानात दाखवताना पाहायला मिळाला. लोअर फुल टॉस चेंडू स्वीपचा एक सुंदर फटका.
डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव तर पुढे केले गेले. दुसऱ्या धावेकडे पावले वळली. थोडंसं पंबल पाहायला मिळालं क्षेत्ररक्षक कर्वे आणि महत्वपूर्ण दुहेरी धावेरे सांघिक धावफलक हे परावर्तित झाले. 24 रन 24 धावा या धावफलकावर. थोडीशी चूक क्षेत्ररक्षक कर्वे पाहायला मिळाले. परिणामी मात्र 2 धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण होताना मैदानात पाहायला मिळतात. सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू, कौतुक करावं लागेल विकेट किपरचं देखील. सुंदर क्षेत्ररक्षण, यष्टांच्या मागे निर्धाव चेंडूची समाप्ती पुन्हा एकदा आमच्या गुणतालिकेत. आणि तिसऱ्या षटकातील अंतरिम अजून 3 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 24 धावा या धावफलकावरती. काहीसा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न फलंदाज सुनीलचा, परंतु या प्रयत्नांना काहीशी मात्र अपूर्ता मिळते ती गोलंदाज कर्वे. शॉर्ट चेंडू पुन्हा एकदा बॅक पुढर जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न सुनील याचा प्रयत्न झालाय, परंतु हा प्रयत्न देखील असफल ठरतोय. सलगचे 2 चेंडू निर्धाव निघतात. काहीसा दबाव हा फलंदाजावरती वाढताना पाहायला मिळतोय. धावफलक स्थिरावलं गेलं आतापर्यंत 24 या धावसंख्येवरती. 2 फलंदाज माघारी परतल्यानंतर यावेळेस मात्र पुढे सरसावून फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु दूरवरून फटका खेळण्याचा प्रयत्न झालाय फलंदाज सुनील याचा. सलगचा तिसरा चेंडू धावफलकावरती निर्धाव. प्रयत्न हे आक्रमक फटके खेळण्याचे होत आहेत मैदानात सुनील या फलंदाजाकडून, परंतु त्या प्रयत्नांना अपूर्ता मिळते मैदानात. यावेळेस त्रिफळाची 2 फलंदाज सुनील माघारी परततोय. तिसरा धक्का बसतोय पंजाब क्रिकेटर्स संघाला आणि सांघिक धावफलक स्थिरावलं गेलं. 24 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 षटकांचा देखील खेळ समाप्त होतोय. काहीसा दबाव जो निर्माण केला होता गोलंदाज वरद याने, तो दबाव हटवण्याचा प्रयत्न मैदानात झाला, परंतु त्या प्रयत्नात मात्र आपले विकेट मात्र गमावून फलंदाज सुनील हा माघारी परततोय. 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. धावफलक 24 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटकांचा खेळ समाप्त झाला. येणाऱ्या 2 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी राहिला. आणि पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चेंज. आमचे सहयोगी समालोचक सागर सर हे पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर जोडले जातील. Thank you, Sumit. 24 runs on the board. Akshay Sogre, the bowler. First delivery equally well played. Guides the ball towards the mid-wicket area for a single. And the new man in is none other than Amay. Amay is also can be a surprise as 2 overs remaining in this inning. Akshay wants the fielders at the proper places. So shifting the placements that has been put for him by the captain, making the fielders take a roundabout, and wants the proper players at the proper areas. So after doing the setup, finally happy with the field setup that has been set for him. And here we go, right arm over the stumps. Lower full toss, that is the listing captain would have expected by setting the field, by moving the fielders from their places. So this is what I was talking about. Surprise package. Amar strikes for a big. Another connection into the vacant area. 2 fielders running to stop the ball. Meanwhile, the ball has been stopped by the fielder from the mid-wicket. And that single takes the total to 32. So right now, some decent figures on the board. 1 more over to be bowled. Let's see how much more score is going to be put. Dinesh Naik on to the striking end. Swings the bat very hard, equally well kept by Sanket Moraskar behind the stumps. Not an easy job to send close to the wickets and stop the ball that is coming past by the bat. So now finally Sanket decides to keep the stumps behind at the normal position, as the pace of Akshay is too much for him. Meanwhile, Akshay right arm over the stumps.
Oh my dear, what a connection from the legendary batsman. I would call him the all-rounder. What a strike as the ball was dropped in his zone. Goes out of the puck. So there is a saying, experience always counts, and this is where the experience is counting. 2 sixes from the bat of Dinesh so far. Another hit, and the result is going to be same. Consecutive sixes from the bat of Dinesh, taking the total to Virender Sehwag, that is double four. So there's a wonderful job done by the volunteers as the ball has been brought immediately from outside the playing area. So meanwhile, Sanket Moraskar to deliver the final over of the inning. So there is a cash prize for Dinesh Naik as well for hitting those beautiful sixes. A cash prize of 1,000 rupees by Sandesh Naik. Sandesh Kirkar, I beg your pardon. Otherwise, the sponsor will come to catch my neck as the wrong name has been spelled. Meanwhile, first delivery goes out of the guideline towards the offside. Wide is the signal. And that takes the total to 45. So cash prize of 1,000 rupees for Dinesh Naik by Sandesh Kirkar for his blasterous 2 monstrous sixes. Still 6 legal deliveries are remaining. Final over into the act. Short pitch delivery, and that's the meat on the grill for Amay. Guys, the ball over the fine legs for 4 runs. Total moves to 49, just a short of 50 mark. So final 5 legal deliveries. Amay on the striking end. Can Amay get at least a sixer in this over? That will be the thing from the dugout of CC boys. Swings the bat very hard, plays along the carpet. Meanwhile, the fielder at the mid wicket is quite alert. Patrols the fence, properly catches the ball. And that's a half century up for Panjim cricketers. Legends playing in this format, and they score 50. Now Dinesh on the striking end, and the swing continues, but only a drop in front of the mid-wicket fielder. Meanwhile, a single to settle. Chance of a second run as the odd bounce for the keeper Akshay Zogale. He is not having a good time. Definitely not Akshay's day. So couple of runs takes the total to 52. So good thing for Panjim cricketers that Dinesh Naik, Dinya is on the striking end. Handsome rocking Dinya. Change in pace, and what a hit. You can't bowl fuller to this guy. Handsome rocking Dinya strikes. 4th sixer in this inning. What a player. So right now, Dinesh Naik is the Mahakal on the wicket, striking those monstrous sixes. Team total moves to 58, and the cash prize that have been sponsored is one of the member of United. Ponjekar is none other than, is the owner of United Ponjekar. The corrections have been done by none other than our ever smiling Bhau. Another hit.
And the result is similar. Oh my God. What a legend that we are witnessing on this ground. So I think Sandesh Kirkar must be watching these another 2 6s. Maybe he have to put his hands in his pockets. Final delivery has been struck. Slight in front of the player. Meanwhile, a strong throw at the non-striker's end. Throw comes towards the striker end. And a run out. Nonetheless, he has done his job. Score moves to 65. And the target is of 66 runs in front of Gumteshwar Margaon. But what a legendary all-rounder. What a player has struck 5 sixes in this inning. Target is of 66 runs in 5 overs. But nonetheless, the team that is going to come to chase the target is one of the successful team as far as tennis ball cricket is concerned in Goa. Gumteshwar Margaon have won many trophies under their kitty, and they have been the most successful municipality team under the name Gumteshwar Margaon. So let's see whether they can do it one more time. 66 runs required, but nevertheless, Panjim cricketers are also having a very good bowling unit. I'm not going to take the names, but we have witnessed their bowling in the previous match. So let it be surprise. Let it be surprise for the batting team. Meanwhile, if we go through the stats, last 2 overs have considered 40 runs, as after completion of 3 overs score was 24. And at the end of the match, total is 65. So target is of 66 runs, and with the further details, over to Sumit, the voice of Bengal. थैंक यू सर। तो मुकाबला अगर देखा जाए तो 66 रन का टारगेट का पीछा करने के लिए घुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम की ओर से ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर, मतीन खान और उन्हीं के साथ राहुल मैदान के भीतर। एक अच्छा टारगेट सेट किया इस मुकाबले के दौरान, जो कि पंजाब क्रिकेटर्स ने बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी जो कि दिनेश नाइक इनकी ओर से
34 रन बनाए अपने निजी कोटे में और लाजवाब बल्लेबाजी, निश्चित तौर से सभी दर्शकों का मनोरंजन हुआ उस बल्लेबाजी से। और 65 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बने और टारगेट है 66 रन का। उस टारगेट का पीछा करने के लिए ओपनिंग जोड़ी, आक्रामक ढांचे की जोड़ी मैदान के भीतर मतीन और उन्हीं के साथ राहुल मैदान के भीतर। स्ट्राइक एंड के ऊपर मतीन दिखाई देते हुए और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर राहुल। निश्चित तौर से पहला पावर प्ले का ओवर डालने के लिए गेंदबाजी मोर्चे पर अगस्टन दिखाई देते हुए। एक महत्वपूर्ण मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान के भीतर निश्चित तौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बड़े टीमें, दिग्गज टीमें और ताकतवर टीमें हैं। पहली गेंद इस पहले ओवर की, बड़ा शॉट मतीन के बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकली सीधी सीमा रेखा के बाहर। पहले गेंद पर छक्के के साथ स्वागत गेंदबाज अगस्टन का। पहले गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत की इस दूसरे इनिंग की, क्योंकि पता है 66 रन का पीछा। इस बार बेहतरीन गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, गोल्डन स्पॉट पर गेंद गिरी। अगर देखा जाए तो बल्लेबाज ने इस गेंद को छोड़ दिया, अंपायर की ओर रुख मोड़ा, लेकिन अंपायर की निगाहें चौकन्नी। हर एक गेंद पर डॉट गेंद निकली बल्लेबाज मतीन को और डॉट गेंद के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 6 रन। इस बार बेहतरीन गेंद, यॉर्कर गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास ऑन साइड के रीजन में मतीन खान के तरफ से, लेकिन ये फिर एक बार डॉट गेंद निकले। पहली गेंद पर निश्चित तौर से छक्का निकला, लेकिन उसके बाद अगर देखे जाए तो दो गेंद सटीक लाइन और लेन के साथ अच्छी गेंदबाजी अगस्टन की तरफ से पहला पावर प्ले के ओवर के दौरान। फिर एक बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाली, अंपायर की ओर रुख मोड़ा, अंपायर की तरफ अपील हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो भरोसा कम इस अपील में। फिर एक बार डॉट गेंद निकली और लगातार की 3 गेंद डॉट निकलते हुए रन संख्या रुकी अब तक स्कोर बोर्ड के ऊपर 6 रन बिना कोई विकेट गंवाए। 66 रन के टारगेट का जवाब देते हुए जो कि घुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम। फुल टॉस गेंद, मौका दिया इस बार बल्लेबाज को और मौके पर जड़ा एक लंबा करारा छक्का डीप स्क्वायर के ऊपर से। रन के ऊपर स्कोर बोर्ड के ऊपर दिखाई देते हुए फुल टॉस गेंद, मौका दिया बल्लेबाज के लिए और उस पर एक बड़ा शॉट। इस बार खराब गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर का इशारा यस इट इज वाइड गेंद। फिर एक बार अतिरिक्त रन जुड़ेगा खाते में और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या 13 रन के ऊपर, 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। फुलर लेन की गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद निकली जो कि पॉइंट के रीजन में 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। आखिरी गेंद पर मिलेगा 1 रन बल्लेबाज मतीन को और 1 रन के साथ रन संख्या पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 14 रन बिना कोई विकेट गंवाए। तो एक बेहतरीन शुरुआत जो कि घुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम की तरफ से दिखाई देती हुई। चौदह रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 ओवर का खेल खत्म हुआ। आने वाले 4 ओवरों का खेल अभी भी जारी रहेगा मैदान के भीतर और गेंदबाजी पर बदलाव दिखाई देता हुआ। गेंदबाजी पर दूसरा ओवर लेकर दिनेश नायक इस बार दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर। निश्चित तौर से पहले इनिंग में जो लाजवाब बल्लेबाजी की थी, सभी दर्शकों का मन जीता था गेंदबाज इस बार दिनेश नायक ने, और वो इस बार गेंदबाजी मोर्चे पर दूसरा ओवर लेकर अपने टीम की ओर से और स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि एक बड़ा नाम मतीन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दिखाई देते हुए। इस बार अब ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड शॉट, मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकली आसमान को छूती ना छूती, 6 रन के लिए।
और रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 20 रन। फिर एक बार बड़ा शॉट, इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार की दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का बल्लेबाज मतीन के बल्ले से और छक्कों की बारिश मैदान के भीतर। थैंक यू डीजे। 26 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देते हुए 26 रन बिना कोई विकेट गवाए। बेहतरीन शुरुआत जो कि गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम की ओर से। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड के रीजन में, डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में इस गेंद को खेला, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, लेकिन तारीफ करनी होगी जो कि फील्डर की बेहतरीन गेंद पर आए और बैकअप किया, थ्रो किया। सिर्फ 1 रन इस गेंद पर निकला और स्कोर 1 रन के तहत रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक का 27 रन 27 रन। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई, स्ट्राइकिंग एंड पर आप नया बल्लेबाज जो कि साथी बल्लेबाज राहुल दिखाई देते हुए। सिक्स रन के जवाब में अब तक लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के भीतर, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी जो कि मतीन खान के बल्ले से दिखाई देते हुए। इस बार राहुल के बल्ले से एक आसमानी टोला, गेंद निकली जो कि काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। थैंक यू विजय। 33 रन स्कोर बोर्ड पर, 33 रन, 66 रन का जवाब, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी। एक ओवर से मतीन खान तो दूसरे ओवर से राहुल की तरफ से। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट टेम्पल का शॉट मिड विकेट पर, गेंद निकली वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। थैंक यू विजय। हर एक गेंद पर अगर देखा जाए तो अटैकिंग बल्लेबाजी, इनकाउंटर गेंदबाज के खिलाफ और 37 रन 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। दूसरा ओवर जारी है और दूसरे ओवर में अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन पार्टनरशिप, बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई मैदान के भीतर। इस बार बल्लेबाज को चकाया, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास मिड विकेट के रीजन में, लेकिन गेंद डॉट निकली। 2 ओवर का खेल इसी के साथ समाप्त हुआ। रन संख्या अगर देखी जाए स्कोरबोर्ड के ऊपर तो 18 रन के रन रेट के साथ अब तक 37 रन बिना कोई विकेट गवाए, 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आने वाले 3 ओवरों का खेल बचा हुआ है। 66 रन के टारगेट का जवाब देते हुए गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम अब तक ओपनिंग जोड़ी की तरफ से बेहतरीन साझेदारी। आने वाले 18 गेंदों पर इस टारगेट का पीछा किस तरह से किया जाए। So this is a power hitting by Mateen. Another strike and the result is the same. No chance for the fielder. Agustin who is training at the long on area and that the biggie score most of 43. Away to continue. Another delivery, similar strike, chance of a catch, and the catch has been taken as the first wicket back to the pavilion. So maybe Mateen want to have a look at the ball that has been struck. And it confirms that the ball, nothing wrong with the ball. So Mateen departs and Naresh Asoldiker walks with the willow to take the charge. Will be at the striker's end. As per the new rules that have been implemented, if the batsman is caught out, then the incoming batsman will be at the striker's end. So meanwhile, the damage has been done by Boom Boom Mateen. He has hit 5 sixes in his inning and a score of 32 from 11 deliveries that he have faced.
Chance of one more wicket. Can anyone take it? Fielder from the cow corner. Oh my dear. Has received the ball. Diving forward. Second wicket back to the pavilion. Consecutive wickets for Amay in the third over. So new man in is another promising youngster. Sanket. Decent try. Oh my dear, there was an definite attempt. But ball was racing. That was a strong strike. Good effort from the fielder. Definitely saved 4 runs for his side. So there is a prize for Ramesh. If he catches a catch with one hand, then he will get a cash prize of 1,000 rupees from Sports Center. So lot many prizes for the local side. Meanwhile, Rahul on the striking end. Another chance created. Can it be the third wicket? Definitely 3 wickets for Ame. What could have been a free gift. Full toss was offered, but ball taking the leading edge, travels miles in the air only to the keeper. So a wicket to end the third over. So now we are into the final moments. 2 overs remaining. 20 runs to get. And 3 wickets back to the pavilion. New man in is the foreign written guy. Angelo Fernandez was abroad for almost 15 years. Before that, he has made a name for himself in the tennis ball cricket. That's why he is promoted up the order in the champion side. Meanwhile, Sanket on to the striking end. And the bowler, Sunil, man of the match of the previous encounter. Can he deliver something out of the box as Sanket Moraskar on to the striking end? This is going to be even a better contest. Game is poised at a crucial juncture. There's a wonderful strike straight to the fielder. Dives, throws it towards the striking end. Oh my dear. There would have been mishap if the throw would have been at the right spot. Paresh, the fielder. Age doesn't matter. I would say the youngster has stopped the ball at the point area. So now Angelo onto the striking end. More 19 runs required. 11 deliveries, 19 runs to get. Is it going to be another 6 or is it going to be a dot ball? All the hearts are almost reaching in the mouth of the spectators. Definite strike, chance of a catch, and a chance for Ramesh. Oh my dear, he has dropped, but a wonderful effort. Good throw at the non-striker's end, and the catch has been dropped. Definitely, he must be thinking whether to take it with one hand and get the 1,000 rupees, or to take with 2 hands and let's forget about the money. In that thought, the catch has been dropped. Nevertheless, 2 runs, score most of 49. 17 more runs required. Angelo survives.
Lower full toss has been hammered. Fielder under the ball. Ame could not stop. And the missed chance has been vital for Gumteshwar. Sixer from the bat of foreign return Angelo Fernandez. Thank you, DJ. And let me tell you something about Angelo after this delivery. Meanwhile, beautiful sixer from his bat. Short pitch delivery, swings the bat very hard, connects the ball only towards the long on for a single. Nonetheless, 56 is the total. 10 runs more required. So Angelo was playing CPL. He was playing in the semi-finals. 28 runs required from 10 deliveries and he has hit 5 consecutive sixes. So such is the capacity of this guy. Meanwhile, Sanket on to the striking end. So let's see what Sanket can do. Sunil, the guy with the ball. Short pitch delivery connects. Dinesh under the ball. Watches the ball sailing past him. Sixer from the bat of Sanket Morasgar as the breeze has stopped. Now even the chance for left-handed batsmen to cut loose. Thank you, DJ. Just 4 runs required. And this is what champion team is all about. They also have the big guns that fires at the right moment. Sanket Morasgar, 4 runs required. Wanted to hit the ball through the covers, no connection. Allows the ball to travel safely to the keeper. Slight fumble, equally well backed up by the fielder at the short fine leg. Thank you, DJ. Meanwhile, requesting the captain of CC Boys to be ready with your team as you are going to play quarterfinals against the winners. And let's see who becomes the winners. 4 runs required from 6 legal deliveries. Similar was the situation in the previous encounter that ended into a super over. Whether the history is going to repeat, the time will tell us. 4 runs required. Angelo on to the striking end. But the only thing is, this is a different team. That was a team full of youngsters, and here, champion team playing against Panjim cricketers. 4 runs required. Angelo on striking end. Mandar, the bowler. I beg your pardon, Manohar, the bowler. Left arm, lovely delivery. Good fielding. Slight fumble that allowed both the batsmen to take a single. Meanwhile, Angelo running for the second. And a sacrifice. This is not required. As a set batsman is also on the other side. But a mistake has been committed. Now you can't correct. There is no eraser, neither correction pen on the field. Meanwhile, Angelo back to the pavilion. 1 more wicket. Back to the dugout. So new man in is Akshay Zogre. There is a saying by one of the soft drink company. दिखाओ पे मत जाओ अपनी अकल लगाओ. He is also of the similar stature. Looks to be very skinny, but can hit the ball quite comfortably out of the park. So far, 3 runs required, but he is a very clever batsman. Knows of what is the requirement at this moment.
and also plays control cricket at numerous occasions. So perfect batsman to come. Switch it is the attempt. Ball goes as a dot ball. 4 deliveries, 3 runs to get. Akshay Zogle on the striking end. Is it going to be a super over? Can Manohar do it this time for his side? Came down to track, strikes the ball in the vacant area. Fielder running to stop the ball. Won't be able to stop, and that's a wonderful strike to finish off this match. Congratulations, Gumteshwar Margaon. For your wonderful batting, 5 sixes in the inning by the legendary player Dinesh Naik. So now the final match of the day.
match between the two promising teams. One a champion team and a second a well-known team from Panjim area. Margao Municipality versus Panjim Municipality, and they are playing with the name Gumteshwar Margao and Sissy Boys from Panjim. Thank you, DJ. So team meeting is on. We can see two hurdles on the ground. Gumteshwar Margao has won the toss. And elected to field first. So a challenge has been put in front of CC Boys as to set the target. Let's see what is going to happen out in the middle. Meanwhile, over to Sumit Karsekar, all the way from Vengulla with his sweet voice for the first half of the first innings. Special prize for scoring 34 runs in 11 balls, inclusive 5 sixes in the innings against quality Gumteshwar Madgaon bowling. हा सारखे ना आता किती आणि 2 वर्ष उरले ना मग याद करून घ्या आमका सागरा चांगला आहे मागीर हे सगळे अंडे घातल्या आम्ही टेक ओव्हर करून घ्या आमका फक्त किती सुप्रीमो एक करून घ्या AB 25 एक दीस आम्ही म्हणजे पळय आम्ही आता बायलांक हांगा हाडटा न्हू आम्ही थंय वचूंक जाय एक दीस हा तेन्ना अचिवमेंट न्हू हा पैशाचे टेन्शन ना म्हणपाय तुका जाय ती आम्ही फक्त आमचे AB 25 दिसपा जाय अभिषेक शर्मा कोण रे IPLचा कमेंटेटर समोर गोवा प्रीमियर लीग पहिला चेंडू ऑन साइडला फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये सचिन बंगारीच्या बॅट मधून पाहायला मिळतो. पहिली धाव वेगात गतीने, परंतु पाहिले गेले तर चेंडूचा प्रवास हा सीमारेषा उल्लंघन करत असताना पहिल्या चेंडूवरती चौकार फलंदाज सचिन बंगारी याच्या बॅट मधून. महत्वपूर्ण सामना दोन्ही दिग्गज संघादरम्यान, दोन्ही रणधुरंदर क्रिकेट संघादरम्यान क्वार्टर फायनलचा सामना, आणि या सामन्यात नक्कीच दोन्ही क्रिकेट संघांना हार मात्र नक्कीच नाही मानायची असेल. गोलंदाजी मार्गावर गुरुशांत हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. पहिलं षटक फेकण्यासाठी घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाकडून, आणि सलामीची जोडी नील आणि सचिन बंगारे. अप्रतिम चेंडू, खोलवर टप्प्याचा यॉर्कर चेंडू, कौतुक करावं लागेल विकेट किपरचं देखील सुंदर क्षेत्ररक्षण यष्ट्यांच्या मागे पाहायला मिळालं. एक अप्रतिम चेंडू आणि त्याचबरोबर सुंदर क्षेत्ररक्षण. पहिल्या चेंडूवरती नक्कीच फुलटॉस चेंडू, त्यावरती चौकार, परंतु त्यानंतर अप्रतिम गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावरती यॉर्कर चेंडू, आणि मात्र काहीसा फलंदाजांना निशब्द करणारा चेंडू हा गोलंदाज गुरुशंत याचा पाहायला मिळतोय. सुंदर फटका यावेळेस डीप लॉंग ऑफला, आणि चेंडू मात्र निघतोय सीमारेषा उल्लंघन करत असताना 4 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा चौकार सचिन बंगारी याच्या बॅट मधून, आणि सांघिक धावफलक 8 रन स्कोर बोर्ड वरती. 8 धावा या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. फुलर लेनचा चेंडू कव्हरला हलक्या हाताने फटका खेळला जातोय. स्वतः गोलंदाजचा चेंडू पाशी पोहोचतोय. परतीची फेकी यष्ट्यांवरती केली गेली, परंतु जोपर्यंत डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक बॅकअप करतो तोपर्यंत एकच धाव या चेंडूवरती मिळते, आणि एक या धावसुकीने सांघिक धावफलक हे 9 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचतोय. महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक फेकत असताना गोलंदाजी मार्गवर गुरुशंत हा गोलंदाज पाहायला मिळतो घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाकडून. आतापर्यंत जर पाहायला गेलं तर अचूक टप्प्यावरती धारदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली, परंतु दुसऱ्या बाजूने पाहायला गेलं तर सचिन बंगारी याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 चौकार हे मैदानात पाहायला मिळत आहेत. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, कव्हरला एक सुंदर फटका खेळला जातोय फलंदाज नीलच्या बॅटमधून, परंतु एकच धाव्या चेंडूवरती एक अप्रतिम चेंडू, त्यावरती मात्र नेत्रदीपक चौकार, परंतु 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक डबल फिगर 10 या धावसंख्येवरती.
महत्वपूर्ण सामना दोन्ही क्रिकेट संघासाठी, कारण या सामन्यात जो विजेता क्रिकेट संघ ठरेल तो चौथा सेमीफायनलिस्ट असेल आजच्या दिवसातील. सुंदर फटका ऑन साइडला मिड विकेट क्षेत्रात नो मॅन्स लँड मध्ये शर्तीचे प्रयत्न अप्रतिम पाहायला मिळाले आणि परतीची फेक होईल. नक्कीच संधी होती रन आउट करण्याची, परंतु पैकी काहीशी मात्र उशिराने मैदानात पाहायला मिळाले. 2 धावा आणि या 2 धावेने सांघिक धावफलक पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 12 धावा या धावफलकावरती. टॉस स्पिन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय हा घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाचा आपण पाहतोय आणि मात्र 12 धावा या धावफलकावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावरती 12 धावा बिनबाद सलामीची जोडीकडून भागीदारी आपणास पाहायला मिळते मैदानात ते सीसी बॉयज पंजाब क्रिकेट संघाकडून. टॉस विन झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाचा आतापर्यंत तर योग्य साबित ठरवला जातो, कारण प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना आक्रमक फटकेपासून रोखून ठेवलंय. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा ऑन द राईज फटका खेळला जातो. डेप लॉंग ऑनच्या रिझन मध्ये एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केली जाईल, कारण डेप मध्ये प्रोटेक्शन पाहायला मिळालं आणि जोपर्यंत परतीची फेकी झाली तोपर्यंत एक धाव सहजरित्या निघताना पाहायला मिळते फलंदाज नील याच्या बॅट मधून. दुसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर अक्षय हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. अप्रतिम चेंडू यॉर्कर चेंडू, गोलंदाजचं जे ब्रह्मास्त्र संबोधलं जातं त्याचा ऐन मोक्याच्या क्षणी वापर केला जातो. फलंदाजाला निशब्द करणारा चेंडू, परंतु एक धाव सहजरित्या पूर्ण केली गेली. चांगल्या चेंडूला सन्मान देणे खूप महत्वाचं असताना ही तीच मात्र फलंदाजची. यावेळी जर पाहिलं गेलं तर एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक 14 रन 14 रन स्कोर बोर्डवरती आतापर्यंत पाहायला मिळत आहे. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. येणाऱ्या काळात चांगल्या चेंडूला सन्मान देणे खूप महत्वाचं, खराब चेंडूवरती मोठे फटकेबाजी करणे हे देखील खूप महत्वाचं मैदान असेल आणि त्या रणनीतीनेच मात्र आतापर्यंत फलंदाजी ही मैदानात नील आणि त्याच्या साथीला सचिन बंगारी या फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आजचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा संध्याकाळच्या सत्रातील महत्वपूर्ण क्वार्टर फायनलचा सामना जो निश्चित करेल चौथा सेमीफायनलिस्ट कोणता क्रिकेट संघ असेल. आतापर्यंत 3 संघ हे सेमीफायनल मध्ये पोहोचत आहेत आणि चौथा संघ हा कोणता असेल. फुलटॉस चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्हने समोरच्या दिशेने फटका खेळाय डीप लॉंग ऑनला. चेंडू दुसरा 1 बाउन्स सीमारेषा उल्लेखन करत असताना चौकारासाठी निघतोय. फलक 18 धावा. फुलटॉस चेंडू संधी दिली फलंदाजासाठी आणि त्या संधीचं सोडं करत असताना अप्रतिम फटका समोरच्या दिशेने डीप लॉंग ऑनला. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू ताकदवर फटका, परंतु यावेळेस ताकद अपुरी पडली आणि चेंडू डीप लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. पहिला धक्का बसतो सीसी बॉयज पंजीम क्रिकेट संघाला. सांघिक धावफलक 18 या धावसंख्येवरती. थँक्यू डीजे हरेश. पहिला सफलता संघासाठी गुप्तेश्वर मडगाव क्रिकेट संघासाठी गोलंदाज अक्षय मिळवून देतोय. फलंदाज नील हा माघारी परतोय. लो फुलटॉस चेंडू संधी होती का मोठा फटका खेळायची, परंतु काहीशी ताकद अपुरी पडली आणि डीप लॉंगला एक अप्रतिम झेल पकडले गेले. यावेळी पाहिलं गेलं तर चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू बराचसा बाहेर निघणारा चेंडू. पंचांचा इशारा स्पेस चेंडूचा. क्रिकेटच्या परिभाषेत ज्या चेंडूला पंजाब टू हरियाणा असं संबोधलं गेलं, काहीसा अतिरिक्त धावा खर्च करणारा चेंडू, सांघिक धावसंख्येला मात्र बढती देणारा चेंडू पाहायला मिळतोय मैदानात.
पुन्हा एकदा त्याच लाईन आणि लेंथ वरती गोलंदाजी अक्षय याची काहीशा अतिरिक्त धावा बोनस स्वरूपात प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ सीसी बॉयज पंजाब क्रिकेट संघाला मात्र बहाल केल्या जात आहेत आणि आतापर्यंत धावफलक पाहायला गेलं तर 20 धावा या धावफलकावरती एक गडी बाद झाल्यानंतर. आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु पंचांचा इशारा. स्वे चेंडूचा सलगचा तिसरा स्वे चेंडू आणि मात्र स्वे चेंडूंची हॅट्रिक मैदानात अक्षय याने साधली गेली. सांघिक धावफलक 21 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे मैदानात आणि 21 या धावसंख्येवरती एक फलंदाज माघारी परतला आतापर्यंत. स्ट्रायकिंग एंडवरती राजेश गोसावी हा फलंदाज सज्ज होतोय. यावेळी सुंदर चेंडू. चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी. थोडंसं गती परिवर्तन केलं होतं फलंदाजाने. पाहिलं गेलं तर कव्हरला फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु निर्धाव चेंडूची समाप्ती बऱ्याच वेळानंतर आमच्या गुणतालिकेत केली गेली. 21 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. हलक्या हाताने स्टेअर करण्याचा प्रयत्न. विकेट किपर बीड होतो. वेगवान गतीचा चेंडू गोलंदाज अक्षयाचा पाहायला मिळतोय. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. शेवटचे अंतिम 2 चेंडू निर्धाव निघाले. काहीशा अतिरिक्त धावा खर्च केल्यानंतर गोलंदाज अक्षय याच्या माध्यमातून आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 धावा एक गडी बाद होत असताना 21 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. कंप्लीट 2 ओव्हर. थँक्यू डीजे. गोलंदाजी मार्क वरती बदलाव पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक घेऊन वरद हा गोलंदाज स्क्रीन वरती पाहायला मिळतोय. संध्याकाळचं सत्र थोडंसं प्रकाश देखील हळूहळू कमी होईल मैदानात त्यामुळे वेळेचा अभाव कमी असल्यामुळे लवकर सामना सुरू होणं खूप महत्वाचं. शॉर्ट चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न फलंदाज सचिन बंगारी याचा परंतु हा प्रयत्न काहीसा निरर्थक ठरतोय. अप्रतिम चेंडूने सुरुवात तिसऱ्या षटकाची. पहिला चेंडू निर्धाव गोलंदाज वरद याचा मैदानात पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची इंदुक्षी कट. शॉट थर्ड मॅनला चेंडूचा प्रवास आणि जोपर्यंत फेकी झाली तोपर्यंत वेगात गतीने एक धाव पूर्ण केली गेली. सुंदर कॉलिंग आणि सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. महत्वपूर्ण एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक नेल्सन फिगर मॅजिकल फिगर 22 या आकड्यावरती एक गडी बाद झाल्यानंतर मागच्या सामन्यात वरद्याची अप्रतिम गोलंदाजी फक्त 2 धावा खर्च करत असताना एक सफलता प्राप्त केली होती आणि त्याच लयमध्ये गोलंदाजी आतापर्यंत मैदानात पाहायला मिळते कारण पहिला चेंडू निर्धाव निघलाय आणि त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती सिंगल मैदानात कंप्लीट केली. खराब चेंडू. बेमार चेंडू. ताकदवर फटका. राजेश गोसावी याचा नोचा इशारा पंचांचा आमच्या कमेंट्री बॉक्स मध्ये परंतु चेंडूला भिरकावून दिले. डेप स्क्वेअर लेगच्या वरून दूरवरचा षटकार. गोलंदाजाला निशब्द करणारा कमबॅक काय असतं याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानात वरद या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडूने सांघिक धावफलकाला स्थिरावले लावणारे गोलंदाजी या तिसऱ्या षटकादरम्यान. 29 रन स्कोरबोर्ड वरती. फुल टॉस चेंडू. सुंदर फटका. ताकदवर फटका. डीप फाईन लेगच्या वरून कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चेंडू सरा सीमारेषच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. एक गडी बाद झाल्यानंतर वरद्याचं षटक काहीसं महागड्या पाहायला मिळतंय. मिनी हेलिकॉप्टर फटका डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव तर सहजरित्या वेगात गतीने पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेकडे पावले वळले आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होईल तोपर्यंत 2 धावा मैदानात पूर्ण होत आहेत. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजामध्ये कॉलिंग सुंदर पद्धतीने पाहायला मिळाला आणि महत्वपूर्ण या 2 धावेने सांघिक धावफलक 37 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. 37 धावा एक गडी बाद होत असताना तिसऱ्या षटक काहीच महागड्या पाहायला मिळते वरद्याचं कारण आतापर्यंत 2 षटकार राजेश गोसावी याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात. सुंदर चेंडू. अप्रतिम चेंडू. फलंदाजाला काहीसा मात्र प्रश्नचिन्हामध्ये पाडणारा चेंडू पाहायला मिळतो. इनसाइड आउट फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु हा फटका काहीसा
प्रयत्न काहीसा अपुरा ठरतोय. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. सांघिक धावफलक 37 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. 37 धावा, 1 गडी बाद होत असताना येणाऱ्या 12 चेंडूंचा म्हणजे 2 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी राहिलाय आणि मैदानात विस्फोटक आक्रमक जोडी सचिन बंगारी त्याच्या साथीला राजेश गोसावी ही जोडी मैदानात पाहायला मिळते. येणाऱ्या 12 चेंडूवरती नक्कीच प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजावरती अटॅक केला जाईल. येणाऱ्या 12 चेंडूवरती काय घडतंय काय बिघडते पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये चेंज. पुन्हा एकदा आमच्यासोबत जोडले जातील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सागर सर हे मायक्रोफोनवरती. The sweet wine with the ball, and he takes a wicket on the very first delivery. Dangerous looking batsman Sachin Bangari back to the pavilion in the 4th over. Naresh Asoldekar striking on the very first delivery. That a prison is made of gold, and the Predator right now with the ball, inviting the batsman to go for that maximum sixes, as the prison is the boundary rope, and the catch has been taken on the very first delivery. So target has been hit. Let's see what is going to happen as the monster is hitting sixes. Batsman on the strike, Sahil. Very first delivery strike. There's a fielder in act. And a consecutive wicket for Naresh Asoldekar. Knows what are the capacities of the batsman. Delivering in the right zone. Second wicket for the big guy. So there were continuous 2 men of the match for Sahil, but could not do much. Nonetheless, score is held at 37. 2 deliveries have been bowled, 2 wickets to the most experienced player right now on the ground. Naresh Asoldekar with the ball have taken 2 wickets. Right now the new man in, Amit on the striking end. Is it going to be a hat-trick? Switch hit attempted. There is a appeal. Slight fumble by Sanket. Looks to be there was a chance of a hat-trick. The way Angelo reacted, as well as even there was a bit of reaction by Naresh as well. Nonetheless, if it was an aged and lucky factor for Amit. Right now, Rajesh on the striking end. Rajesh connects. Fielder slight fumble. Meanwhile, 2 is the call. Running very hard for the second run. Another fumble. No harm done. Couple of runs pushes the total to 40. So Rajesh on to the striking end. Couple of deliveries remaining in this second last over. Can Rajesh get at least a boundary? That will be hope of the dugout, but Naresh is a shrewd bowler. Lovely delivery. Lower full toss, equally well played towards the deep covers for another single. That takes the total to 41. Now that brings Amit on the striking end. Final delivery of Naresh is over. Another hit. No chance for any player as ball races on to cross the fence. Boundary on the final delivery of the 4th over. After completion of 4, score moves to 45 for the loss of 3 wickets.
So DJ Harish playing some of the retro tracks, a light moment for Bhau as well as our official team, enjoying the sweet music played by Harish. So let's go on to the ground. Final over of the inning and the foreign return. The Visa Pro, Angelo with the ball. Right arm over the stumps. First delivery has been hit along the carpet. Couple of bounces, 3 bounces to reach to the cow corner area. Fielder very quick. Fields the ball way inside the boundary rope and a single. Total moves to 46. That brings Amit on to the striking end. Good delivery, equally well played. A hint of helicopter. Ball racing towards the long off area. Good fielding by Akshay Zogre. Very much alert, and what a throw straight to the bowler. Second single in the final over. Score posted to 47. 4 legal deliveries remaining. And Rajesh Gosavi on the striking end. Low full toss, change in pace. Well played, ball bounces much above the head of the fielder. And that ball traveled the distance, 1 bounce across the fence. 50 up for CC boys, 51 on the board. Final 3 legal deliveries remaining. 51 on the board. Rajesh Gosavi on the striking end, Angelo the bowler. Short pitch delivery, raise off the arm by the leg umpire. We have to check for what it is. And meanwhile, a strong strike takes the ball out of the orbit. Sixer to take the total to 58. 6 plus 1, 7 runs to the total. Thank you, DJ. That was for chucking. That's what the message is conveyed. And a free hit. 3 legal deliveries are remaining yet in this final over. And a cherry on the cake for Rajesh Gosavi. Free hit. But this time bowler is different. Sanket Moraskar with the ball. 3 deliveries to go. Free hit is on. Free hit of delivery equally well. Bowled right into the block hole. They are running for the second. Chance of a run out. Misfortune for Rajesh Gosavi. Free hit turns to be in favoring for Gumteshwar Margaon. A single and a wicket in form of run out. Total moves to 59. So now new man in is Pritesh with jersey number 22. But the right person is on the striking end, I must say, Amit. He is also capable of hitting the biggies. A word by Pritesh to Amit as only 2 legal deliveries remaining in this first inning in the final over. Sanket Moraskar as cool as cucumber with the ball in his hand. Lovely delivery, equally well played. Hint of helicopter, not getting the elevation, not getting the connection. Ball travels safely towards the wideish gully. Well, Varad stops the ball. And with that score moves to 60. Now Pritesh on the striking end. Let's see whether Pritesh does for his team. Low full toss, oh my dear. Big guy, strong willow, and a swing takes the troll. Ball goes out of the boundary rope. Sixer to finish on a very high note. Total 66 and the target is of 67 runs. Right now DJ busy finding some good tracks. And finally
the sponsors for this tournament. The main sponsors for this tournament are none other than the Minister for Labour, Antencio Montserrat. We call him Babush with love. A big thank you to the Minister for donating the prizes for this tournament. Along with him, his better half, Mrs. Jennifer Montserrat, the MLA of Taligav constituency. Along with them, the helping hand, Ashwini Cafe, Satiri Fast Food, Popular Washing Center, have donated all the Man of the Match trophies. A big thank you to Asmita Sandesh Kerkar, Zen Beverages, Coca-Cola Limited, Munir Bellur, Anand Wines, and Predator Energy Drink. So these are the sponsors who have made this tournament to happen on this very ground. Meanwhile, run chase is on, and over to Sumit, all the way from our neighboring state. Over to Sumit. मुकाबला मैदान के भीतर 67 रन का टारगेट और उस टारगेट का पीछा करने के लिए घुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम की ओर से ओपनिंग जोड़ी मैदान के भीतर स्ट्राइक एंड के ऊपर मतीन खान और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर राहुल ये बल्लेबाज दिखाई देता हुआ। गेंदबाजी मोर्चे पर अगर देखा जाए तो विवेक का पहला ओवर लेकर, जो कि पावर प्ले का पहला ओवर लेकर पहले गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास अक्रॉस द लाइन ऑन साइड के रीजन में, लेकिन यह प्रयास अगर देखा जाए तो असफल रहा। एक बेहतरीन गेंद विवेक के द्वारा दिखाई देते हुए 67 रन का टारगेट का पीछा, एक बड़ा टारगेट सामने, दो बड़ी टीमें, दिग्गज टीमें इस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के दौरान इस दो टीमों के बीच में यह मुकाबला होता हुआ। पहले इनिंग में बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी जो कि सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम की ओर से देखने को मिले। 5 ओवर में 66 रन बनाए और 67 रन का टारगेट सामने वाले घुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम के सामने, और उस टारगेट का पीछा करने के लिए दो आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज मैदान के भीतर। पिछले मुकाबले में भी अगर देखा जाए तो बड़ा टारगेट था, उस टारगेट का पीछा करने के लिए ओपनिंग जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत कर दी थी जो कि घुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम के लिए। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला ऑन साइड की तरफ, मिड ऑन के फील्डर जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन बना। निश्चित तौर से डेंजर एंड पर भाग रहे थे जो कि बल्लेबाज मतीन खान, लेकिन आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया और 1 रन के साथ टीम का अकाउंट ओपन होता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 67 रन के जवाब में। महत्वपूर्ण पावर प्ले का ओवर गेंदबाजी मोर्चे पर अगर देखा जाए तो विवेक का दिखाई देते हुए पहली गेंद बेहतरीन डाली, डॉट गेंद निकली, लेकिन दूसरी गेंद पर 1 रन निकला और स्ट्राइक रोटेट होते हुए स्ट्राइक एंड पर अब राहुल ये बल्लेबाज दिखाई देता हुआ। इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड की तरफ, काउ कॉर्नर का फील्डर इस बार गेंद कैच के नीचे और एक बेहतरीन कैच पकड़ा। पहले विकेट जो कि गिरता हुआ घुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम का। थैंक यू डीजे। तो पहले विकेट का हुआ पतन, गोल्डन डक के शिकार बनेगा बल्लेबाज जो कि राहुल। एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन एक बेहतरीन कैच जो कि काउ कॉर्नर की तरफ से फील्डर ने बेहतरीन दौड़ लगाए और कैच को लपका। निगाहें चौक करने रखी गेंद पर और बेहतरीन पकड़ मजबूत किया इस कैच पर। पहली सफलता हासिल की गेंदबाज विवेक ने अपने टीम के लिए, जो कि स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो अब 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नया बल्लेबाज जो कि संकेत अब मैदान के भीतर घुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम की ओर से 1 डाउन बैट्समैन मतीन खान का साथ देने के लिए। निश्चित तौर से ये जोड़ी काफी समय तक मैदान पर टिकी, तो निश्चित तौर से इस टारगेट का पीछा आसानी के साथ किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज, क्षमता है, ताकत है दोनों बल्लेबाजों की तरफ। और आज महत्वपूर्ण मुकाबला जो कि क्वार्टर फाइनल का तय करेगा सेमीफाइनल में कौन सी चौथी टीम जाएगी, घुमटेश्वर मड़गांव टीम होगी या सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम।
इस बार जड़ में गेंद डाली ऑन साइड की तरफ, इस गेंद को खेला हल्के हाथ से, जब तक मिड ऑन पर फील्ड होता तब तक एक रन आसानी के साथ बना इस गेंद पर, और एक रन के साथ रण संख्या जो कि परावर्तित हुई स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक बेहतरीन ओवर गट्टा हुआ जो कि पहला पावर प्ले का विवेक द्वारा एक सफलता हासिल की, और अब तक बड़े शॉट खेलने से रोक रखा है। आने वाले अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पहले ओवर का। इस बार हल्के हाथ से स्कूप किया इस गेंद को डीप फाइनल के रीजन में, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, जब तक फील्डर पहुंचेंगे तब तक इस बार बीट किया फील्डर को और गेंद निकली डीप फाइनल के सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एक बेहतरीन चौका, नजाकत भरा चौका, निश्चित तौर से किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज मतीन खान का। एक चौका निकला मतीन खान के बल्ले से और चौके के साथ रण संख्या 6 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का कुछ हद तक रनों को रोक रखा था, लेकिन इस बार एक चौके के साथ राहत की सांस ली होगी जो कि गुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम ने। 6 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास सफल हुए थे, ऑफ स्टंप की तरफ ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। पहला ओवर जो कि खत्म हुआ, सिर्फ 6 रन दिए और एक सफलता हासिल की। एक बेहतरीन गेंदबाजी सटीक लाइन और लेन के तहत सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम की तरफ से जो कि विवेक द्वारा दिखाई दी। लेकिन तेज तरार गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाके रुकी बगैर किसी रन से और बगैर किसी नुकसान के तहत। अच्छी लाइन और लेन के साथ अब तक गेंदबाजी जो कि साहिल द्वारा दिखाई दी और पिछले 2 मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच के दावेदार रहे, जो कि इस बार गेंदबाजी मोर्चे पर जो कि साहिल दिखाई देते हुए। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, एक ताकतवर शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकली आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। 6 रन के साथ रण संख्या 12 रन के ऊपर। अगर भरोसा खुद पर रखा जाए तो वो अपनी ताकत बनती है और वही भरोसा दूसरे पर सामने वाले पर रखो जाए तो वो अपनी कमजोरी बनती है। इस बार बेहतरीन गेंद, हल्के हाथ से स्टीयर करना चाहते थे लेकिन स्लिप की दिशा में बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली। डॉट गेंद निकली स्कोर बोर्ड के ऊपर, डॉट गेंद के साथ रण संख्या रुकी 12 रन के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए 55 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले के दौरान, जो कि गुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम को और 2 बड़े नाम, बड़े बल्लेबाज मैदान के भीतर, संकेत और मतीन खान। इस बार स्लॉग स्वीप का एक बेहतरीन शॉट मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, एक गेंद तेरी तो एक गेंद मेरी। इस बार अगर देखा जाए तो अब तक 2 छक्के लगे इस ओवर में और 2 गेंद डॉट निकली बल्लेबाज संकेत को। 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी, लगभग 4 गेंद का खेल खत्म होता हुआ।
67 रन के टारगेट का पीछा इस मुकाबले के दौरान महत्वपूर्ण हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के भीतर क्वार्टर फाइनल का। शॉट गेंद, शॉट एंड पुल का शॉट, फिर एक बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकली, स्टैंड ऑन डिलीवर, सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो इस ओवर में 2 छक्के लगे 2 गेंदों पर और अब तक 3 छक्के इस ओवर में। स्कोर बोर्ड पर अगर देखा जाए तो 24 रन 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब बल्लेबाजी, आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान के भीतर संकेत द्वारा दिखाई देती हुई। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, सफल होकर इस गेंद को खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे के लिए पलटेंगे या नहीं, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ 1 रन पर खामोश रखा, दूसरे रन की तमाम शंका को समाप्त किया। 2 ओवर का खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 67 रन का पीछा। अब तक 2 ओवर के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 ओवरों का खेल बचा हुआ है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। किस तरह से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि 2 आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज मैदान के भीतर, संकेत और उसी के साथ मतीन खानिया मैदान पर यह जोड़ी दिखाई देते हुए। लेकिन दूसरी ओर से किस तरह से गेंदबाजी होगी, जो कि सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम की तरफ से इस टारगेट का पीछा किस तरह से किया जाएगा, ये बताने के लिए फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में चेंज हमारे साथी कमेंटेटर जो कि सागर सर जुड़ते हुए माइक्रोफोन पर। और आज के दिन के लिए मैं सुमेध कासेकर सभी दर्शकों की रजा लेता हूँ, रुकता हूँ, धन्यवाद। Thank you, Sumit. And we are into the crucial juncture. After 2 overs, score is 25. 67 is the target. Arjun, the mystery bowler, has been introduced as a left-handed batsman on the striking end. Left arm bowler has been introduced. Let's see what is going to happen out in the middle. Left arm over, right, the left arm round the stumps. First delivery, ball takes the leading edge, travels safely towards the short third man. Sahil gathers the ball quite comfortably. Arjun starts with a dot ball. So mystery bowler has been introduced to keep the run rate ticking at a halt. So whether this is going to be a scenario or the confident looking batsman is not going to spare anyone, time will tell us. Arjun left arm round to Sanket Moraskar. Wanted to cut the ball, was asking whether the ball has gone past the guideline, but it is a shrewd delivery right inside the guideline. Consecutive 2 dot balls bowled by Arjun. 25 is the score at the moment. 42 more runs required. And now we can see even there's a change in the field placement as there is a huge gap between cover point and the gully fielder. So now the correction is done. Again a good delivery, but way outside the off stump. Equally well judged by Sanket Moraskar. Leaves the ball to travel to the keeper. Wide takes the total to 25. 26, I beg your pardon. 41 runs required. Strong strike. Whether it is going to be a 6. A beautiful catch taken at the boundary rope. Maybe the ball has hit the lower half of the bat. That's why it could not travel the distance. And that wicket goes down at the score of 26.
So Arjun providing the much needed breakthrough for CC boys. But Gumteshwar is a very good batting unit. Their 11th man also is capable of hitting the ball out of the park. So as a one batsman departs, another dangerous batsman on to the crease. Mystery bowler working for CC boys. So far 3 dot balls as a 2 dot balls and a wicket. And only run that have been considered in form of wide. 26 for the loss of 2 wickets. Short pitch delivery, what a strong hit. You can't afford to bowl short ball to this big guy. He has enough power in his shoulder and the forearms to dispatch the ball quite comfortably out of the arena. That is a beautiful strike from Naresh Asoldekar to take the total to 32. Another good delivery. There's a strong strike with the horizontal bat. Big guy Sachin Bangari waits, gives opportunity to his fellow mate to throw the ball. A single takes the total to 33. More 2 overs to be bowled after this over. Final delivery of the 3rd over. Boom Boom Matin onto the striking end. And it's none other than mystery bowler Arjun to deliver. So Matin taking his time before he retains the strike. Switch hit was the attempt, but no shot offered. Wide is the signal from the umpire. Even the batsmen have shuffled, but no shot was offered. Wide takes the total to 34. Swings the bat very hard, well capped by Neil. Quicker delivery. A hint of leg cutter as the roll of fingers at the very last moment. A mixed over concluded after completion of 3. Score is 34 for the loss of 2 wickets. So let's see, 2 overs remaining and 33 runs to get. Fired. So this over is going to be very, very crucial for both the teams. And the man at the occasion, Naresh Asoldekar on the striking end. First delivery right on the money. Ball takes the leading edge of the bat, travels to the keeper. So Rohit in fact starts with a dot ball. Bowling right arm round to the big guy. Aiming the legs of Naresh Asoldekar. The tackle is on. Another good delivery onto the back foot. Strikes the ball. A bounce to reach to the fielder. Good work by the fielder from the cow corner area. Stops the ball. None other than Naren. Another single that brings Boom Boom Matin on the striking end. In the previous encounter, Matin was man of the match for his monstrous 5 sixes. So far he is quiet. Let's see what he can do now. Rohit to deliver. Good delivery, wanted to pull the ball, not getting the elevation, chance of a run out. Throw at the non-striker's end away from Rohit. That allows Matin to reach safely inside the popping crease at the non-striker's end. And a single in form of leg by takes the total to 36. 3 deliveries remaining in the second last over. Naresh swings the bat, chance of a catch. Rohit gives the call and takes the catch safely. Fall of the 3rd wicket, and what a wicket to get. Naresh Asoldekar back to the pavilion.
So now Angelo taking the responsibility has been promoted after the departure of Naresh. He is also capable of hitting biggies. Similar sort of score is remaining to get. 31 runs required. Angelo has been in the similar situation in the recent past. Lovely strike. Flicks the ball off the pads. Wonderful effort, but won't be able to stop the ball from crossing the fence. Boundary on the very first delivery. Good delivery. Bowler can't do much rather than watching and appreciating the strike from Angelo. Lovely flick, strong wrist, takes the ball. One bounce out of the boundary rope and team total moves to 40. 27 more required from here on. Final delivery in the second last over. Whether this is going to be a boundary, a sixer or a wicket, the time will tell us. Rohit right arm round the stumps. In fact, there is a chance of a wicket and the catch has been taken. Rohit decides to come over the stump, strikes on the final delivery of his quota. Fourth wicket back to the pavilion. Angelo back to the pavilion. So new man in is Devraj. Final over of the inning. 27 runs to get. Pritesh the bowler. Matin on the striking end. 4 sixes required. Another connection. Ball takes the leading edge. Travels safely towards the short third man, where the captain of the team does the backup and his fellow mate Amit fields the ball. 5 legal deliveries. 26 runs to get. Can Devraj become Dev and do it for his side? Plays the ball, strikes the ball along the carpet. More 25 runs required. 4 deliveries, 25 runs to get. 4 sixes will tie the match. Whether it is going to be a super over. Matin is capable of hitting those big sixes. Lovely strike. Whether is it going to be the first one? Yes, it is. First sixer from the bat of Matin. Let's see whether Matin can strike one more. Three deliveries, 19 runs to get. Can Matin strike one more? Oh my dear, what a lovely delivery by Pritesh. Standing like a wall between the sixes and the strike of Matin. What a delivery to execute at the right moment. Now Sisi boys will be relieved as 19 runs required. Short pitch delivery. This six is not going to bother much as a final delivery is remaining and 13 runs to win. Nonetheless, a good contest, a good match for the viewers. Can Matin hit one more to minimize the target? Definitely strikes the ball. Congratulations, Sisi. Sisi boys. And let's see who is a man of the match in this quarterfinal.
Thank you, DJ. Meanwhile, let's thank our sponsors. First of all, the Minister for Labor, none other than our beloved Antansio Montserrat. We call him Babush, the main sponsor for this tournament, along with his better half, Mrs. Jennifer Montserrat, MLA of Taligaon constituency. And a big thank you to other well-wishers who have supported to make this tournament happen on this very ground. They are as follows: Ashwini Cafe, Sateri Fast Food, Popular Washing Center donated all the men of the match trophies. Srimati Asmita Sandesh Kirkar, serving as a councillor in Panjim Municipal Council for the local guys, doing the right job. Zen Beverages, Coca-Cola Limited, Munir Bellur, Anand Wines, and a Predator Energy Drink. These are the main people who have sponsored in this tournament. Meanwhile, let's see who is the man of the match. And requesting the guests at the occasion, at the presentation area, Mr. Sandesh Kirkar, to kindly do the honors. Sandesh Kirkar will be giving away man of the match trophy, and let's see who it is, as our statistician will be announcing that name. It's none other than good all-round performance, good hitting by Rajesh Gosavi at the end of the inning to pour 67 on the scorecard. Man of the match of the quarterfinals, Rajesh Gosavi, receiving the man of the match trophy from the hands of the owner of United Ponjekar, Sandesh Kirkar. So requesting the organizers, as we are going to take the lots in a while for the semi-finals, as 4 teams that have reached in the semi-finals: CC Boys, Sri Bodgeshwar, Strong Boys, and Kutneshwar. These are the 4 teams that have reached for the semi-finals. And in a while, we are going to take the lots. So the main umpire, Vaman Maikar, with the cheats in his hand. And this will be live on YouTube, as 4 cheats have been already put for 4 different teams. And here there are many people who are going to witness, as the cheats will be taken live on YouTube, courtesy AB25.
So here we go with the Lords. So here we go. The main umpire, Vaman Mayekar, with the 4 cheats. And let's see who is going to take the cheat. So first 2 teams that are going to be taken from the cheat will be playing the first semi-finals. So let's see, the young guns are going to take the cheats. So 2 youngsters have marched forward. सो पयल्यो 2 चिटी काडटले ते फर्स्ट सेमीफायनल खेळटले आणि ती सेमीफायनल जातली सारकी 9:30. पयली टीम कुडणेश्वर. सो फर्स्ट शीट हे आयल्या ती कुडणेश्वर. आता दुसरी शीट पळोवया त्यांच्या ऑपोजिट कोण खेळटा ते. सीसी बॉयज आणि कुडणेश्वर ही जातली पयली सेमीफायनल. आणि आता 2 टीमी उरल्यात भुरग्याची उमेद वाडोवपाक. एक बाबू आयला तो चीट काडटा. सो कॅमेरा कडे दाखयला श्री बोडगेश्वर आणि स्ट्रॉंग बॉयज ही जातली सेकंड सेमीफायनल. सो पयली सेमीफायनल जातली ती कुडणेश्वर वर्सेस सीसी बॉयज. सारकी 9:30 हांगा पयलो बॉल पडटलो. सो दोन्ही टीमी मातशे नोंद घेवच्या. आणि तेच्या फाटल्यान सेकंड सेमीफायनल जातली ती स्ट्रॉंग बॉयज वर्सेस बोडगेश्वर. ती जातली ती सारकी 11. सो दोन्ही कॅप्टन मातशे नोंद घेयात. 4 टीमी मातशे नोंद घेयात. पयली सेमीफायनल आणि सेकंड सेमीफायनल कोण खेळटले ते. आणि जो तुमकां टाइम दिला तेच्या एक 20 मिनटां पयलीं हांगा रिपोर्ट करपाचें अशें ऑर्गनायझरांनी कळयलां. 8 ओव्हरीचे सेमीफायनल्स जातल्यो. सो सगळे कॅप्टन्स नोंद घेयात. थँक्यू व्हेरी मच. दॅट्स ऑल फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स. मायसेल्फ taking a leave along with my co-commentator Sumit Karsekar, all the way from Begula, along with our team of officials, Vaman Mayekar, Sadgiri Dada, Bondu, our Bhau, who is doing the scoring.